because it's not too hot, not too humid. Sort of breeze blowing as well, cool breeze, which makes it that much more comfortable. Very much like early September UK condition here, which is perfect for cricket matches. 12th man or an extra player, please. We can't get the game up and running. We can't get the game up and running unless we have an extra player. Gotta have one extra player from either sides to report with us. Please try to make sure to be here, because we would have a lot of difficulties if we can't get the names right, the batter's name, the bowler's names and all that, those sort of dynamics. You got to do the frequent checks of the scoring as well. Plenty of stuff in here. So you got to be here facilitating us actually in the comm box. This iconic tournament coming all the way from this beautiful ground, live streamed on YouTube, King Sports. You can watch it live, and it's going to be under lights as well. After about a few hours from now, we're going to have the lights, and it will be a beautiful, beautiful spectacle here. As a player, you would love to play, you dream to play in a ground like this. I myself have got that aspiration now to play. Go out there and play. ಒರೇ ಬಾಲ್ ಅಲ್ಲ ಅವ್ರ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಗೋರ್ ಬಾಲ್ ಅಲ್ಲಿ An extra player from either sides, please make your way to the comm box. Gosh, I've given so many calls. Please make sure to be here. One of the extra players. An extra player, please, immediately at the comm box. There's the first ball of the tournament. First ball's been belted all the way for a 6. What a start to the tournament. Magnificent ball striking that is. Owen the batter. Beautiful swing of the bat towards the mid-wicket region. No one out there as well. It's gone all the way for a 6. Superb ball striking that is from the very first delivery. Advancing down the track. This time it's much, much better. That's where you got to be. More like as a bowler, you got to try and make sure you hit that sort of channel on a regular basis to try and put the batter under a bit of pressure on the back foot. You don't do that, you're going to be penalised. And this is where I said it's so central. Wide outside the off stump surely should be called a wide. An extra to the total takes the score, but all the way now to 7. It's important that they start well. They've won the toss. They're going to bat first. They're batting first. They've got to have a good total. And to do that, you've got to be very disciplined. Beautiful delivery that is. Much better in terms of the lines and the lengths. And that's where you've got to be so accurate in terms of the way you go about your business right from ball 1. The batsman's now oozing with confidence with that massive 6-over mid-wicket. This time another one. This time it's a skyer. The fielder gets underneath. Oh, he takes it somehow, manages to take that catch. And that's the first wicket going down. Owen's got to take a long walk back.
He's got to go back to the hut. He's got a 6. Rajesh, the new batter, walks out to the centre, replacing Arun. And that's what cricket's all about. I think, you've got someone like Virender Sehwag, you've got someone like Harry Brook of England, you've got someone like, so many, brand new, Zach Crowley, I'd say, actually. Zach Crowley hit the first ball of the Ashes 20, not sure about the date. This time it's up in the air. It's been taken, another wicket going down as well. 2 back-to-back wickets. This will certainly put them on the back foot. That's not the right shot selection, I tell you what, because there was a fielder placed particularly for that shot. And he picked up the fielder right at the edge of the boundary, and the fielder's made no mistake, kept his eyes on the ball, takes it easily, and he's got to take a walk back without scoring. This is not good strategy. I tell you what, this is just a poor strategic execution, I'd say, in terms of in the context of the game as well. They got 7 runs. This is not a sort of baseball idea. Just go there and play shots. It doesn't work. You've got to get the measure of the track as well. You've got to spend a bit of time over there as well as a batter. You go out there, apply yourself, spend a bit of time over there, take a bit of time, and then you get better and better as the time progresses. Yes. There's an announcement. She's like an anchor. So normally she's she'll invite says welcome to the chief guest. As of now, I just want a little pause from your side. Pause. Yeah, you want me to break? No. Yeah, sure, please go ahead. No, you keep on. No issues. If you want me to break, I can break. You I can go on. I can go on. Yeah, you go on. You go on. I'll just call you when. No issues. In the progression of the first over, 2 wickets are back in the hut. Seven still on the cards. So that's just talking a little bit about the game. You've got to go about your business in a different way. The Zach Crawley way, the baseball way, Brendan McCullum style of batting might not work out. You got to apply, you got to spend a bit of time, take a bit of time actually. Take a sort of punt on these bowlers, and you got to be up for the challenge. Try and rotate the strike, try and play, attritional cricketing shots, not a sort of, big hike. Good afternoon, one and all. This is Ala Anam Sheikh. We AMS Ceramics welcome all of you. We have our chief guest, Mr. Darren Joshi, Vice President of Kerovit by Kijaria, Mr. Suresh, General Manager of Oyster Bathtubs, Mr. eBay Matthew, Karnataka State Head of Nitco Tiles. I hope you all have a cheerful, wonderful afternoon. Happy afternoon. Madam, kotte madam, sunshine. Madam, sunshine kotte. Done. Avarga. ಎಷ್ಟು ಮ್ಯಾಚ್ ಅವರಿಗೆ? ಮೂರನೇ ಮ್ಯಾಚ್ ಈ ಮ್ಯಾಚ್ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ No. Wantedly higher careers, Huh? Happy after. Nicely played away on the onside, right towards the square leg region for 1. You've got to be applying yourself to the best of your ability. So try and make sure that you rotate the strike, get the scoreboard ticking around, and don't put yourself in pressure by losing, because this time it's up in the air, just about safe. Still a safe shot. They might look for the second. They do get it easily as well. 2 runs to the total. The captain's got the responsibility. He's got to shoulder that. And he said that he's got experience playing in this ground as well, so he's got to take that into consideration as a batter. And he's got to play accordingly. They're 2 down now. They're under a bit of pressure. And beautiful delivery that is. He could have gone for it. A slashing cover drive. A cut shot actually, rather. Missed out. Happy afternoon. It's a dream kind of delivery for a batter. Going right, number 1, number 2, number 3. Nicely played away. Vacant space and offer. That might go all the way. It's beautiful batting. Manipulating the field to great effect.
vacant space on the onside, no chance whatsoever, just using the pace of the delivery. That's what you got to do in cricket. I think that's what I talked about. Virat Kohli, Rohit Sharma, great players that, you know, they're not power strikers. Very much like Andrew Flintoff type of batter. Or Phil Saul type of batters. You know, Virat Kohli, what he does so well, using the pace of the ball to great effect, and that's what the captain. So to tell you more about over 3, over 4, to tell you more about the game, we've got Mr. Sinan in the regional language. Over to you. बहुत बहुत धन्यवाद हाशिम जी। तीसरी ओवर की पहली गेंद लेकर आया है सकलेन। पहली गेंद शॉर्ट पिच गेंद पे गेंद को पुल किया मिड विकेट की दिशा पर, फील्डर तैनात पर सिर्फ एकमात्र रन के लिए। एकमात्र रन के साथ स्कोरबोर्ड कुल मिलाकर 16 रन 2 विकेट के नुकसान पर। 5 ओवर की इस विकेट के नुकसान पर 5 ओवर की इस मुकाबले पर टाइगर्स टॉस जीतने के बाद पहली बैटिंग करने का निर्णय लिया था। इस बार कट किया गेंद को कवर्स की दिशा पर, फील्डर तैनात, एक्स्ट्रा कवर से फील्डर दौड़कर गेंद तब तक बल्लेबाज ने 2 रन दौड़कर पूरे कर चुके हैं। 2 रन जुड़ते हुए स्कोरबोर्ड पर, स्कोरबोर्ड कुल मिलाकर 18 रन 2 विकेट के नुकसान पर। ये MA सिरामिक्स सजाया हुआ एक शानदार क्रिकेट श्रृंखला everyone together, so that's really amazing because MCG days back is मैदान पर something like this does exist, but then when I did come here is when I realized but it's happening at such a huge scale, bringing a lot of people together. I think this does इस बार फिल किया गेंद को हवा पे, गेंद कैच आउट की खतरा, फील्डर तैनात, ओहो दूसरी अटेम्प्ट पर गेंद को लपक लिया फील्डर, और इसी के साथ बल्लेबाज कैच आउट होकर पेविलियन पर वापस लौटना पड़ता है। 18 पर 3 तीसरी ओवर की चालती पर 18 रन 3 विकेट के नुकसान पर। शानदार कलेक्शन ऑफ द बॉल एट डीप मिड विकेट रीजन। शकलेन अपनी पहली सफलता हासिल करते हुए। टाइगर्स ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला लिया था। उस निर्णय को सही साबित करते हुए पहली गेंद पर छक्का भी जड़ा था आरंभिक बल्लेबाज ने, जैसे वीरेंद्र सहवाग यूजुअली करते थे ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। तो उसके बाद वापसाती गेंदबाजियों का वापसाती देखने को मिला। 3 विकेट हासिल कर चुके हैं अब तक। तीसरी ओवर की 4 गेंद की समाप्ति के बाद स्कोरबोर्ड सिर्फ 18 रन पर 3 विकेट के नुकसान पर। इस वक्त वाइड करार दिया अंपायर ने। लेग स्टंप से काफी बाहर थी गेंद। रिसेंटली इंटरनेशनल क्रिकेट पर रूल्स चेंज हुए हैं। एक बॉक्स टाइप की क्रिकेट लाइंस वाइड के लिए लेग साइड पर आ चुके हैं, लेकिन इस वक्त स्लोवर डिलीवरी गुड लेंथ पर गेंद फेंका था गेंदबाज। गेंद टप्पा खाने के बाद थोड़ा सा उछाल लेते हुए सीधा विकेट कीपर के हाथ पर। विकेट कीपर ने चतुराई दिखाई, स्टंप आउट के लिए कोशिश भी किया था, लेकिन बल्लेबाज अनमूव्ड अपनी स्ट्राइक पर थे। तो ओवर की आखिरी गेंद बाकी बचे हुए। स्कोरबोर्ड 19 रन एक वाइड की मदद से 3 विकेट के नुकसान पर। आखिरी गेंद राइट हैंड राउंड विकेट, स्लोवर डिलीवरी, कदमों का इस्तेमाल, पैर पर लगी थी गेंद। 1 रन दौड़कर पूरी कर चुके हैं। फाइन लेग स्क्वायर लेग की दिशा पर थी गेंद। 1 रन के साथ स्कोरबोर्ड कुल मिलाकर 20 रन। तीसरी ओवर की समाप्ति के बाद 3 विकेट के नुकसान पर। He had a vision that why don't we have a cricket where we can join everyone together in a platform. So that is nice. इस शानदार श्रृंखले को किंग स्पोर्ट्स के दरमियान लाइव टेलीकास्ट करते हुए किंग स्पोर्ट्स की स्टाफ मेंबर्स मैदान की हर कोने पर अपने कैमरा लेकर बैठे हैं। किंग स्पोर्ट्स की स्टाफ शानदार श्रृंखले को अपनी कैमरा के दरमियान, अपने चैनल के दरमियान विश्व को दिखाते हुए किंग स्पोर्ट्स के लिए धन्यवाद कहना चाह रहा हूं। किंग स्पोर्ट्स अब गेंदबाजी पर बदलाव, ड्राइव किया, लेफ्ट ड्राइव, लॉन्ग ऑफ की दिशा पर, फील्डर तैनात, आसानी सा कैच पकड़ते हुए फील्डर लॉन्ग ऑफ की दिशा पर। चौथी विकेट झटका AMA टाइगर्स के लिए। AMA टाइगर्स टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला लिया था।
लेकिन वो निर्णय अब गलत साबित होते हुए 20 रन 4 विकेट के नुकसान पर चौथे ओवर की चलती पर ये मुकाबला 5 ओवर की मुकाबला है। अगर 5 ओवर के इस मुकाबले पर कम से कम 30 से 35 रन अगर बनाते हैं तो अपने दूसरी इनिंग्स पर थोड़ा सा लड़ने के लिए मौका तो मिलेगा। लेकिन इस वक्त एट दिस स्टेज ऑफ द मैच मुझे ये लग रहा है कि 30 रन पार करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। बढ़िया गेंदबाजी फ्लिक करने का कोशिश की है, पैर पर लगे गेंद। His Josh is very high that he's gonna. I mean, their team is gonna win. That's what we. Wish them. Definitely. To wish see them, ourselves in the all finals and best. probably lift that trophy right there. As soon as I walked in, that was the first thing that I did see there. It is really kind of attractive. Good, yes. All the comment is very number one. That he got very much impressive. And top on that, you are our impressive. अजमत The words what. गेंदबाजी को आगे बढ़ाते हुए आउटसाइड एज, एक टप्पा आने के बाद विकेट कीपर के हाथों पर सुरक्षित गेंद, डॉटेड डिलीवरी, लगातार 2 चुकी गेंद अजमत के द्वारा। 3 गेंद अब तक फेंक चुके हैं अजमत। सिर्फ एकमात्र रन खर्च करते हुए अजमत ने बहुत ही शानदार गेंदबाजी का प्रदर्शन इस वक्त इस मैदान पर। एएमए क्रिकेटर्स, एएमए सेरामिक्स सजाया हुआ एक शानदार श्रृंखला, आर्किटेक्ट्स एंड बिल्डर्स क्रिकेट टूर्नामेंट श्रृंखला की पहली मुकाबला एएम टाइगर्स बनाम एएम लायंस। शानदार गेंदबाजी का प्रदर्शन दिखाते हुए अजमत। 5वीं बार राइट आर्म ओवर द विकेट, गेंदबाजी को आगे बढ़ाते हुए स्ट्राइकर दौर पर सुजित, नॉन स्ट्राइकर दौर पर तैयूब। बढ़िया गेंदबाजी, शॉर्ट पिच डिलीवरी, कैच की मौका। जी हाँ, शानदार कैच, लाजवाब एफर्ट कह सकते हैं विकेट कीपर के द्वारा। संजू सैमसन को याद दिलाते हुए विकेट कीपर ने अपने आगे की तरफ दौड़ते हुए गेंद को कलेक्ट किया। इसी के साथ 5वीं विकेट झड़का एएमए टाइगर्स के लिए। 20 फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट्स। Please come here. So you're a captain. No. Okay. What's your good name? Okay. So you're representing for the. 5th wicket is walking back to the pavilion. नए बल्लेबाज के रूप पर सुफियान मैदान पर उतर चुके हैं। आखिरी गेंद लेकर तैयार अजमत। इस वक्त डिफेंसिव स्ट्रोक, मिड विकेट की दिशा पर गेंद, डीप मिड विकेट से जब तक फील्डर दौड़कर गेंद को फील्ड किए तब तक 1 रन दौड़कर पूरी कर चुके हैं बल्लेबाज। 1 रन के साथ स्कोर बोर्ड मिलाकर 20 रन 5 विकेट की नुकसान पर। You're representing Jimmy sir, yeah, Jimmy sir. And then I met your Reddy ji, who is basically a captain. He said, you know, he has lots of spirit. He is gonna say that he's gonna win. So support him. What do you feel once you came to our stadium? For this ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಆಡೋಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ ಅಂತ ಇರೋದು. ಓಕೆ, ಎಎಂಎಂ ಸೆರಾಮಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಇರೋದು ಒಂದು ಈ ಥರ ಗ್ರೌಂಡ್ ನಾವು ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಆದ್ರೂ ಟೀಮಿಂದ ಒಂದು ಇದು ಮೋಟಿವೇಶನ್ನು ಅವರು ಒಂದು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಟ್ರೂ ಎನರ್ಜಿಯಲ್ಲಿ ಇದೆ ಆಡೋಕ್ಕೆ. ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ. ಹಾಂ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಎಎಂಎಂ ಸರ್. Thank you so much. Yeah. Come. The next one. 21 for 5 after the end of the 4th over. So they've got this last over to try and maximise, to try and make sure they can try and target some of these areas. I know that 65 metres is a long boundary. They still got to take the attack now. They got to go for the big shots. They got to pull the trigger now. This is the stage where they got to get some boundaries. And that's what I talked about earlier in my analysis, that you can get around about 40s. Will be a very good total when they come out to bowl. But I'm sure that the fielding team will be very aware of the fact that 2 dot balls in a row, back-to-back dot balls. Sucklane operating the second time from the garden. No, all right. From the far end, he's going to bowl to the right-handed batsman. So if you're on strike, actually, he's got to take that attack. Not much time left in the game. Nicely played away down the leg side. 1s and 2s will not damage for sure. Will not hurt them much at this stage, because 1s and 2s will be like
very easy for them to concede at this stage. If they can get a boundary or a six at this stage, that will really be a game-changing moment in the context of the game, I gotta say. So we are here, just to discuss. Slow, gentle pace, nicely struck. The wrist protection in the deep will just be one if he tidies up well. He does tidy up well. Let me start. Back to the bowler, well done there. Simple question. Okay. One great advantage as a fielder, that is that the ball's going to come straight at you. It's not going to Mandir. Nicely played, nicely bowled. Good length delivery, that is. Not really able to understand what these batters are trying to do. Actually, they got to play shots. This is the last over. They got to pull that trigger. They got to try and make sure they get as many as they can before their innings is over. Again, a good delivery, good finish to the over, good finish to the innings as well. That's the end of the innings. Alright, so we are basically from AMA Tigers, after winning the toss, electing to bat first. I think they find themselves at, what's the score please? 23. 23 for the loss of 5 wickets. I think, the bowling team will be very happy about that. But looking at the condition, looking at the situation currently, they'll feel a lot relieved about the fact that, 23, they think they can chase it. But I tell you what, you never know, 1-2 wickets up front, anybody's game. I can't really predict. I'm not a fan of a predictor in the game of cricket. You never know, cricket is a funny game. I always believe that. I'm a strong believer of that. Anything can happen in cricket. It's anybody's game. Stage is all about. So I think run rate under 6 runs per over is what the equation. With the power play, I think the batting team will feel that they've got the advantage. Psychological advantage. To tell you more about that, we've got Sinan with us. I'm sure he's going to give you more analysis about how the chase needs to be executed with absolute certainty. जिस वक्त ये पहली मैच है श्रृंखला के, तो हम इस वक्त प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं कि 25 रन का ये जो लक्ष्य है वो आसानी से चेस कर पाएगा, लेकिन जरूर इस वक्त ये कह सकते हैं कि 25 विल बी ए गुड स्कोर एट दिस विन अगेंस्ट द विंड. बल्लेबाज ने बल्लेबाजी करना पड़ेगा. अगर बाएं हाथ की बल्लेबाज है तो टफ है इस मैदान पर सीमा रेखा पार करना इस वक्त अगेंस्ट द विंड. सो 25-25 will be a good score. From together will be for the long time. I can see the old gentleman. It looks like a Gen Z also, youngster. I might be, 50. You look like a 20, 23, 24. I like your beard, buddy. Looks very nice. I love it. What's your good name, buddy? Ajit. Ajit is all in. Yep. Yeah. So where's the Josh? Josh is rolling in. Yeah, Josh is Let's build a home. Let's build a home. Oh, AMA Riders, come on. Let's build a home with you. AMA Riders. Come, let's build a home with AMA Ceramics. ಒಟ್ಟಿಗೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು AMS ಸೂಪರ್ ಬನ್ನಿ Thank you so much Ajit and your team. Wish you all the best. All right, thank you. Next match so Shabrin's team. इस वक्त इस पहली मुकाबले की पहली इनिंग्स के बाद दूसरी मैच की टॉस के लिए कप्तान को बुलाव देना चाह रहा हूं. ये एमए बुल्स बनाम ये एमए सनशाइन, इन दोनों टीम के कप्तान को माइक कॉम बॉक्स पर बुलाना चाह रहा हूं. अगली मैच की टॉस के लिए, दूसरी मैच की टॉस के लिए ये एमए बुल्स और एएमए सनशाइन, इन दोनों टीम के कप्तान प्लीज माइक पॉइंट पर आ जाइए. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟದ ನಾಣ್ಯ ಚಿಮ್ಮಿಕೆಗಾಗಿ ಟಾಸಿಂಗ್ಗಾಗಿ ಎಎಂಎ ಬುಲ್ಸ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಎಎಂಎ ಸನ್ಶೈನ್ ಈ ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನರು ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬನ್ನಿ, ಕಾಮ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಬಳಿ ಬನ್ನಿ. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಯುವರ್ಸ್. 24 रन के लक्ष्य एएमए लायंस के खिलाफ पड़े हैं. एएमए टाइगर्स ने पहले बैटिंग करने का निर्णय लिया था और
they were not successful with their batting lineup. 24 रन के लक्ष्य दिए हैं लायंस के लिए लीगल 30 गेंदों पर। And to add to that as well, they've got the luxury of the power play as well, and that would make it even easier when these openers have a good start. I think it will be a nothing chase if they do get a good start. मैंने सोचा था वो पहली बॉल पर जो छक्का आया था तब सोचा था कि 35 to 40 ये लोग जरूर बन पाएंगे और उनकी कॉन्फिडेंस ऐसा था कि हम पहले बैटिंग करें। जब टॉस आए थे तुरंत उन्होंने बोला कि हम पहले बैटिंग करेंगे, तो मुझे कॉन्फिडेंस था, उनकी कॉन्फिडेंस देखकर मुझे कॉन्फिडेंस आया था कि 40 to 50 भी आ सकते हैं। उनकी बैटिंग लाइनअप पर उनको पूरी विश्वास है। पहली गेंद पर वो छक्का भी झड़ा था, लेकिन उसके बाद वो जो कोलैप्स हमने देखा, रियली अनबिलीवेबल। Yeah, you're right about that, exactly. But I felt that it's poor application in terms of the way they've gone about their batting business. That big six to start off, I felt that they had a good start, but they didn't know how to carry the momentum forward. And I think they missed the plot completely. Lost one wicket, then the number 3 batter went in there, played a stupid shot in my view. That is a catastrophic shot. And that led the downfall, really. That from there and onwards, it led to the downfall of their batting. बिल्कुल उनके दिमाग में ये बैठा था कि ये 5 ओवर की गेम है, यहाँ पर क्या सिंगल इक्का दुक्का का क्या देखेंगे, तो छक्का का देखेंगे। लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि क्रिकेट में छक्का मारने के बाद आप ग्राउंड शॉट्स, क्रिकेटिंग प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट्स के मदद भी we have some new लेना चाहिए। We are here already, and then the more agreed. And what great players? Let's talk a little bit about great players. Let's not talk about great players. Great players because they know okay, top on that. They know two-dimensional cricket. One is ultra aggressive. You know when to be aggressive. You can see lots of responses again with a Nick Cho. And you've got to know how to play in a defensive way as well. Rotate the strike, that you guys are here pressure back on the bowler. bowler. Very much strong, and your guys are motivating. We have to build business together. More than that, we are like in a family, and more than family we are. So, and it's all about you. You're gonna lead it now. So how do you feel now? What are your plans of showing on? We are just now new to now. That's why we are planning now with every team guys. So it's pleasure and thankful for the every host and sponsors. Thank you so much. Yeah. I've heard every successful team and every successful man has a great woman. So as Sabrine is there and there's one more ma'am over here, I hope you people will. May the best team wins. So how's the Josh? Yeah. How's the Josh? Yes. Josh is all in when women are in the room. All right. Yes. Wish you all the best to you all. Thank you. Come on. Okay. Shout out your name. It's been pulled back inside the rope. Good bit of shot there. Good, decent amount of timing on that one. Clearing the infield with ease. There was protection in the D. Will just be a couple of runs to the total. Good start. That's what you got to do. Talking a little bit about. Good. I think the two captains, please make your way to the toss. 1, 2, 3, go. Build a family with MA Ceramics. And exotic innovations will be rule. exotic innovation will rule it. Once again. Build a family with MA Ceramics. And exotic gonna rule this match. Thank you. Thank you so much. Thank you so much. Great. Sunshine, AMA Sunshine. Choose to bowl. AMA Sunshine, right? Bulls, AMA Bulls have won the toss and they are electing, they're going to field first. That's the second game, mind you. Yeah, to tell you a little bit about great players like Joe Root. Let's say Joe Root is a fantastic player in my view. You got someone like Virat Kohli, you've got someone like I think, who are the great players actually? Joe Root. You'll come back to that later. I became
So the idea is very simple for the chase. The chase is on. The batters know their responsibilities very well. There's absolutely no need to play gratuitous and reckless shots. You've got to play to the basics. Got to get the fundamentals right. That's it. Game over. Beautiful delivery. That is a shot one on offer. You got to try a lot of those actually. As a bowler, you got to mix your lines and lengths, and you got to do that on a regular basis. Try and upset the rhythm of the bowler batter. Beautiful delivery. That is miscollection from the wicketkeeper, allowing that single to be taken. And pass and meeting pace. It just goes to bowl. Oh, that's a poor shot selection, I gotta say. There was no shot in. I think it's a fault shot in execution. The ball's not shot enough to play that shot. He induced that shot, no connection, and the bowler hits the timber. What do you think, Mr. Sinan, looking at the shot selection? Where do you think he should have been playing? I think he should have been playing. गुडलैंड पर टपक आए थे हाशिम. गुडलैंड पर आए हुए गेंद को पुल करना it will be not a right choice. गुडलैंड की वो जो गेंद को ड्राइव करना चाह रहा था वो या फ्लिक करने का कोशिश भी कर सकते हैं, तो उन्होंने पुल की कोशिश किया. वहां पर गेंद थोड़ा सा ऊंचाल कम लिए थे तो सीधा विकेटों पर टकराई. उन्होंने गलती कर बैठे हैं बल्लेबाज, तो वापस लौटना पड़ा पेविलियन पर. 4 रन 1 विकेट के नुकसान पर दूसरी ओवर की चालती पर. ओवर टू यू हाशिम. Yeah, it's premeditation as well. That's very well done. What a strike that is. That's gone all the way for 6. Tremendous bat flow on that occasion, just playing through the line. Magnificent shot, one of the best shots of the tournament so far. Came from the bat off, batter's name, Sucklane, the batter. Beautiful shot, that is power striking at its very best. No fielder whatsoever in that position, and it travelled all the way for 6. Trying to do that once again, this time around might be another one here. Yes, it's back-to-back 6s. Supreme timing on that one. The power behind that shot is simply superb. Great transfer of power. Carried all the way to the square leg boundary. I tell you what, it's not a short boundary. You still have to have the power. And the timing was scintillating there. Trying to repeat that once again. Just going for the big shots, I think. We talked a lot about playing big shots. That was gratuitous, I believe. Yes, Sinan, give a bit of an analysis about those 2 6s hit over square leg. इस वक्त गेंद को स्वीप किया मिड विकेट की दिशा पर. 1 रन दूसरे रन के लिए दौड़ पड़े हैं. रनआउट की खतरा जी नहीं, 2 रन दौड़ कर पूरे कर चुके हैं बल्लेबाज. अब थोड़ा सा आत्मविश्वास को बढ़ाते हुए वो दोनों छक्के की मदद से. पहली गेंद बिल्कुल शॉर्ट पिच गेंद थी, अपनी बॉडी की तरफ आई थी, तो उसकी पूरी तरीके से फायदा उठाया बल्लेबाज ने. पुल किया था मिडल ऑफ द बैट, सीधा स्क्वायर लेग की दिशा पर पुल किया था और डिस्टेंस भी हासिल किए थे उस शॉट में. उसके बाद का जो शॉट है मिस टाइम पे, पुल की कोशिश जरूर किए थे गुडलैंड डिलीवरी पर, शॉर्ट पिच गेंद नहीं था, फिर भी उन्होंने मिस टाइम्ड शॉट भी हवा की मदद से गेंद मिड विकेट की दिशा पर सीमा रेखा पार किया है. तो उसके आत्मविश्वास से इस वक्त उन्होंने स्लॉक शॉट की कोशिश पर है. हर एक गेंद पर अक्रॉस द विकेट खेलने का कोशिश कर रहा है, तो थोड़ा सा तकलीफ भी हो रहा है बल्लेबाज को. I think he's hitting into the wind. I think that becomes that much more easy. And he's doing that once again. This time straight to the fielder. The plot has worked. The plans worked. They thought about bringing that shot fine leg in place straight into. I think it's one too many shots now. Really, one too many. I don't know. I really don't understand the logic behind some of the shots he played. Yes, he was successful in getting the 2 big 6s, but I think it's one too many. Very much predictable. सकलेन 2 छक्का मारा था. सकलेन अभी भी मौजूद है क्रीज पर, नॉन स्ट्राइकर पर, और
Captain G, Kabir, please do come over here. दूसरी बल्लेबाज उनकी साथ देने पर कामयाब नहीं Who हुए। is representing उनकी जगह Aim पर Strikers, please do come on dais. अजमत नए बल्लेबाज के रूप पर मैदान पर उतर चुके हैं। अजमत सकलेन की नए बल्लेबाज के रूप पर मैदान पर उतर चुके हैं। अजमत सकलेन के साथ Appreciable. This is really appreciable. Yeah. No, we are all professionals. We are not professional cricketers. I'm very sorry to say that we this is don't like- agree it is 40, sir. You No. never look like a 40, sir. No, actually I'm not See, 40. I'm I have 45. I have an. No, I'm not 40. I'm 45. Sir, I had an, until yesterday was like a little bit grey, and then I done a little bit paint on that. I may No, look like a tinkering 40 painting is not more for boys. It's more for girls, I believe. Hey! Yeah. No. More for women. I love your energy, Swami Ji. I Our love team your is really good. Yeah. Our team is really good. We are trying to know each other right now. Yeah. So it's really nice to feel each one of us like we are all from different professions, different places. Beautiful. We're all from engineering background. Yep. Thanks to the Samat from AMA Ceramics. Ceramics. He is the one who initiated this. Yeah. So I'm more than happy. Yeah. Sham. Samat. Yeah, Sham and Samat. Yeah. Both. Anyway, thank you. Yeah. Thank you First, so much. let me know my team first. Yeah. Okay, thank you very much. Thank you. Kushal sir, you surely proved that age is just a number. Yeah. So coming ahead to Mr. Sufyan. Yes, Mr. Sufyan, what was your gameplay and where do you feel you were the most happiest? Yeah, this was my first experience. So I haven't played any turf. I think my friend will tell. Not an issue. It's our house, It's like in a family here. As soon as you go for your mama or uncle or auntie house, how will you feel? Hey, how are you? Feel the same. We are like your family. AMA is like your family. We are gonna be in a longer time. You're gonna be with us a longer time for aiming to be in a success together. Yeah. Yeah. Thank you. How do you feel about today and environment? This was the first match, right? So we went with a little haste, and so we started without knowing the pitch. So it happens, right? So we gave good score, I think. We started really good, but in the middle we lost pretty much a very good number of wickets. So and bowling also we did well, and fielding as well. If we had like 40 runs, we could have defended that. So I think it's a lesson for us for next match. We'll do it better. Yeah. Your name? Faraz. Faraz sir, you definitely played good. I believe failure is a stepping stone and you will find it better in future. Sir, So basically this was our first match in this pitch. So we'll get better and we'll play another match soon after this. We'll make a good team. Yeah, and your confidence is definitely motivating us. In simple way, you said that you have a lot of confidence. The confidence let it build to be in a more confidence in the next level. Thank you so much for you, buddy. All right. My name is Taib. Boys played really well. Inshallah, we'll try next match. That's good. Hope on faith, and he has a hope in faith and faith in hope. All together, it works at the same time. Loved it, buddy. Thank you. Thank you. Yeah. Thank you, you all. Thank you all. excuse me gentlemen, this is Anam Sheikh. A heart welcome from AMA Ceramics. We are heartily welcoming our chief guest, Mr. Darren Joshi, Vice President of Kerovit by Kajaria, Mr. Suresh, General Manager of Oyster Bathtubs, Mr. eBay Matthew, Karnataka State Head of Nitoko Tiles. Thanking you. Have a wonderful day and all the best teams. May the best team lead. वेलकम बैक का दूसरी मुकाबला AMA बुल्स बनाम AMA सनशाइन। AMA बुल्स टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का निर्णय लिया है। उस निर्णय के हिसाब से आरंभिक बल्लेबाज AMA सनशाइन की आरंभिक बल्लेबाजियां मैदान पर उतर चुके हैं। महेश और फारूक की जोड़ी इस बार ड्राइव किया गेंद को लॉन्ग ऑफ की दिशा पर, फील्डर तैनात था।
एक रन दौड़कर पूरी कर चुका है। टप्पा खाने के बाद फील्डर के हाथ पर गेंद, सिर्फ एक मात्र लेने पर कामयाब बल्लेबाज। शानदार कनेक्शन, बैकफील्ड की याद दिलाया वो शॉट, महेश की वो शॉट, स्विच हिट की कोशिश किए थे लेकिन गेंद टाइम नहीं कर पाए, हवा पर थे लंबा समय तक का, सभी लैंड हुए फील्डर की आगे। इस वक्त फुल टॉस गेंद की फायदा उठाते हुए उठा दिया डीप विकेट की दिशा पर, सीधा सीमारे के पार करते हुए 6 रन के लिए सिक्सर, द फर्स्ट सिक्सर ऑफ द इनिंग्स, पहली छक्का इनिंग्स की। महेश की बल्ले से निकले पहली छक्का। फुल टॉस गेंद थी, फुल टॉस गेंद की पूरी फायदा उठाते हुए महेश अक्रॉस द विकेट गेंद को मिड विकेट की दिशा पर खेला था, सीधा सीमारे का पार कर दिया गेंद। इस वक्त शॉर्ट पिच गेंद पुल करने की कोशिश, फाइन लेग की दिशा पर गेंद, गेंद सीधा तड़ने फाइन लेग बाउंड्री के पास फील्ड करते हुए 2 रन दौड़कर पूरे कर चुके हैं बल्लेबाज। 2 रन के साथ स्कोर बोर्ड कुल मिलाकर 10 रन बिना किसी विकेट का नुकसान पर। 2 गेंद बाकी रह चुके हैं पहली पावर प्ले के ओवर पर। महेश अपनी 4 गेंद पर 10 रन खर्च करते हुए दुबारी महंगा
वेलकम बैक। 34 पर सुरेश की इनिंग्स खत्म होते हुए 47 रन 1 विकेट के नुकसान पर पहली इनिंग्स की 9 गेंदें बाकी रह चुके हैं इस वक्त। सनशाइन बुल्स ने टॉस जीतकर फील्डिंग करने का फैसला लिया था। सनशाइन में लगातार बड़े शॉट्स के चक्कर में अपने दूसरी विकेट खो बैठे हैं। सनशाइन 53 ऑन द बोर्ड नाउ, 53 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट। ಕೈಲ್ಪಿನ ಔಟ ಇಲ್ಲಿ 47 ಅವನು ವಿಕೆಟ್ ಹೋಯ್ತಿಂತು 47 6 ಇಟ್ಟಲ್ಲ 53 ಇವಾಗ ನಾಯ್ಸ್ ಏನಿಲ್ಲಲ್ಲ। रामकृष्ण नए बल्लेबाज के रूप पर रामकृष्ण मैदान पर उतर चुके हैं। 53 बड़े स्कोर अब तक का सनशाइन में अपने स्कोर बोर्ड पर बना चुके हैं। 53 अभी भी 8 गेंद बाकी रह चुके हैं इस इनिंग्स पर। डीप मिड विकेट, डीप स्क्वायर लेग, लॉन्ग ऑन, लॉन्ग ऑफ और एक्स्ट्रा कवर पर फील्डर तैनात। 30 गज की गहरे के बाहर। ओवर की समाप्त, चौथी ओवर की समाप्त के बाद आखिरी गेंद सॉरी, फाइनल डिलीवरी लेफ्ट इन द 4th ओवर। ओके सॉरी, ओवर की समाप्त। 4 ओवर की समाप्त के बाद स्कोर बोर्ड कुल मिलाकर 53 रन फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट। आखिरी ओवर बाकी रह चुके हैं। क्या ये स्कोर को 60 पार कर सकते हैं? अभी नहीं। 2 नए बल्लेबाज रामकृष्ण और आरंभिक फारूक मैदान पर खड़े हैं। फारूक के पास वो क्षमता है कि इस मैदान पर सीमा रेखा पार करने का। आरंभिक बल्लेबाज के रूप पर फारूक ने उतरा है मैदान पर, लेकिन सुरेश का वो जो धमाकेदार इनिंग्स के सामने फारूक थोड़ा सा शांत बैठे थे, स्ट्राइक रोटेट करने का जिम्मेदारी निभाए थे। लेकिन अब फारूक के ऊपर जिम्मेदारी ये है कि आखिरी 6 गेंदों का फायदा उठाना। 6 गेंदों पर कम से कम 10 से 15 रन बनाना पड़ेगा फारूक को। ये बुल्स की वो जो इस बार जैसे मैं कहा, फारूक ने अपने खंबे को खोले हैं। बल्ले के बीचों बीच गेंद लगते हुए डीप मिड विकेट की दिशा पर 6 रनों के लिए पहली गेंद पर गेंदबाज को स्वागत किया फारूक का छक्के के साथ। डेंजरस बल्लेबाज फारूक का इस वक्त अब तक शांत थे, लेकिन इस वक्त अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए आखिरी 6 गेंदों का फायदा उठाने के लिए गेंदबाज को छक्के के साथ स्वागत किया। क्या ये कंटिन्यू कर पाएगा? इस बार 100 शॉट की कोशिश, लेकिन थोड़ा सा ऊंचाई की कमी की वजह से बल्ले पर कनेक्ट नहीं कर पाया गेंद को। सीधा विकेट कीपर के हाथों पर गेंद सुरक्षित। डॉटेड डिलीवरी। 4 गेंद बाकी रह चुके हैं इस ओवर पर। आखिरी ओवर इनिंग्स के आखिरी ओवर इस वक्त उठा दिया गेंद को। हवा पर गेंद, कैच आउट के खतरा, नो मैंस लैंड। फील्डर तैनात नहीं थी। 1 रन डालकर पूरी कर चुके हैं। फारूक दोबारा स्ट्राइक पर आना चाह रहा था, लेकिन रामकृष्ण इस वक्त उम्मीद नहीं जताया और 1 रन के साथ स्कोर बोर्ड कुल मिलाकर 60 रन 2 विकेट के नुकसान पर। आखिरी 3 गेंद बाकी रह चुके हैं। फारूक तो रामकृष्ण राइट हैंड ओवर द विकेट, फुल लेंथ डिलीवरी, क्लीन बॉल्ड, क्लीन होम अप। रामकृष्ण पहली गेंद पर क्लीन आउट, क्लीन बॉल्ड होकर पवेलियन पर वापस। फारूक का स्ट्राइक लेना चाह रहा था, लेकिन रामकृष्ण कहा कि मैंने स्ट्राइक लेना चाह रहा हूं। नतीजा क्लियर बॉल के दरमियान रामकृष्ण वापस पवेलियन पर लौटना पड़ा। 60 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट। आखिरी 2 गेंद बाकी रह चुके हैं इस ओवर पर। बुल्स की प्लानिंग की अनुसार जो टॉस जीतकर फील्डिंग करने का निर्णय लिया था, वो प्लानिंग को पलटाया था सुरेश ने अपनी धमाकेदार इनिंग्स के साथ। उसके बाद फारूक हाथ जुटाया आखिरी ओवर की पहली गेंद पर छक्का जड़ते हुए। इस वक्त बुल्स ने अपनी सोच को बदलते हुए 60 पर ओपोनेंट को रोकने का कोशिश पर। फारूक अपनी अगली गेंद लेकर तैयार। राइट हैंड ओवर द विकेट, फुल लेंथ डिलीवरी। इस वक्त ड्राइव किया गेंद को लॉन्ग ऑफ की दिशा पर। एक टप्पा खाने के बाद फील्डर के हाथ पर सुरक्षित गेंद। 1 रन के इजाफा, 1 रन के साथ स्कोर बोर्ड 61 नंबर बोर्ड फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट। आखिरी गेंद बाकी रह चुके हैं। फारूक आरंभिक बल्लेबाज के रूप पर मैदान पर जो उतरे हैं, फारूक अब तक मैदान पर खड़े हैं। आखिरी गेंद को सामने करते हुए
Can he finish it in the style? ने ड्राइव किया गेंद को लॉन्ग ऑन की दिशा पर, फील्डर तैनात, एक रन दौड़कर पूरी कर चुके हैं, फंबल बाय द फील्डर, दूसरी रन भी बल्लेबाजों ने दौड़कर पूरी कर चुके हैं। इसी के साथ इनिंग्स की समाप्त, पहली इनिंग्स की समाप्त के बाद स्कोरबोर्ड कुल मिलाकर 63 रन, 3 विकेट के नुकसान पर। 64 विल बी द टारगेट फॉर AMA Bulls who won the toss and elected to field first to win this match against AMA Sunshine with the 30 legal deliveries. It means almost 12.70 runs per over. Second match. Bulls 67 ಹಾಕಿ ಅಲ್ಲ ಸನ್ಶೈನ್ ಎತ್ತರ ಹಾಕಿ 67 AMA Sunshine. ಎಲ್ಲ AMA Sunshine losing the toss have posted 67, a massive total in the context of the tournament, I'd say. It's a huge total on the board, and I think it'd be pressure for the chasing side. Bulls be disappointed that they didn't bat. I think their bowling needs to be looked into, actually, because the way they've gone about, I think they bowled far too many short balls and offer plenty of time for the batters to pick their spots, and that's exactly what they've done. I think I got to thank the 3 umpires who've done a fantastic job in the tournament. Mr. Lalit, Mr. Bhargav, Mr. Nageshwar, the 3 umpires are doing a fantastic job out there. Their decision making's been spot on and very accurate so far. The role of the umpires is absolutely vital for the success of the tournament, and these 3 have done a great job so far. It's very hard out there, so it's not easy standing over there for 10-20 overs. Thank you very much for doing that, and keep doing that. Right, what do you reckon, Sinan, now? 67, a massive total. They got to attack right from ball one, not much time to take. If they don't get a good aggressive start, they'll be on the back foot straight away. Tell us a little bit more about how they got to go about their chase. I think very easy, yes, I understand they got to be ultra aggressive, but how calculative should they be? Because you can't be one-dimensional and then lose the plot in the process, and that's we've seen a lot of it. Can you tell us a little bit about that? बिल्कुल हाशिम, वो जो चेस की तरफ जाने से पहले एडजुडिकेटर्स के बारे में बात किया, तीनों एडजुडिकेटर्स को धन्यवाद कहना चाह रहा हूं। अब तक शानदार तरीके से ऐसा मैच को आगे लेके गया है अंपायर्स, उनको धन्यवाद कहना चाह रहा हूं। 64 फ्रॉम 30 जरूर क्रिकेट पर जो भी पॉसिबल है, आपको याद होगा ऑस्ट्रेलिया और वो जो साउथ अफ्रीका का मैच 434 पहली बार 400 अबोव को चेस किया था, तब तक कोई भी यकीन नहीं कर रहा था कि ये चेस हो पाएगा। लेकिन जब वो उन्होंने हर्षल गिब्स की वो जो शानदार इनिंग्स की, साथ ही साथ ग्रेम स्मिथ के 90 ऑड रन्स के साथ वो जो स्कोर को चेस किया था, उसके बाद सबने क्रिकेट पर यकीन करने शुरू किया कि जो भी स्कोर चेस हो जाएगा। तो वंस पहली बार होने तक यू विल नॉट बिलीव, लेकिन एक बार जो हो गया उसके बाद जो भी है, जो भी स्कोर है, आप बिलीव करना पड़ेगा। आप जो भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते पहले ही। 64 फिर भी मैं कह रहा हूं 64 इज नॉट इजी। Agreed, and thanks for throwing my memory back to the I think Centurion game back in South Africa. I remember that game. I was watching, I think,
Johannesburg, right. Thanks for the correction. I watched that game. I was in front of the TV. I didn't go anywhere because I knew that once 4:34 were posted, I thought that there would be some crackworks and fireworks, exactly what we saw from Herschel Gibson Smith. Great chase. Fantastic. Anything's possible, I agree. But still, you got to have that method. मैच की बात अब जब आप बात कर रहे थे मुझे और एक चीज याद आया। वही मैच हमें सिखाया कि सबसे बड़े इनिंग्स भी जरूरी है, लेकिन उसके साथ ही साथ एक रन भी जरूरी है। एंटोनी का वो जो सिंगल हमें सिखाया कि क्रिकेट में जीतने के लिए हर एक का कंट्रीब्यूशन इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर दोनों आरंभिक बल्लेबाजों ने यहाँ पर कंट्रीब्यूट करना ही पड़ेगा, पावर प्ले का फायदा उठाना पड़ेगा। पावर प्ले पर मेरे ख्याल में जो मिड विकेट और लॉन्ग ऑन पर फील्डर तैनात है 30 गज की गहरे के बाहर, 30 गज के अंदर लॉन्ग ऑन मिड ऑफ कवर्स, एक्स्ट्रा कवर्स, गली, second slip, square leg and short mid wicket. Sorry, square leg and a fine leg. First delivery, dotted delivery. पहली गेंद चंदू, पहली ओवर पावर प्ले की ओवर लेकर आए हैं चंदू। अपनी पहली गेंद राइट आर्म ओवर द विकेट गेंदबाजी किए थे नूर के लिए। नूर ने कनेक्ट नहीं कर पाए, संपर्क नहीं कर पाए। दूसरी गेंद इस वक्त लेग स्टंप से बाहर पे गेंद वही करार दिया। बल्लेबाज ने उठाना चाह रहा था स्क्वायर लेग की दिशा पर, लेकिन इट वाज सो फार फ्रॉम द लेग स्टंप, वही करार दिया। एक रन के साथ खाता खोले हैं बुल्स ने। इस वक्त डिफेंसिव स्ट्रोक एक रन के लिए, एक रन के इजाफा, एक रन के साथ नूर अपने और बदलते हुए और एक रन के साथ अपनी खाता खोले हैं। 2 रन बिना किसी विकेट का नुकसान पर पहली ओवर पावर प्ले ओवर की चलती पर डॉटेड डिलीवरी। 64 इज द टारगेट। यहां पर 30 गेंदों पर दोनों आरंभिक बल्लेबाजों का ऊपर प्रेशर, दबाव जरूर है। इस वक्त स्वीप करना चाह रहा था, स्लॉग स्वीप के लिए कोशिश किया था, लेकिन गेंदबाजी पर थोड़ा सा परिवर्तन गेंदबाजी के द्वारा लेग कट डिलीवरी गेंदबाजी किए थे। इस वक्त फिर से स्लोवर डिलीवरी उठाना चाह रहा था, आउटसाइड जो करना सीधा चेहरे पर लगी गेंद, डॉटेड डिलीवरी। लगातार डॉटेड डिलीवरी ये एक अच्छी शुरुआत नहीं है बुल्स के लिए, क्योंकि उन्होंने 64 के टारगेट को चेस कर रहे हैं। सनशाइन टॉस हारने के बाद भी इस मैच पर लगे रहे आखिरी वक्त तक का। महेश और फारूक के वो जो इनिंग्स के साथ इस वक्त 64 के बड़े टारगेट दिए हैं सनशाइन ने बुल्स के लिए। बुल्स प्रेशर दबाव को साथ लेकर आए हैं, मैदान पर उतरे हैं आरंभिक बल्लेबाजों के रूप पर नूर और बिना नाम बताए और एक आरंभिक बल्लेबाज अब मैदान पर खड़े हैं नूर के साथ। 4 रन पहले ओवर के समाप्त के बाद अब बाकी बचे हुए 4 ओवर पर चाहिए 60 रन। 15 ओवर की औसत पर, प्रति ओवर 15 रन की औसत पर। इस वक्त फुल टॉस गेंद, पुल किया गेंद को मिड विकेट की दिशा पर, फील्डर तैनात, 1 रन के इजाफा, 1 रन के साथ स्कोर बोर्ड धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए 5 रन बिना किसी विकेट का नुकसान पर। दिस इज नॉट अ गुड स्टार्ट फॉर द एएमए बुल्स while they are chasing down the target of 64 from 5 overs. Slow delivery this time, लॉन्ग ऑन की दिशा पर ड्राइव किया था गेंद को। 1 रन के इजाफा, 1 रन के साथ फिर से बदलाव, 6 रन बिना किसी विकेट का नुकसान पर। फारूक इस वक्त ड्राइव किया कवर से आपकी दिशा पर, कवर ड्राइव शानदार तरीके से ड्राइव किया था गेंद को। फील्डर तैनात था, सिर्फ मात्र 1 रन दौड़कर पूरी कर चुके हैं बल्लेबाज। 1 रन इक्का दुक्का से अब कुछ नहीं होगा इस इनिंग्स पर। 64 रन की लक्ष्य को आप चेस करने लगे हैं, तो दबाव को साइड पर उतार कर बड़े शॉट्स के कनेक्शन एक
इस वक्त ऑफ स्विंग से काफी बाहर पे गेंद, रन आउट की खतरा। जी हाँ, अंपायर ने उठा दिया उंगली और पहली विकेट रन आउट के रूप पर वापस लौट चुके हैं पेविलियन पर। एब्सोल्युटली डिजास्टर या कह सकते हैं। दो ओवर दूसरे ओवर की 5 गेंद भी समाप्त हो चुके हैं, सिर्फ और सिर्फ 7 रन 1 विकेट के नुकसान पर इस वक्त एएमए बुल्स टॉस जीते ही फील्डिंग करने का निर्णय लिया था पहली मैच को देखकर। दूसरी मैच खेलने का यह फायदा होता है कि पहली मैच का वो जो रिजल्ट के ऊपर अपने रणनीति को बना सकते हैं। तो दूसरी मैच पर टॉस जीते ही फील्डिंग करने का फैसला लिया था, लेकिन वो निर्णय को गलत साबित किए थे उनकी गेंदबाजियों ने। 63 रन खर्च किए थे 5 ओवर पर और दबाव भी लाए थे बल्लेबाज के ऊपर। वो दबाव अब बल्लेबाजियों को खा बैठे हैं इस वक्त दूसरे इनिंग्स पर। हिम्मत नहीं दिखा रहे बल्लेबाजियों ने। चंदू वंस अगेन इस वक्त स्लोअर डिलीवरी, लेग कट डिलीवरी, डिफेंड किया गेंद को। नो रन्स विल बी स्कोर्ड, मौका नहीं बल्लेबाज को कोई रन चुराने पर। दूसरी गेंद चंदू राइट आर्म ओवर द विकेट, इस वक्त ऑफ स्विंग से बाहर पे गेंद को ड्राइव करना चाह रहा था लेकिन संपर्क नहीं कर पाया। गेंद सीधा विकेट कीपर की दास्तानों पर। डॉटेड डिलीवरी चंदू वंस अगेन। चंदू इज नॉट अलाउइंग द बैट्समैन टू ओपन अप हिज आर्म्स। That's what we are witnessing at this winner. So far, Chandu bowled 9 deliveries and spent only 4 runs. Beautifully bowled. इस वक्त ऑप्शन से बाहर पे गेंद शॉर्ट पिच डिलीवरी कट करना चाह रहा था लेकिन स्लाइटली टर्न बल्लेबाज के। थर्ड मैच इस वक्त फुल टॉस आउटसाइड लेग स्टंप वाइड करार अंपायर की तरफ से। 1 more extra to the total moves up to 8 on the board. इस वक्त उठा दिया गेंद को डीप स्क्वायर लेग की दिशा पर 6 रन के लिए। बढ़िया कनेक्शन शॉर्ट पिच गेंद पे, स्लोअर गेंद पे वेट किया आखिरी वक्त तक और अपने बल्ले के बीचों बीच संपर्क भी टाइमिंग के साथ करते हुए गेंद सीधा स्क्वायर लेग के ऊपर से 6 रन के लिए। पहली छक्का पहली ओवर से ये शॉट्स की जरूरत है फिर से। इस वक्त डॉटेड डिलीवरी 15 एक विकेट के नुकसान पर तीसरी ओवर की आखिरी गेंद बाकी रह चुकी है। ओके, तीसरी ओवर के समाप्त। इस वक्त फुल टॉस गेंद को ड्राइव किया कवर्स की दिशा पर, 1 रन दौड़कर पूरी कर चुके हैं। दूसरे रन के लिए दौड़ना, रन आउट की खतरा है और साइकिलिंग पर 1 रन पर संतुष्ट बल्लेबाज। ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಟದ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಮೈದಾನದ ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ನಲ್ಲಿ ನಿರತರಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಆಟಗಾರರ ಗಮನಕ್ಕೆ ನೋಡಿ, ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ, ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹವನ್ನು ನೀಡಿ ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಂಚ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಬದಿಗಿಟ್ಟು ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹವನ್ನು ನೀಡಿ ಈ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟಕ್ಕೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹವನ್ನು ನೀಡಿ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟವನ್ನ ಇನ್ನೂ ರೋಮಾಂಚನಕಾರಿಯಾಗಲು ಸಹಕರಿಸಿ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥ ವಿನಂತಿಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಕ್ರೀಡಾ ಪ್ರೇಮಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿರತಕ್ಕಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಅನ್ನು ಬದಿಗಿಟ್ಟು ಇನ್ನಷ್ಟು ಆಟಗಾರರನ್ನ ಹುರಿದುಂಬಿಸಬೇಕಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. The match is turning as a one-sided game for Sunshine after losing the toss. They scored 63 runs. अगले मैच की टॉस के लिए बुलाव देना चाह रहा हूं UMA चैलेंजर्स बनाम UMA वॉरियर्स। इन दोनों टीम के कप्तान कॉम बॉक्स पर आ जाइए। अगले मैच के अगले मुकाबले की टॉस के लिए UMA चैलेंजर्स की कप्तान और UMA वॉरियर्स की कप्तान।
क्या है तो इधर ही बोलो अनाउंसमेंट करने के लिए अनाउंस क्या कर रहे मैं अरे के मैच क्या कर रहे थर्ड मैच ಇದೆ ಟಾಸ್ ಆಯ್ತು ನೀವು ಯಾಕೆ ಬರೋ ನಾನು சொல்லல ನೀವು ಯಾಕೆ ಬರೋದು ಕುಡಿ 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 ಆ ಕ್ಯಾಮರಾ ಓರ್ ಕ್ಯಾಮರಾ ಜಸ್ಟ್ ಕವರ್ ಹಾಕಮ್ಮ ಇಲ್ಲ ನಂಗೆ ಡೆಕೋರೇಟ್ used ಇದು ಚೊಮ್ಮೆ ಎದುರು ಬೇನಿಲ್ಲ ಭಯಂಕರ ಲಾಂಗ್ ಆಯ್ತು ಭಯಂಕರ ಲಾಂಗ್ ಇದರ ಮಧ್ಯೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕರೆಯನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ತೃತೀಯ ಪಂದ್ಯಾಟ, ಮೂರನೇ ಪಂದ್ಯಾಟದ ನಾಣ್ಯ ಚಿನ್ನಿಗೆಯಾಗಿ ಎಎಂಎ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಎಎಂಎ ಸನ್ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಎತ್ತರದ ಕಪ್ತಾನರು ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬನ್ನಿ, ನಾಣ್ಯ ಚಿನ್ನಿಕೆಯನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕಾಲಿಂಗ್ ಅಪ್ ಫಾರ್ ದ ಥರ್ಡ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಎಎಂಎ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ವರ್ಸಸ್ ಎಎಂಎ ವಾರಿಯರ್ಸ್. ಬೋತ್ ಟೀಮ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ಸ್ ಆರ್ ಇನ್ವೈಟೆಡ್ ಫಾರ್ ದ ಟಾಸಿಂಗ್ ಸೆರೆಮನಿ. Sunshine. AMA Sunshine won the game convincingly, and it was very easy and very predictable when they scored that massive total on the board. There was no way that they were going to lose the game unless they be taken into the cleaners. Exactly how the result unfolded as well. Congratulations, they're amongst the points table. They're going to get some points here. That's very vital in the context, and I've got to say. AMA Warriors captain. AMA Warriors captain would like to find the presence of you immediately here at the comm box. The other captain's waiting for you. Try and make sure to be here now. AMA Warriors captain. AMA Warriors captain, please make your way to the comm box. We can't give you hundreds and hundreds of calls. Please take one call of ours and respond to it promptly. ವಾರಿಯರ್ಸ್ ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನ, ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನ ದಯವಿಟ್ಟು ಬನ್ನಿ ಟಾಸಿಗಾಗಿ. Your opponent is waiting for you. ದಯವಿಟ್ಟು ಕಪ್ತಾನ ಬನ್ನಿ. ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಪ್ಲೀಸ್. AMA ವಾರಿಯರ್ಸ್ ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನ ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬನ್ನಿ. Please come here for the toss. Right, sure. Go on. ఉండా పోయితా सीधे पो बस वक्त राइट पो Two captains are getting ready
The match referee's over there as well, so someone's got to flick the coin here. ರೈಟ್ ಬೇಡಲ್ಲ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಈ ಟೇಬಲ್ ಇರ್ತದ ನಿಮಗೆ ಅಂಪೈರ್ ಕಟ್ಟರವ ಮ್ಯಾಚ್ ಕಟ್ಟರವ Who's won the toss? Who won the toss? Warriors won the toss. They are gonna field first or bat first. AMC Warriors have won the toss and they're gonna field first straight away. Warriors white वाला Warriors है ना? और Warriors ने toss जीता fielding. Fielding. Fielding first. I think we've seen the two games here being played. 1-1 by team batting first, the other one won by team batting second. It's very hard to predict. No absolute advantage if you bat first or if you bat second. If you play good cricket, you will win the game. And that's what I see. Because it's very hard to figure out, you know, what kind of a surface. But I feel that genuinely that you play well, you play good cricket, you win the game. It's as simple as that. This is how it turned out to be. In the last game, team won the toss, elected to field first, and the opposition pounced in terms of piling up runs on the board. Got runs on the board and couldn't really prevent. And now Warriors have won the toss and doing exactly the same. They're batting second, and they must have a strategy. And they got to go with a plan here, really. You're batting second, you got to try and make sure, pick up wickets, puts the opposition under a bit of pressure. And that's what you got to do. Try and make sure the ball according to the field. And that's what you got to do. Build pressure. I think that's what Rob Key, Brendan McCullum said. What is cricket all about? Cricket is about putting pressure and soaking pressure. And that's what cricket is all about. You got to bat well. ನಾನು ಬೇರೆ ಇದ್ದಾವೆ ಸೇರ್ತಿಲ್ಲ. Right, the players, the umpires, please note, only 20 minutes of time slot is allocated for either teams. Batting first or bowling first or whatever. 20 minutes of time slot. And the game must be wrapped up well within the timeline.
Right, that's the key. The umpires will have to have a note on that. The players, the captains, everyone involved, try and make sure that the game gets done and dusted in a short span of time as well, because we've got a lot of games to be played in this lone ground. Surely we can't waste a lot of the first ball. Down the leg side, express pace, raw pace, express pace, and that's what you got to do. I think you win the toss, you bowl first. I think your idea is very simplistic, that you got to bowl according to the plan. You got to bowl according to the field set. And that's one thing that you got to do as a bowler, and that's your responsibility. And I think one thing for sure that I've been able to observe, that is a good delivery, that is a superb delivery. Right. So the idea as a bowler, what you're going to do is bowl wicket to wicket. Bowl round about that channel, stick channel. You know, you got to do that on a consistent basis. And that's the idea. You don't really have to pick up wickets. You don't really have to be bang on target every time. You can't do that as a bowler, I understand that. That's the shot. One outside edge found, that's been taken. He's got to go back to the hut. Yeah, British. Yeah, British. Not for Tony Gray, for sure, but I follow a lot of good English commentators. This sounds to me like funny. Yeah, right, a little bit, I think. But I follow someone like Rob Key, someone like Mike Atherton, Nasser Hussain. You know, I follow their trend. Yeah, right. I enjoy watching that podcast as well. Your accent is to him only, not to... Yeah, matches a little bit, right. Now we fast, right? Yeah. I know it. Right, well played. Oh, that's a big miss. That is a big miss. Now run away to the boundary. That's a bonus 4 run actually to the tally. And that's absolutely inexcusable, I gotta say, in the context of the game. Because, I tell you what, because you're bowling first, you gotta have that right mindset. There you go. Next time around, slowish, through the air. And that's what you gotta do. As a bowler, you don't give width an offer. Not that extra bit of space to free the arms. And when you do that, you're asking for trouble. You bowl wicket to wicket. You bowl round about that channel, and that's where you're more likely to put the batter in trouble, because the batters can't really free their arms. This time it's a sky air. It should be called a no ball. Well called by the umpire. So an extra to the total there. The score moves up. Score, please. Really try and work on the scoring. Score. 8 on the cards. Nicely played. There is protection out there. Will just be 1. So from batting team's perspective, what they got to do is that they got to try and make sure that they build up a partnership here, and not lose the plot, and not try and play shots and bring your own downfall. You do that, you're likely to put yourself in trouble. അത് നങ്ങ ഓടോടെ പോ ഓ അവിടെ പോ നീ പോ ഞാൻ എങ്ങനെ പോ ചെയർ പേന്റെ ചേരെടുത്ത പോണ കിട്ടില്ല ചേരെടുത്ത പോണ കിട്ടില്ല കളിക്കിടല്ല അവിടെ
fast and express pace. It's a skyer, it's up in the air, it's going to fall in no man's land. It'll just be one length ball there. He was trying to execute a shot over mid-wicket. Couldn't find the timing right. Will just be one there. Brings the left-handed back on strike. First left-hander so far. Full tournament. First left-hander for them. So I think very clearly what they got to do is that building a partnership. That's the way to go, and that's how they got to try and craft their innings. You know, you can't play every ball out of the park. That's literally impossible in cricket. What you got to do is that try and make sure that push around, try and pick up those singles, try and get the strike rotating. Nicely played. There is protection out there. Yes, he does manage to prevent it. Good throw. Good return by the fielder. Will just be one. The shot selection plays the key here, because you know what, underarm cricket's a different ball game here, it's a different overarm games. You got to have the right shot selection, and that's fundamental. See how he goes about his batting. Beautiful delivery, absolutely perfect length. You can't play that shot off that delivery because that's much fuller. You're trying to play pull, you're likely to miss it and likely to hit the timber as well. Anyways, end of over number 3. Score at 11 on the board. I think it's been good going so far for the bowling side. I think after winning the toss and electing to field first, I think 11 after the end of the third over, I think is really good. But they got to keep the momentum going. One over can entirely change the context of the game anywhere, and that's where you got to be absolutely careful. And cricket is a game which can change in a space of about just 2-3 deliveries, 3 big sixes, 3 quick wickets can change the momentum either ways actually. Nicely bowled, trying to play the shot down towards the mid-wicket region. Tell us a little bit about Sinan, tell us a little bit about how quickly the game, we've seen that time and time again in international cricket as well. You know, waiting for the right moment to pull the trigger, right? These sort of things are very prevalent. That's out, hits the timber, that's not the best of the delivery by the bowler. It's a gift of a wicket, he's got to take a long walk back. He'd be very disappointed. Looking at his own replay, he can't really trust his own batting, really. That is bizarre way to get out. Full toss and offer, couldn't take the full toll on that one. He's got to take a long walk back here. So I'll tell a little bit about, you know, game changing in a space of about 2-3 deliveries. 3 sixes, 3. We've seen that time and time again, even in that T20 World Cup, Bumrah over, where the game changed completely in a space of about 1 over, I think, right? So this is what cricket is about in a nutshell. बिल्कुल उम्मीद था वो बानी हाथ की वो जो बल्लेबाज जब तक मैदान पर था उम्मीद जरूर था, लेकिन तुरंत जब मैंने माइक को उठाया तुरंत उन्होंने 3 बॉल होकर पवेलियन पर वापस गया. उनकी वो जो बॉडी देखकर मैंने सोचा था कि 1-2 छक्का मारने का काबिल है उनके पास, लेकिन उन्होंने तुरंत अपने विकेट खोकर पवेलियन पर वापस आया. तो अब कहना मुश्किल है क्योंकि दोनों नए बल्लेबाज मैदान पर है, फिर भी क्रिकेट इज अनप्रेडिक्टेबल. आखिरी ओवर भी बचे हैं तो 1-2 छक्का इस मैच की गति को बदल सकते हैं, कभी भी बदल सकते हैं. आखिरी ओवर अभी भी बाकी रह चुके हैं. गेंदबाज अपनी गेंदबाजी को आगे बढ़ाते हुए राइट हैंड आउट विकेट इस वक्त कट करने का कोशिश की तो लेट कट की कोशिश, बल्ले का बाहर लगा था गेंद सीधा विकेट कीपर की हाथों पर और एक विकेट झटका. विकेट इज फॉलिंग बैक
to back. This is not a good sign for the batters. Somebody have to stay there. कोई रुकना पड़ेगा मैदान पर, क्रीज पर टिका रहना जरूरी है अब बल्लेबाज के। अगर आखिरी वक्त तक टिका रहा तो एक दो छक्के का उम्मीद रख सकते हैं। बल्लेबाज मैदान पर उतरते हुए चौथी ओवर की चालती पर Yeah, I'm a lecturer myself. But into cricket, you commentary, you're a professional? I do this. Amateur. Passion for the game. Super. I say that I'm now becoming more of a professional in commentary. By training. बल्लेबाज इस बार उठा दिया गेंद को लॉन्ग ऑन की दिशा पर, लेकिन 5-6 years. सीमा रेखा पार नहीं कर पाए। लॉन्ग ऑन पर फील्डर तैनात, उनकी हाथों पर सुरक्षित गेंद, इसी के साथ और एक विकेट छिड़का दिया। लुकिंग फॉर अ बिगर वन बट they can't able to clear the fence. Timing, lack of power, जनरेट करना पड़ेगा पावर को। गेंद अगर सीमा रेखा पार करना है तो थोड़ा सा टाइमिंग के साथ पावर जनरेट करना पड़ेगा शॉट पर। शॉट सिलेक्शन सही था लेकिन पावर की कमी, टाइमिंग की कमी की वजह से लॉन्ग रन की दिशा पर फील्डर के हाथ पर सुरक्षित रहे गेंद। इसी के साथ और एक विकेट छिड़का। बैक टू बैक विकेट्स आर वॉकिंग बैक टू पवेलियन। Defense is strong. Back to the bowler. Dotted delivery to end the over number 4. चौथी ओवर की समाप्त। स्कोर बोर्ड कुल मिलाकर 13 रन, 4 विकेट के नुकसान पर। आखिरी ओवर बचे हैं, कम से कम 18 रन बनाना पड़ेगा आखिरी ओवर पर, क्योंकि 30 will be a good score in this venue to restrict. This is not. ನೋಡಿರತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಕ್ರೀಡಾ ಪ್ರೇಮಿಗಳಿಗೆ, ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳಿಗೆ ಚಾದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಡಿಜೆ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಚಾ ತಯಾರಿದೆ. ಯಾರಿಗೆಲ್ಲ ಚಾ ಬೇಕಾಗಿದೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಸಂದರ್ಶಿಸಬಹುದು. You can visit there. The tea is ready for all the spectators, all the players gathered here. You can visit behind the DJ. There is a tea stall for you. 5th over in progress. दूसरी गेंद दाहिने हाथ राउंड द विकेट। इस वक्त बल्ले का किनारा लगाता गली की दिशा पर 1 रन के लिए। 1 रन के साथ स्कोर बोर्ड कुल मिलाकर 15 रन, 4 विकेट के नुकसान पर। तीसरी बार दाहिने हाथ की गेंदबाज ओवर द विकेट। इस वक्त स्लॉग शॉट की कोशिश, 9 विकेट की दिशा पर गेंद, सिर्फ मात्र 1 रन के लिए। 16 ऑन द बोर्ड, 16 रन, 4 विकेट के नुकसान पर। 3 गेंद बाकी रह चुके हैं पहली इनिंग्स की आखिरी ओवर पर। 1-2 छक्का अगर ये 3 गेंदों पर लगा सकते हैं तो एक रेस्पेक्टिव टोटल की उम्मीद रख सकते हैं। बाएं हाथ की गेंदबाज इस वक्त ओवर द विकेट पर गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए। फाइनल 3 डिलीवरीज लेफ्ट। इस वक्त गेंद को उठा दिया लॉन्ग ऑफ की दिशा पर। एक टप्पा खाने के बाद फील्डर के हाथ पर गेंद, सिर्फ मात्र 1 रन के लिए। 1 रन पर संतुष्ट बल्लेबाज। इक्का दुक्का से कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस वक्त फील्डिंग टीम के लिए। आखिरी 2 गेंद बचे हैं। 2 गेंदों पर अगर कम से कम 1 छक्का आए तो मैच इंटरेस्टिंग बन सकते हैं। लो फुल टॉस गेंद ब्लाइंडली मारना चाह रहा था लेकिन संपर्क नहीं हुआ गेंद और बल्ले के बीच। सीधा विकेट कीपर की दास्तानों पर सुरक्षित गेंद। डॉटेड डिलीवरी, आखिरी गेंद बचे हैं। कैन ही फिनिशिंग इन द स्टाइल? शॉर्ट पिच डिलीवरी इस वक्त उठा दिया लॉन्ग ऑफ की दिशा पर। एक टप्पा खाने के बाद फिर से फील्डर के हाथ पर छोटी सी फंबल। 1 रन पर संतुष्ट। 1 रन के साथ ओवर की समाप्त, इनिंग्स की समाप्त। पहली इनिंग्स की समाप्त के बाद स्कोर बोर्ड कुल मिलाकर 17। सॉरी, क्षमा कीजिए। 4 ओवर की समाप्त के बाद स्कोर बोर्ड कुल मिलाकर 17 ऑन द बोर्ड
फॉर लॉस ऑफ 4 विकेट। आखिरी ओवर अभी भी बचे हैं। उम्मीद अभी भी बचे हैं बल्लेबाज के ऊपर। आखिरी 6 गेंदों पर कितना रन बन पाएगा देखना पड़ेगा। गेंदबाजी चौर पर रहा। I think this is the time where they got to pull the trigger and they got to try and make sure that they get as many as they can. I think you got to try and back away. You got to try and use your 360 thoughts to try and play all around the park. Chief guest interview stops. Stop for a moment, please. Trying to switch it, but got the leading edge, I suspect. Popped up in the air, he's got to go back to the hut. Not the right shot selection. I think that's the end of the innings as well. 5 overs that they've used up, all their 5 overs, and they've managed to score 22, which means 23 will be the target for the opposition side when they come out to bat. But I'd say that 22 is not a sort of massive total on the board. 20. Sorry, 20 means 21 target. 21 the target. I think it's Atlante chasing team now. Outre Khan. The target. I think it's going to be an easy chase unless they don't lose these early wickets. I think in the first 1-2 overs, if they can manage to bat smartly, they'll win the game. That's exactly what we saw in the first match as well. So I felt that I think the way they've gone about their batting, I think they crumbled. They couldn't have a partnership. I think when you want to post a total of a massive type, you've got to score around about 40, 45, 50 or thereabouts. You've got to try and make sure you have a good partnership and then you capitalize on that. And that didn't happen. And that's one of the reasons why they fall too far short of their standards, I believe. I heartily welcome our chief guest.
21 21 the target. Interesting to see how he goes about his bowling. Very vital, so very vital that they pick up wickets here. 1-2 wickets up front. They can throw that counter punch back. And they got to do that if they got to come back into this game. Otherwise, I think it will be a nothing chase. In the context of the game, I'd say that it's going to be a nothing chase. And the batters will be very aware of the fact that they know that they lose the plot here, they lose 1-2 wickets here, they'll be on the back foot. And that's why they got to start with a clear mindset. The right frame of mind is very important when you're chasing, because you know what, your heart beats faster when you're chasing. You're under a bit of pressure, whether you're chasing a low total, big total. Well done, good start. I think that's what you got to do as a batter, is to play according to the situation, do the basics, pick up 1s and 2s, get off strike, try and make sure that put pressure on the bowlers. You leak 5-6, get 5-6 runs per over. I think you're on top. I think the bowler here has got to do something magical with the ball. Outside edge found, rolling down towards the boundary, third man boundary, cut off in the end. Just be a couple of runs there. So you got to convert those half chances into full if you've got to win the games, because you're trying to defend the total of this nature. You've got to try and make sure you take those catches. Catches win matches. We all know that. That's how the Austin will be called away. Miscollection, that makes it even worse. 1 + 1 to the total takes the scoreboard to... So that is not an excuse, but yeah, maybe better luck next time I can say there is always a chance ahead. Believe in that. Score at the night. Background music for you. Such a great work from Score. Seven on the cards. And I think one will get the job done. They don't really have to play aggressive shots and ultra aggressive. You don't really have to do that. You just play basics. That's it. Yeah, we'll win the game for you. That's nicely played. That might go all the way. No, bounces inside the rope. Run away to the boundary. 2 bounces, I suspect. That is a big, but down the legs, it was waiting for that. Cashed on that. 4 to the total, takes the scoreboard to 11. Good, great start now here for their chase. Looking like, that's what I say, you don't pick wickets, you're on back foot, and this is going to be a nothing chase. This is how it's turning out to be so far. കാണില്ലേ പർവ്വത്തുണ്ട് അത് കൊടുന്നില്ല
White signal by the umpire. Oh, sorry, dead ball. Beautiful delivery, exceptional delivery, right up in the block hole. Nothing much the batter could do about it. So that's what, there's no pressure whatsoever. If you're chasing, you don't have pressure, you can do it easily. Over end aita. End of the over. End over end aita. Etara agenda. Mr. Sabarbal, we would like to... Agenda or aita? Roraima. Pandinda, pononda. That's got all the way for 4 as well. Good bit of batting there is. Fifth match next. 15 on the ball, nicely played away. Diving effort, couldn't stop it. So that's what I said. So to give a good account about they chase, this is nothing chase, no pressure whatsoever. These two batters, partnerships, the key to winning matches. Not just winning matches, but also winning the tournament as a whole. This time it's a freebie, absolutely a freebie. Enough time for the batter to free his arms. It's not gone to the boundary, I suspect. It's been pulled back inside the road by the fielder over there at short, sorry, not at square leg. Couple runs to the total. This batter is growing in confidence. Batter's name, please? Venkatesh packs a good punch straight to the fielder. The fielders, I think it's been signalled, no ball by the umpire. The score's a level at this stage. Venkatesh, but it's brilliant. These two, the day were actually, the moment they went out to bat, they had a clear mindset and they dictated the terms. Batted so well, stitched in a partnership. 1 to win. 1 to win. The score's a level. That's beautifully done. And that's going to go all the way through. No, it's been pulled back. That's the end of it, I think. There's that winning run. That's it. Umpires, the match is over. The match is win. You already win the match. I don't know. Batter so well. I think you've got to give it to these two batters, the way they've gone about their business, chasing a small total, but their approach is something to be noted. That's how they got to go about their chase, and they did it beautifully. On their brilliant performance.
The lights are slowly turning on. It's getting darker here. Batters, please make your way to the crease. The batters, the opening pair for the riders, please make your way to the crease. I request our chief guest, Mr. Darren Joshi, Vice President of
boundary. And the angle as well. The angle wider, I think, is that going down, and then you just flick it. All the team managers, quickly assemble here. All the team managers, could you please? Fantastic batting display. Truly is really great aggression shown. This time, mistiming that one. That's one way in which you can keep the batters quiet, is to frequently mix up the lines, lengths, the trajectory, the pace. Mix up that pace. Sometimes you bowl round about mid-60s, mid-70s. You got to do that on a sort of consistent basis to try and put the batsman in a bit of a bother. It's in the air. There is nobody out there. The field is coming around. Good return, but the batter had enough time to cross over for that second run. Sinan, could you please come over here? ಲೊಕೇಶನ್ ಕಳಿಸ್ರೆ ನಿಜಾಮ್ ರೆದ್ರಂಡಿ 10 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಎದುರು ಬರ್ನಲ್ಲ 10 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಬರ್ನು ಅಂದು ಅಬ್ಬೋ ಬಾಲ 5 ಟೀ ಶರ್ಟ್ ಬಿಡ್ಚಪ್ಪ ಕೇಕ್ ಬಿಡ್ಲು Trying to play big shots. I think good line, a good length. It's a suicide of a run. There was no run in there. Suicide of a run, and he's got to take a long walk back. I think that's the end of the innings as well, I think. Last ball of the over there. Trying to steal the second non-existent run. So that's the end of their innings. Riders, I think, winning the toss, batting first, have piled up runs on the board. I think the final total is, what's the score there? 46 on the board. 47 is going to be the total for the opposition side when they could go out to bat. And I feel that this is a great total. I feel it's a winning total. If you can bowl well, you can win the game. So I give the credit to the batter. I'm not sure about the name of the batter. I just got to check out here. Ashok, I think. Batter magnificently. Throw that counter punch back on the bowling side. Put pressure. Took the bowlers on. And played some magically spectacular shots. इसी तरह खेले दो जरूर इस मैच पर वापस आके कर सकते हैं ग्लैडिएटर्स को. Yeah, I agree with you 100%. Two-dimensional cricket is what you got to try and showcase here. Oh, that's beautifully. Packs a punch on that one. That will run away to the boundary in quick time. And that's what you get, those bad deliveries. You got to wait for them and you got to apply. Cricket is all about applying yourself. You got to spend a bit of time there. It becomes easy for you, actually. You know, I think that first shot executed was not a bad shot by any stretch. But I think he mistimed it for a microsecond, I guess. And that's what pressure is about. So the psychology that when you're going to chase is different when you're batting first. श्रीराम शॉर्ट पिच गेम का फायदा पूरी तरीके से उठाते हुए गेम को गैप पर डाले थे. लॉन्ग ऑन और मिड विकेट के बीच कॉर्नर का वो जो दिशा काली पे वहां पर गेम को उठा दिया. इस बार हवा में मिस टाइम, कैच आउट के खतरा. बॉल इज अंडर फील्ड एंड ड्रॉप्ड.
ड्रॉप्ड, आखिरी मोमेंट पर कैच हाथ से फिसल गए और जीवदान मिले यहां पर श्रीराम के लिए. Yeah, I think this could turn out to be a big moment in the game. And I'll tell you what, this batter's looking very dangerous with the kind of bat flows he's gotten. You never know. And I think the batter's doing the right thing here. I think, why do I say it's the right thing? Is because you know that by definition you can't play every ball out of the park. That's as simple as that. And I think that's where the two-dimensional cricketing idea comes into play, and they got to do that. आसानी सा मौका था हाशिम, आसानी सा मौका को खो बैठे हैं गेंदबाज और फील्डर ने वहां पर, वो भी श्रीराम की ओवर द बॉलर. श्रीराम यही इंटेंशन से पहले से ही खेलते आए हैं, पहले विकेट खोने के बाद भी वही इंटेंशन को कैरी कर रहे हैं, क्योंकि उनकी साथ दे रहा है दूसरी 3 नंबर की बैट्समैन दीपक इक्का दुक्का के साथ स्ट्राइक रोटेट करते हुए श्रीराम को स्ट्राइक पर लाने का कोशिश भी कर रहा है. तो श्रीराम फुल माइंडेडली गोइंग ओवर द बॉलर बिकॉज दे हैव द टारगेट ऑफ 46. 46 को चेज करते हुए श्रीराम अपने दिमाग पर बिठाया कि मैं तो गेंदबाज के ऊपर जाने वाला हूं, तो वही कर रहे. मौका मिला था बल गेंदबाज को, लेकिन मौका को उठा नहीं पाए. इस वक्त ऑफ स्पिन से बाहर पे गेंद, अपील जरूर आए थे विकेट कीपर के द्वारा, लेकिन बॉलर थोड़ा सा लो कॉन्फिडेंशियल थे, तो अंपायर ने कहा नॉट आउट. डॉट डिलीवरी दीपक का. इस वक्त डॉट गेंद को संभालना पड़ेगा, डॉट गेंद को कम करना पड़ेगा. स्ट्राइक रोटेट करते हुए श्रीराम को स्ट्राइक पर ज्यादातर लाना पड़ेगा दीपक को. इस वक्त पुल किया, शॉर्ट पिच गेंद को पुल किया मिड विकेट की दिशा पर, फील्डर तैनात. 1 रन का इजाफा, 1 रन के साथ अब श्रीराम आ चुके हैं स्ट्राइकर दौर पर. 9 ऑन द बोर्ड, 9 रन 1 विकेट के नुकसान पर. अब चाहिए 36 मोर, सॉरी 38 more runs to win from 22 deliveries. 22 गेंदों पर 38 रन is not impossible. It's possible, but batsmen have to stay. Oh, it's a wicket. Clean him up. Sriram is walking back to pavilion. सजेशन को सुनने से पहले श्रीराम अपना विकेट खोकर वापस पेविलियन पर लौट चुके हैं. तो अब and this is what, I think I'd say that, no matter how capable as a batter you are, I know that sometimes you play a fantastic innings or gem of an innings actually, when it comes to chasing, I like one of the things the chase master Virat Kohli or chase master MS Dhoni, what they do is that their approach is different. You know what they do? They choose one big over after this ball, nicely guided away down towards the back got a point for 1. So what they do so well is that I think they're not trying to play shots every ball. They target a bowler, specific bowler, and they try to get some boundaries and sixes. And that's where I think you've got to be selective and you've got to use right mindset. I think you've got to use find the right bowler. And you can't do that consistently, trying to play shots of every single delivery. That will just backfire. The way it just happened, we've seen already. शीमा, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कार्तिक अब तक बेहतरीन गेंदबाजी का प्रदर्शन किए हैं. स्लोवर डिलीवरी के साथ थोड़ा सा स्लाइटली लेग कट वेरिएशन भी है उनके पास. इस वक्त उठा दिया गेंद को हवा पर, फिर से मौका फील्डर के पास, और इस वक्त लपक लिया गेंद को, और तीसरे विकेट पेविलियन पर वापस. Deepak is walking back to pavilion. Exactly what it is. I think you're chasing massive total of
Yeah, beautiful spectacle of this beautiful ground. MCG ground. Very much like Australian MCG ground. No different. Very much similar. So, these two batters, I think they got to have a strategy now. Time's running out in the game. They got to get some big sixes from somewhere. And that's what they got to do. Sinan, you ready, Sinan? You nicely played away for one, just. And I think what they got to do is that they got to try some innovation methods. They got to take that risk. Can't play riskless cricket now. They got to take that risk. Beautiful delivery. That is superb. Pace and offer, bounce and pace. Raw pace by Venkatesh. Venkatesh looks to be an all-round cricketer. Very much like Hardik Pandya of India. The way he goes about his batting, his line, pace as well. So that's what the batter's waiting for, the pace. You don't give them pace, the expected pace. It is likely that you're going to mistime it just like that this time around, just evading the fielder. It'll just be one there, ones and twos. They're trying their best, but the issue is that they're unable to clear the boundary. As long as they don't do that, they don't get those big sixes and singles, I think it's just a formality. Advancing down the track, missing it completely. They're just really dominating from ball one, absolutely, in this game. There was that moment where I think number one, number two, I don't know their names for sure, but when they were looking threatening, Sinan, now, tell me a little bit about score. I think end of the over. Score it right there. Was 14 for 3. 14 for 3 after 3 or 2? After 3. Right, it's a big equation. Right, so at one point in time, the chase looked threatening, but they lost the wickets. Explain a little bit, dissect it in your own way. जी बिल्कुल पहली ओवर पर थोड़ा सा उम्मीद दिलाए थे बल्लेबाजों ने चेस करने का 46 को हम बिल्कुल चेस कर देंगे, लेकिन उसके बाद जो है बैक टू बैक विकेट्स उनको भारी पड़ा और थोड़ा सा ठंडा बन चुके हैं इस चेज, जैसे ही क्लाइमेट की तरह, ठंडे मौसम की तरह इस चेज भी ठंडा बैठ चुके हैं। तो 14 पर 4 रन चौथी ओवर की चलती पर 14 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट। इट्स नॉट अ गुड साइन। You need 33 more runs, 33 रन की जरूरत अगले 11 गेंदों पर। It's not yeah, it's a disaster in my view. It's a disaster because they never looked to be in the race actually, right from ball one. Say that it's not impossible. 10 balls, 32 runs is not impossible, but they should have to show some courage. It's in the air. Will it be caught right at the boundary? It's been taken neatly by the fielder at square leg. Good judgment. They judged it to perfection. Never easy. I tell you what, taking catches under the lights. You don't have that natural light anyways. You've got to judge it beautifully, and he's done exceedingly well there to cover a bit of ground, kept his eyes on the ball. Good technique shown. Good catching, really. Yeah, coming back to your point about 30, what's the total to get? 47 is the target. No, now it's almost 32 runs required, I think. 32 required from remaining 9 deliveries. It's not impossible. I remember Virat Kohli did that. Virat Kohli did that against Pakistan in the game. But who is the Virat Kohli here? That's the big question. Who has that Virat Kohli? Look at the previous shot. The shot was perfect, but in the daylight, that kind of shots has been crossed the boundary line easily. Yeah, I agree. It's not a daylight now. It's under flat light, and it's not easy to clear the fence. That's what the matter. That's what brought surely to a degree, I agree. But who has that Virat Kohli aura, ability, caliber, as that mindset
simply non-existent. I don't think somebody there like him to clear hereafter, to chase it down. Nine balls left. I think 8 balls left now. Yeah, what I feel is that I think it's just a formality. Playing the ball and I think playing the man and not the ball. And look at the bowlers too. They are going with a mind game. They are bowling with a variation. They are not using the pace. They are not letting the batsman to go over the pace. They are bowling some leg cutters, slower deliveries, and confusing the batsmen. That's what needed from the bowlers to the team while they are restricting the target like 47 runs. Somehow, if they manage to pull back in the first 2 overs, then it will be easier to restrict that big total. It will build the pressure on the batsmen, So they've done it very perfectly in the first 2 overs, and they are getting easier now. Absolutely right about that. Good observation, I just got to say, honestly, that I think when you know that you've got a massive total to defend, you don't really have to do anything out of the box, really. You just have to bowl, just do the basics, and that's it. I think, work on the pace, and that's it. Hits the timber, and he's got to go back. I think that's what, as bowling unit, you got to learn about that, not just picking up the wickets. You can create that pressure by bowling slow ones, and that's what I was going back to my point about mid-60s, you bowl sometimes in mid-40s. You just change the trajectory, change the pace frequently, and that can confuse and put the batsman in a sort of delusion, actually, and that's exactly how it turned out to be in a nutshell. Look at this, it's almost done now. Well, someone like Rinku Singh should enter the ground to clear hereafter. So I would like to remember the next match for both teams, AMA Tigers and AMA Strikers. The Strikers, I think, won the toss and elected to field first. So I request Strikers to be ready soon after the match ends. Please enter to the ground. The match will be 4 overs, played for 4 overs. Do you remember? Do you ever know, Mr. Sinan, about the Bazball idea? Bazball bonnet. Bazball's all about. I think I remember back in the last Ashes series, first ball bowled by Mitchell Stark was hit for a boundary by, and this time this Ashes as well. Anyone watching, Ashes fan here, I'm sure that they're going to use the same. I think ultra aggressive, playing a brand of cricket. I ball, you hit. Yeah, you bowl, I hit. I think just go hard and hard. Go hard, harder. That's the way. I think what you do in pursuit is that you do that idea, go hard, harder. I think what it does, puts the bowler in pressure, and when you come out to chase, it becomes that much more difficult. And you got to execute that. You can't execute it 100 times, but that's the right method. England got a lot of success in international cricket by doing that. I think, and that's exactly what I felt Venkatesh and the duo did here. Batted first, put them under pressure, and you see now the day. But I think 56 is not a big target. It's all about your mental stability. If you are mentally okay, then you can go after 47. You have to play some gap shots. You have to utilize the deliveries for singles or doubles and build up the pressure on the bowler. Then the bowler will easily give you some halwa balls, to hit it out of the park. Yeah, I'm a strong believer of batting first, actually. I don't like chasing because I don't think, Why you don't? I don't think because Virat Kohli chased 28 from 9, you liked it. Why you don't like now? Yeah, that's because it's very rare. You don't have a lot of Virat Kohlis in international cricket as well. You don't find a lot of course it's a rare. Of course it's a rare one. Yeah. We didn't witness anything like that after that. I think it's 2 years, right? 1.5 years for that unique innings. And against Pakistan, if I remember well. Against Pakistan, yeah. Yeah, that was an iconic chase, I remember still. But why can't you play that game here? No, I think it's the talent and skills, and that's the difference.
The talent, the skills, the mindset. There's a lot of talented players here, but they are not in the game. So far as I observed, they're not in the game. But you know what, Sinan, I gotta be very honest about. You know, they're not professional cricketers, first of all. Number one, let's not forget that bit. Secondarily, I'd say, you know, it's not just about batting skill, I'd say. It's more of a mental skill. Virat Kohli has a lot of mental skills that not a lot of batters have, even in international cricket. And that makes him absolutely unique as a batter. And that's what I believe. छोड़ दीजिए, वो मैच तो खत्म हो चुके हैं, अगले मैच के लिए मैदान पर उतर चुके हैं. अब और एक इंटरैक्ट है. इस वक्त पिछले सारे मैच 5 ओवर का था, तो ये मुकाबला और इससे आगे वाली सारे मुकाबला 4 ओवर का होगा. तो समथिंग इंटरेस्टिंग फैक्ट्स वी कैन फाइंड आउट इन द 4 overs, I think, or it will go at the worst. No, what I say is that I think, in my sort of understanding, that when you have a shorter format, the shortest the format is, the chasing becomes that much more comfortable, in my view. Because I'm not saying that you bat first, you don't win matches, but when you have the shortest format, it's, you know what, you go out there, just blast every ball. If it comes, great. If it doesn't come good, I understand that. You lose anyways, but 4 over match, I think I'd say shortest format, short window of time you've gotten, and I'd say chase, bat second, chase it. You've got to go batting heavy. Good batters, I think that's the way, in my view. My view is completely different. मैं ये कहना चाह रहा हूं, अगर शॉर्टर फॉर्मेट, आप जो बोला मेरा व्यू पे, वो पॉइंट पे, वो कंप्लीटली डिफरेंट है. अगर 10 ओवर का मैच है तो चीजियर, बिकॉज यू हैव द टाइम, आपके पास वक्त है सोचने के लिए, आपके पास वक्त है इनिंग्स बिल्ड करने के लिए. यहाँ पर आपके पास वक्त कहाँ है कि 4 overs मैच, 4 ओवर की मुकाबला है. 1 ओवर पावर प्ले मिलेगा आपको, और 3 ओवर, अगले 3 ओवर पर 5 फील्डर 30 गज की गहरे के बाहर फील्ड करते हुए देखने को मिलेगा. तो आप इस वक्त 4 ओवर भी पावर प्ले की जैसा खेलना पड़ेगा, क्योंकि 4 ही ओवर का मुकाबला है. 4 ओवर पर कम से कम 24 से 30 रन काफी होगा मेरे ख्याल पे इस वक्त अंडर द फ्लड लाइट. इट्स नॉट इजी. 24 विल बी a good score, respective score in this venue, and you can restrict it easily. 24 will be restricted easily. And I Innings of VN8s. And I'm resting. Then for the next innings, I should go and then. Bro. Name. Batsman name. Name. Batsman name. Vrsova.
पहली ओवर की पहली गेंद राइट आर्म ओवर द विकेट, स्वीप करने का कोशिश, वाइड करार दिया अंपायर ने। गेंद लेग स्टंप से काफी बाहर थे, वाइड करार दिया। एक अतिरिक्त के साथ खाता को ले हैं टाइगर्स अपनी दूसरी मुकाबला इस मैदान पर खेलते हुए। पहली मुकाबला हार चुके हैं, तो मस्ट विन गेम फॉर टाइगर्स इस वक्त। इस वक्त कनेक्ट किया गेंद को स्क्वायर लेग की दिशा पर, एक टप्पा खाने के बाद बाउंड्री लाइन पार करते हुए 6 रन के लिए द बाउंड्री, फर्स्ट बाउंड्री फॉर टाइगर्स। द इंटेंशन इज क्लियर, they have to score big from their first 4 overs because they lost their first match, and they have to come back strongly in this match, and they have to stay alive in the tournament. Batsman is going in the same intention, playing in the same intention. He tried for that one in the first ball also, but the ball was outside his range. This time he connected beautifully. इस वक्त स्क्वायर लेग का बाउंड्री पार करने पर कामयाब हुए बल्लेबाज। गेंदबाज अपनी अगली गेंद लेकर तैयार, राइट आर्म ओवर द विकेट। इस वक्त फिल्डर मच फिल्डर आउटसाइड द ऑफ स्टंप गेंद, गेंद को ड्राइव किया कवर्स की दिशा पर, फील्डर तैनात। 1 रन दौड़कर पूरे कर चुके हैं बल्लेबाज। 1 रन के साथ स्कोर बोर्ड कुल मिलाकर 6 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर, 6 ऑन द बोर्ड विदाउट लॉस। No sir. फिर से ऑप्शन से बाहर गेंद, ऑप्शन से काफी बाहर थी गेंद, वही करा दिया अंपायर ने। जगह थोड़ा ज्यादा लिए थे गेंदबाज ने गेंदबाजी के लिए, लेकिन अंपायर ने कहा आपने लिमिटेड टाइम लाइन से बाहर, वही करार। एकत्रित जुड़ते हुए स्कोरबोर्ड पर, स्कोरबोर्ड कुल मिलाकर 7 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। गेंदबाज अपनी गेंद को दोबारा हाथ पर लेते हुए गेंदबाजी को आगे बढ़ाते हुए राइट आर्म ओवर द विकेट, फुल ऑन डिलीवरी इस बार लेफ्ट हैंड ओवर कवर्स, फील्डर तैनात। 1 रन दौड़कर पूरे कर चुके हैं। दूसरे रन के लिए कोशिश जरूर किए थे बल्लेबाज, लेकिन नॉन स्ट्राइकर बल्लेबाज की तरफ से कोई उम्मीद नहीं था। 1 रन पर संतुष्ट बल्लेबाज। 1 रन के साथ स्कोरबोर्ड कुल मिलाकर 8 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। पावर प्ले जारी पर, फील्डर एक डीप मिड विकेट पर, एक कवर्स पर 30 गज के गहरे के बाहर। इस वक्त स्विच हिट की कोशिश, अंदरूनी किनारा लगा गेंद, विकेट कीपर को पार करते हुए 1 रन के लिए 1 रन पर संतुष्ट बल्लेबाज। 1 रन के साथ फिर से स्कोर बोर्ड पर बदलाव। फाइनल डिलीवरी, लास्ट बॉल टू गो, लास्ट 2 बॉल टू गो सॉरी, 9 on the board. 2 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ, 9 ಅಂಕಿಅಂಶದ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ಎಸೆತವನ್ನು ಎಸೆತಗಾರ ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ದ ವಿಕೆಟ್. ಈ ಬಾರಿ ಫುಲ್ ಟಾಸ್ ಎಸೆತ, ಮುನ್ನುಗ್ಗಿ ಒಂದು ಬಾರಿ ಎಸೆತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ, ಯಾವುದೇ ಸಂಪರ್ಕದಂಡ ಮತ್ತು ಚೆಂಡಿನ ಮಧ್ಯೆ ಇಲ್ಲ, ಚುಕ್ಕಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಚೆಂಡು. ಅಂತಿಮ ಎಸೆತ ಬಾಕಿ ಇದೆ, ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಟೈಗರ್ಸ್ ತಮ್ಮ ಪ್ರಥಮ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ಸೋಲನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಂತಹ ಟೈಗರ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಮರಳಿ ಬರಬೇಕಾದಂತ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಜೀವಂತವಾಗಿ ಉಳಿಯಬೇಕಾದ್ರೆ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಗೆಲ್ಲಲೇಬೇಕಾದಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಟೈಗರ್ಸ್ ಬರ ಅಂತಿಮ ಎಸೆತ, ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಅಂತಿಮ ಎಸೆತ, ಕವರ್ಸ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆಡತಕ್ಕಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನ, ಸ್ಟಂಪೋಡಿಯಾಗಿ ಬಲವಾದ ಮನವಿ. ಅಂಪೈರ್ ತೀರ್ಪುಗಾರರಿಂದ ಯಾವುದೇ ತೀರ್ಪು ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಪ್ರಥಮ ಓವರಿನ ಮುಕ್ತಾಯ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. 9 on the board without loss. ತೀರ್ಪುಗಾರರಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿ ಇದೆ, ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಂಡು ನಮಗೆ ಸಹಕರಿಸಬೇಕು. ಸಮಯದ ಅಭಾವ ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಶಾರ್ಟೇಜ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್, ಪ್ಲೀಸ್ ಕ್ಯಾರಿ ಆನ್, ಪ್ಲೀಸ್ ಕ್ಯಾರಿ ದ ಮ್ಯಾಚ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಆಸ್ ಸೂನ್ ಆಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ವಿ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎನಫ್ ಟೈಮ್ ಹಿಯರ್ ಟು ಡಿಸ್ಕಸ್. Yes, in between now we are inviting AMA Panthers as well as AMA Bulls.
Both team captains are invited for the tossing ceremony. ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಕಪ್ತಾನರು AMA ಪ್ಯಾಂಥರ್ಸ್ ಅದೇ ರೀತಿ AMA ಬುಲ್ಸ್. ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಕಪ್ತಾನರು ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬನ್ನಿ, ನಾಣ್ಯ ಚಿಮ್ಮಿಕೆಯನ್ನ ನೆರವೇರಿಸಿಕೊಡಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ವಿನಂತಿಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟದ ನಾಣ್ಯ ಚಿಮ್ಮಿಕೆಗೆ AMA ಪ್ಯಾಂಥರ್ಸ್ ಅದೇ ರೀತಿ AMA ಬುಲ್ಸ್ ನಡುವೆ ಕಪ್ತಾನರಿಗೆ ಕರೆಯನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದೆ. We are inviting AMA Panthers and AMA Bulls captain for tossing ceremony into the com box. अगले मैच की टॉस के लिए AM Panthers और AMA Bulls दोनों टीम के कप्तान को बुलाना चाह रहा हूं. माइक पॉइंट पर आ जाइए टॉस के लिए. इस वक्त उठा दिया गेंद को स्क्वायर लेग की दिशा पर सीधा सीधा रेखा पार करते हुए 6 रन के लिए 10 छक्का. लाजवाब शॉट पिच गेम थे, बॉडी पर थे गेम को टाइमिंग के साथ खेला. इस बार फिर से स्वीप करते हुए स्क्वायर लेग पर फील्डर तैनात, सिर्फ एक मात्र रन गिरते हुए स्कोरबोर्ड पर. स्कोरबोर्ड कुल मिलाकर 16 रन बिना किसी विकेट का नुकसान. 17 रन बिना किसी विकेट का नुकसान पर 17 on the board. The intention is clear. Go harder and harder over the bowler. That's what we are witnessing here in this ground now. Two openers, both the openers are still alive. Right arm over the wicket. Short pitch again. Outside the option. Wanted to cut it. No connection. संपर्क नहीं कर पाया. ओवर थ्रो की वजह से 1 रन दौड़कर वह पूरी कर चुके हैं बल्लेबाज. 1 रन के साथ स्कोर मिलाकर 18 रन. 22 का इशारा अंपायर की तरफ से. अतिरिक्त रन जुड़ते हुए स्कोरबोर्ड पर 18 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर. फुल टॉस इस वक्त उठाना की दिशा पर अक्रॉस द विकेट खेलना चाह रहा था, संपर्क नहीं बन पाया बल्लेबाज. इस वक्त फिर से शॉर्ट पिच गेंद पुल करना चाह रहा था, संपर्क नहीं कर पाए. थोड़े से वेरिएशन के साथ वो आप साथी का निशाना दिखा रहा है गेंदबाज ने. बेहतरीन कम बैक कह सकते हैं. लगातार 2 चुकी गेंद. बैक टू बैक डॉटेड डिलीवरीज. Going here, sir.
Played beautifully into the fine leg region. एक रन दौड़ कर पूरे कर चुके हैं, दूसरी रन के लिए दौड़ पड़े हैं. जब तक गेंद फील्डर ने गेंद को वापस किए तब तक 2 रन दौड़ कर पूरे कर चुके हैं. वाइड कॉल बाय अंपायर. 1+2 3 अतिरिक्त रन जुड़ते हुए स्कोर बोर्ड पर. 23 ऑन द बोर्ड. 23 रन बिना किसी विकेट का नुकसान पर. टाइगर्स ನೀವೆಲ್ಲ ಆಡಿಪ್ಪನ ಕರ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಅದೊಂದು ಆಡೋಕುಂಡ ಏನು ಆಡಿಸ್ ಇಪ್ಪ ಕಟ್ಟ ಸದನ್ನ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಆಗಿ ಇಟ್ರೆ ये टाइगर्स ಅದೊಂದು ಬಂದು ಓಕೆ ವಿಡಿಯೋ ಇಟ್ರೆ ಏನು ಬೇರೆ इस वक्त स्विच हिट की कोशिश, संपर्क जरूर हुए थे लेकिन टाइमिंग का कमी, प्लेसमेंट का कमी. सीधा फील्डर के हाथ पर एक टप्पा आने के बाद 1 रन जुड़ते हुए स्कोर बोर्ड पर. 24 ऑन द बोर्ड. 24 रन बिना किसी विकेट का नुकसान पर. 2 ओवर की समाप्ति के बाद टाइगर्स अपनी पहली हार की वो जो बदला लेते हुए इस वक्त 4 ओवर के इस मुकाबले पर 24 रन 2 ओवर की समाप्ति के बाद. 2 ओवर बचे हैं इस इनिंग्स पर. 4 ओवर के इस मुकाबले पर 2 ओवर और बचे हैं. दोनों आरंभिक बल्लेबाजियां बचे हैं, मतलब खतरनाक बन सकते हैं गेंदबाजियों के लिए. अगर वापसाती करना है तो थोड़ा सा हिम्मत के साथ थोड़ा सा एग्जीक्यूशन भी करना पड़ेगा गेंदबाजियों ने. राइट आर्म ओवर द विकेट, दाहिने हाथ ओवर द विकेट. इस वक्त शॉर्ट पिच डिलीवरी ऑफ स्टंप से काफी बाहर पे गेंद. अंपायर ने दोनों हाथ फैलाते हुए वाइड करा दिया. एक अतिरिक्त रन स्कोर बोर्ड पर जुड़ते हुए. वाइड टू स्टार्ट द ओवर. उस वक्त उठा दिया गेंद को लॉन्ग ऑफ की दिशा पर. हवा पर जरूर थे लेकिन फील्डर थोड़ा सा वाइड इस दिशा पर थे. एक टप्पा करने के बाद फील्डर के हाथ पर गेंद. 1 रन पर संतुष्ट बल्लेबाज. 1 रन के साथ तैयब को लाया स्ट्राइकर इन पर. 27 ऑन द बोर्ड. मस्किला इस वक्त शॉर्ट पिच गेंद को उठा दिया स्क्वायर लेग की दिशा पर. 6 रन के लिए टन छक्का. Change the line, actually try and bowl down to us at off-stump channel, and I think you can potentially bowl a Yorker, and that's much better. As you can see there, much better, but beautiful. You got to give credit to the batter here. Beautiful batting.
जैसे आप कह रहा था कि उन्होंने लेग साइड को एक्सपोज कर रहा था, तो अब वो सुन लिया शायद, गेम को ऑफ स्टंप पर कट किया पॉइंट की दिशा पर, पॉइंट और गली के बीच से 4 रन के लिए शानदार बेहतरीन शॉट कह सकते हैं, प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट के साथ आपको उन्होंने आंसर किया. No, I would say what in answer to that question is that much shorter, has that plenty of time to free the arms. That's not the right type of bowling. You can see there, this is much better, but might be wide, I don't know. But anyways, has a lot of pace, there's a lot of spice in it. And that's the way to bowl. ये जरूर पहली ओवर से ये नजर आ रहा है कि पहली गेंद से शॉर्ट गेंदें ज्यादातर देखने को मिला है इस टीम से, इस गेंदबाजियों से. वो थोड़ा सा बदलाव उसमें लाना पड़ेगा. यॉर्कर लेन डिलीवरीज फेंकना पड़ेगा, फुल लेन डिलीवरीज फेंकना पड़ेगा, क्योंकि बल्लेबाज ने ज्यादातर लेग साइड पर, ऑन साइड पर बल प्रहार करने का कोशिश कर रहा है. तो आपने गेंद अपनी बल्लेबाज की रीच से बाहर रखिए और थोड़ा सा फुलिश रखिए, तो आपको वापसी जरूर कर सकते हैं. So what I would say in answer to that question is that last match we've seen some magnificent bowling. Why is that? Because they mixed up line beautifully and used the pace. Fielder in action, puts it down just about, not making the ground, resulting in just the one. So going back to my point about what I did mention, that in the last game they tried to change the pace of the ball. You got to try and mix that line of length a different way, so you got to bowl that way. I think that's the way to go as a bowler. Don't be predictable. This is good batting. This is super strike. Absolutely majestic timing on that one, and travel the distance for a 6. You can blame the bowler for this one, because Fielder lost a catch there, dropped the catch in the previous delivery. If he would have been caught that, then the 6 have been would have been stopped. Yeah, definitely. Yeah, what I'd say is that I'll come back to that. In the air, the fielder converging. Good judgment, excellent judgment, kept his eyes on the ball and completed it. With that wicket, I think the score raises up to finally someone there to break this partnership. 55 for the loss of 1 wicket. Partnership. 1 wicket. Great innings showcased by the batter. Batter's names, please. Batter's name. Taskeen, the batter, batted superbly. And I think this is the kind of game-changing innings that can change the context of the tournament, context of the match. And that's what good batters can do. And that's where it makes a big difference as well. I remember Sanju Samson at this moment when he made a big start. He brought it a lot of time for India. And that's what Taskeen did here. They needed it badly, and he showed up some brilliant innings by Wickets, huge sixes. Yeah, I understand that. I think it's all about the quality of the batters as well. When you've got a good quality, when you are a good batter, your form comes good in some game, I think, and it works out. It works out tremendously, like the way it worked out for Taskeen. Actually took the game away. And now, what's the total? 56 in 4 overs. Can you believe that? Unbelievable batting display this is by the batting team. You got to give credit to them. The way they batted was simply superb. We're gonna make it ready for the toss. Yeah. So one.
again, missing it completely. Shot ball and off. He could have hit it anywhere he wanted, but didn't connect the ball at all, so resulting in another dot ball. So dot balls are going to mount more pressure on the batters for sure. Again, superb bowling misses. Dinesh is bowling so well, so accurate, so bouncy, sort of beautiful bowling misses so far. And the batter, I think it's been more predictable for the batter to rock back and use the depth of the crease and hit it over square. If he can do that, it will be great. He does do that, not much power behind that shot. Will just be ones and twos will not get the job done. They're very aware of that fact. I think what they need at this stage is to play big shots, try and get a couple of big sixes, and then throw that pressure back on the bowler, and that's the way to do it. And if you don't do that, you're going to be on the back foot. As a result of that, the game's slowly running away from your hands as well. This time fiercely struck. I think there was a half a chance there for the fielder to take it at short square, but it's always going to be difficult to take such kind of catches, resulting in just the one. That's the end of the first over as well. End of over one. It's been 3 for no loss. 3 overs in the bank, and what they need to get is 50 odd, and I think it's going to be difficult. And if they bowl well, if they can bowl to the plan, this is going to be a nothing chase. And if they don't get those big sixes and boundaries, and not been able to do that so far, to throw that counter punch back. Amy Panthers have won the toss. What are they going to do? They're going to bat first or bowl first? Bowl first, right. No, 3. This is the first over. Second over. Okay, cool. All good. Let's go ahead with the game. It's trying to create that room that is absolutely non-existent, and that's what good bowlers do, is just remove that or sort of subtract that room that allows the batters to access the crease and target that big sixes, and it's not been able to connect, and it gets one, and that's going to travel all the way for 6. Magnificent timing on that one. It was waiting and waiting and waiting. He got one in the arc, and he dispatched it with tremendous power on that. So they need a lot more of those actually. 1, 2 will not get the job done. They need at least around about 5 to 6 sixes to get to the proximity of the total. Slammed away, fielder in action, he takes it comfortably. I enjoyed that celebration as well for a while. And it's got to take a long walk back. So this is, like I mentioned earlier, that this is going to be a nothing chase, because you know what, you're chasing a total like this, you've got to have, in the first over, maybe get around about 15 or 16, put the bowlers under a bit of pressure, then try and do that, keep doing that until the 4th over. Always difficult, I'd say. Shot ball and off, the fielder in place. He'll pull it back. Yes, done well. Will just be 1 there. Takes the scoreboard to 10 in the progression of the 2nd over. And 1 wicket gone down. Absolutely looking one-dimensional this game's turning out to be so far.
No power hitting. It's in the air. It's going to be a simplest of catches, and he's taken it with ease. Kept his eyes on the ball. We're going to lose that, I think. Easy chance and offer. Another wicket going down. This is turning out to be a disastrous chase for them so far. End of over number 2, 10-4-2. Which means I've got 2 overs, 12 balls in the bank. How many more to get? In the air, the fielder, 47 to get. I think now making 46 to get from 11 deliveries, which means you got to literally hit every ball out of the park. Simply, I don't think is practical. Is a practical reality. In the air, the fielder is in action, takes it, no, just spilled it. Be a couple of runs actually. .45 to get now from 10 deliveries. This game's just going one way. AMA Tigers. Again, targeting that square leg boundary will just be one. Seems to be having not much power behind that shot. Not sure why they are unable to exert that power. I think you got to get the timing right, plus the fact that you got to also put some power to try and support the shot, and then that big flow comes in. Almost copycat strokes. 3 shots were played almost in the identical fashion. Just be one there. This is just a dead rubber so far now. Just turning out to be a dead rubber. AMA Tigers, ever since they won the toss, they went out to bat with a sort of aggressive mindset and then batted brilliantly, and they're showcasing their talent with the ball as well. Chance of a stump, yes, and another wicket going down. So what now it does is that now AMA Tigers, I think, will win the game. I think as far anyways, I feel that they will win the match. And if they win this match, the table will open up. Is it out or not? No. Umpire, is that out or not? Okay, no. Right. Slight correction. Fiercely struck will just be one. And this time around there was a lot of power, no timing. End of over number 3 as well. 3 done. It's score 16 for 2, which means 1 over to go. I think as many as 42-3 to get. 41 to get. 6 sixes will not do the job for them. 6 legal deliveries will win the game for AMA Tigers. It's been that kind of a match, I'd say. The way they batted, it's been a clinical performance so far. With the bat, with the ball, just dominated every segmentation of cricket. Just a dot ball there. Wonder why they got to change their strategy a little bit. They got to think about maybe having a power hitter right at the top of the innings. AMA strikers will need to think about that actually. They got to think about, you know, some batting changes in their think tank. Because that, I think the way they go about their batting, completely looking out of sorts. Batters trying to hit too hard, not timing, no timing, struggling to get bat on ball.
Just looks to be just a formality now. Helped on its way. Unbelievable. This is what happens on your worst days of cricket. You play one good shot, went straight to the fielder, and the fielder on the second attempt making absolutely no mistake. And that's what cricket, that's the beauty of cricket. When things go your way, it goes your way. It goes against you. Whatever you touch goes against you. One of the things, it's called domino effect in cricket. We call it domino effect. Something's not working, then nothing's working for you. Something's working, then everything's working suddenly. That's called domino effect. Down the leg side will just be one. I think, to tell you in a nutshell, AMA strikers have been completely outplayed in all three departments in this game by AMA Tigers. Will just be a couple of runs there. So that's what this game's all about, I think. No excitement whatsoever. So, hard length is one of the ploy that is used by AMA Tigers when they started bowling. Change that pace a little bit, and also hard length. You know, hit the deck hard, that sort of end of the innings. That's it. I think one more ball to go. Okay, let's go ahead with that. That's what the scorer says. It's over. That's it. AMA Tigers have won the match absolutely convincingly, and they'll be among some points actually in this tournament. This points journey would start now. Anyways, well played. And AMA strikers will need to think a lot about the way they gotta go about their batting. The batting looked a little bit out of sorts, especially, you know, the way they started their innings. Something they gotta look into and try and work on that bit. Maybe have, you know, they gotta promote someone who can play power strikes right at the top of the innings and then, you know, potentially change the game. And that's not been the case so far. AMA Panthers versus AMA Bulls. That's the next game. I think AMA Panthers have won the toss and they've decided to field first. Not sure. Look to be that's the case. Please get ready for the next game. Make sure to make your way to the ground.
लायंस वर्दवागी AMA चैलेंजर्स अगले मुकाबले की टॉस के लिए बुलाव देना चाह रहा हूं। AMA लायंस बनाम AMA चैलेंजर्स, इन दोनों टीम की कप्तान स्ट्राइक माइक पॉइंट पर आइए। लायंस बनाम चैलेंजर्स, both team captains please come to the mic point. Six followed by a wicket. Come back by the bowler. Pulled his length and has been able to get the rewards for it. He's got that wicket. And that's what good bowlers do. Good bowlers have a very good realization about the fact that how they got to mix up their lines and lengths. ಓಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರಿಂದ ಒಂದು ತೀರ್ಮಾನ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ವಿಳಂಬವನ್ನ ಮಾಡಿದರೆ 4 ಓವರ್ಗಳಿಗೆ ಕಡಿತಗೊಂಡಂತ ಪಂದ್ಯಾಟ ಮತ್ತು 3 ಓವರ್ಗಳಿಗೆ ಕಡಿತವಾಗತಕ್ಕಂತ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸಮಯವನ್ನು ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿ, ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಮುಕ್ತಾಯವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡಿ ಅನ್ನತಕ್ಕಂತಹ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. 4ಕ್ಕಿಂತ ಕಮ್ಮಿ ಆದರೆ ಆ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟವು ಚಂದ ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ದಯವಿಟ್ಟು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕೂಡ ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ, ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟಗಳನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮನಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಬೇಕು. ಯಾವುದೇ ವಿಳಂಬಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡಬಾರದು. पुल किया गेंद डीप मिड विकेट की दिशा पर 1 रन दौड़कर पूरे कर चुके हैं बल्लेबाजों ने। जब तक फील्डर गेंद को वापस किए तब तक 1 रन दौड़कर पूरे कर चुके हैं। 6 रन 1 विकेट की नुकसान पर नूर और जिम्मी की जोड़ी मैदान पर खड़े हैं। मनोज गेंदबाजी को आगे बढ़ाते हुए आखिरी गेंद लेकर तैयार, 6 रन कर चुके हैं, 1 विकेट हासिल कर चुके हैं अब तक। 4 ओवर के इस मुकाबले पर पावर प्ले पर 6 रन खर्च करना बड़ी बात नहीं है। इस वक्त स्लॉट पर थे गेंद, बल्लेबाज गेंद को उठाना चाह रहा था, बल्ले को घुमाया था जरूर, लेकिन संपर्क सही से कर नहीं पाए तो गेंद सीधा विकेट कीपर की दास्तानों पर सुरक्षित। इसी के साथ पहली ओवर सक्सेसफुल ओवर की समाप्त, एक सफलता के साथ मनोज ने खर्च किया सिर्फ और सिर्फ 6 रन 1 विकेट के नुकसान पर। Challengers and the Kaptana, the captain of Challengers, please report at the mic point. Challengers, AMA Challengers, your opposition, the captain is waiting for you. Challengers team captain, please report at the mic point for the toss. ಜ್ಯೂಸ್ ಎಲ್ಲ ಉಡಿ ಮಾಡು, ಜ್ಯೂಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೈಚಿ ಕಟ್ಟಿ ಅಲ್ಲ ಅದು ಪಡ್ತದೆ ಸ್ಪಾಟ್ ಮಾತ್ರ ಅದೇ ಅಪ್ಪಲೆ जी हाँ कप्तान ने लाया सतीश को गेंदबाजी पर। दूसरे ओवर लेकर आए हैं सतीश। पहली गेंद नो बॉल का इशारा अंपायर की तरफ से। फ्री हिट जारी पर क्या जिम्मी फ्री हिट की फायदा उठा सकते हैं? इस बार उठा दिया गेंद को, हवा पे जरूर था गेंद लॉन्ग ऑन की दिशा पर। 1 रन दौड़कर पूरे कर चुके हैं, सिर्फ 1 रन का इजाफा वहां पर। फ्री हिट का फायदा उठा नहीं पाए जिम्मी। 1 रन और जुड़ते हुए स्कोरबोर्ड पर 8 रन 1 विकेट के नुकसान पर। सतीश गेंदबाजी को आगे बढ़ाते हुए दूसरी ओवर लेकर आए हैं सतीश। 24 गेंद के इस मुकाबले पर कम से कम 30 रन बनाना पड़ेगा इस मैच पर अपोजिशन को फाइट देना है। तो इस वक्त फुल टॉस गेंद थे, ऑप्शन से बाहर थे, गेंद को ड्राइव करना चाह रहा था, संपर्क नहीं बन पाया गेंद और बल्ले के बीच। डॉटेड डिलीवरी
each and every dotted delivery will be counted as golden deliveries in this shortest format of the game. Satish. इस वक्त फुल टॉस उठा दिया गेंद को लॉन्ग ऑन की दिशा पर बॉलर तैनात आखिरी वक्त पर फिसल गया के हाथ से गेंद जीवदान मिल गए बल्लेबाज को 1 रन दौड़कर पूरी कर चुके हैं सिर्फ 1 रन इस शॉट पर खतरा जरूर था कैच आउट की फील्डर भी गेंद के नीचे आ चुके थे लेकिन आखिरी वक्त पर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस का कमी कह सकते हैं आत्मविश्वास का कमी कह सकते हैं गेंद फिसल गया हाथ से एक जीवदान न मिले जिम्मी को नूर को और उस जीवदान की फायदा उठाते हुए 1 रन अपने खाते पर जोड़ दिया नूर इस वक्त फिर से सिंगल स्कोरबोर्ड पर जुड़ते हुए स्कोरबोर्ड कुल मिलाकर 10 रन Challengers ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನ captain of challengers is the final call for you ತನಗಿದು ಕೊನೆಯ ಕರೆ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನರು ಎಲ್ಲಿದ್ದರೂ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬನ್ನಿ ತನಗಾಗಿ ತಮ್ಮ ಅಪೋಸಿಷನ್ ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನರಿಗೆ ಕೊನೆಯ ಕರೆಯನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ನಾಣ್ಯ ಚಿನ್ನಿಕೆಗಾಗಿ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬನ್ನಿ How is your dad playing? It's only 10% battery. Okay, you can do it 100%. How did he play? What's your opinion? Sir, he's here. Challenges. So, your favorite now is not Dhoni but your dad. Yes. Who's your favorite batsman? No, not your daddy. You have to choose one, not Virat Kohli or your father. Either your dad or your Virat Kohli. No. Oh, he's not compromising with his father. Okay, Virat Kohli is next and your father is first. Okay, all the best. Enjoy the moment. We are with you. Thank you. ಬೇರೆ ಮಿಕ್ಸರ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಮಿಕ್ಸರ್ ಈ ಚೆಂಗಡೆ ಇದ್ರದ್ದು ಬಂತದ ಮಹಾದೇವ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಹಾದೇವ ಒಂದು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದೊಂದು ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾರೆ ಅವಳೊಂದು ಹಾಕಿರಿ ಎತ್ತರ ಮಾಡೋಂಗೆ ವಿಷಯ ಕಾಲ್ಸಿಗಿತ್ತರಿ ನೀವು ಮಾದೇವ ಬಂದ್ರೀಗ ಕೇಳ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ಯಾವ ಸಿಕ್ಸಾ ಸೇವ್ वेलकम बैक 14 रन 1 विकेट के नुकसान पर गेंद को ऑन साइड पर खेलना चाह रहा था बल्लेबाज अंदरूनी किनारा लगा गेंद 1 रन का इजाफा 1 रन के साथ 15 रन 1 विकेट के नुकसान पर तीसरी ओवर की चालती पर चिल्लपांडी बौलर इस वक्त गेंद को उठा दिया लॉन्ग ऑफ स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड लॉन्ग ऑन के फील्डर दौड़कर गेंद को फील्ड किया तुरंत गेंद को वापस किए लेकिन बल्लेबाज को रोक नहीं पाए 1 रन चुराने पर 1 रन के साथ स्कोरबोर्ड को मिलाकर 16 रन 1 विकेट के नुकसान पर चिल्लपांडी अब तक 3 गेंद पर सिर्फ 4 रन खर्च करते हुए चिल्लपांडी अगली गेंद लेकर तैयार राइट आर्म ओवर द विकेट आउटसाइड द ऑफ स्टंप जस्ट इनसाइड द वाइड लाइन कह सकते हैं बल्लेबाज को चकमा देते हुए जॉट डिलीवरी there's a news from the center. AMA Lions won the toss and elected to field first. They believe that chasing will be easier in this venue under floodlights. Maybe they are planning to restrict their opposition below 20. ऑनलाइन ऑर्डर इस वक्त रनआउट की खतरा
लेकिन आखिरी वक्त पर थोड़ा सा लेजीनेस की वजह से 1 रन आउट कर पूरी कर चुके हैं बल्लेबाज। 1 रन के साथ स्कोर बिल्कुल मिलाकर 18 रन 1 विकेट के नुकसान पर तीसरी ओवर की समाप्ति के बाद 3 ಓವರ್ಗಳ ಮುಕ್ತಾಯದ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಅಂಕಿಅಂಶದ ಪಟ್ಟಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ 18 1 ವಿಕ್ಟರಿಯ ನಷ್ಟದಲ್ಲಿ। इकोनॉमिक गेंदबाजी का प्रदर्शन अब तक 3 ओवर पर सिर्फ 18 रन खर्च किए हैं पैंथर्स ने। आखिरी ओवर बचे हैं मैदान पर नूर अब तक 10 गेंदों पर सिर्फ 6 रन बनाकर एक स्ट्रगलिंग इनिंग्स नूर की तरफ से। उनके साथ जिम्मी दूसरी छोर पर स्ट्रगल करते हुए 7 गेंद सामने करके 5 रन अपने इंडिविजुअल स्कोरबोर्ड पर। अब वक्त आ चुके हैं इन दोनों बल्लेबाजियों को अपने कंधा खोलने का। पहली गेंद कट करने का कोशिश, आउटसाइड एज, सेकंड स्लिप की तरफ गई गेंद, 1 रन की इजाफा। 19 ऑन द बोर्ड। अब तक कोई खास हिटिंग अब तक देखने को नहीं मिला है इस इनिंग्स पर। क्या आखिरी 5 गेंदों पर छक्का या चौका देखने को मिलेगा? वेट करना पड़ेगा, इंतजार करके देखना पड़ेगा। जरूर आखिरी 5 गेंद बाकी रह चुके हैं। अगर अपनी इनिंग्स को बढ़ाना है, एक रिस्पेक्टफुल टोटल टारगेट अपने ओपोनेंट को सेट करना है, तो इस 5 गेंदों पर कम से कम 8 से 10 रन चुराना होगा बल्लेबाजियों ने। रनिंग बिटवीन द विकेट थोड़ा सा क्विक करना पड़ेगा। उल्टा शॉट, स्विच हिट की कोशिश इस वक्त जरूरी नहीं थी। स्विच हिट शॉर्ट पिच गेंद पे अपने बॉडी की तरफ आ रहा थी गेंद को पुल कर रहा था तो एक या 2 रन आसानी से मिल जाता, लेकिन स्विच हिट की कोशिश पर सफलता नहीं मिले। अब स्टंप आउट। Wicket number 2 is walking back to pavilion. स्टंप आउट होकर पवेलियन पर वापस लौटना पड़ा जिम्मी। उनकी जगह पर नया बल्लेबाज मैदान पर उतर चुके हैं। सेशान गेंदबाजी पर 3 गेंद अब तक फेंक चुके हैं। आखिरी पेनल्टीमेट ओवर पर इस वक्त शॉर्ट पिच गेंद को उठा दिया हवा पर, लॉन्ग ऑफ की दिशा पर फील्डर तैनात, 1 रन दौड़कर पूरे कर चुके हैं। दूसरे रन के लिए दौड़ पड़े हैं, रन आउट की खतरा। जी हां, नूर स्ट्रगलिंग इनिंग्स ऑफ नूर इज केम टू एन एंड। नूर की वो जो स्ट्रगल इनिंग्स अब समाप्त हो चुके हैं। नूर की बारी समाप्त हो चुके हैं। रनआउट की रूट पर नूर अब वापस पवेलियन लौट चुके हैं। 3.4 गेंदों की समाप्त के बाद स्कोर बोर्ड कुल मिलाकर 20 रन 3 विकेट के नुकसान पर। आखिरी 2 गेंद बचे हैं। श्रेयस इस वक्त श्रेयस अय्यर की तरह गेंद को पुल कर दिया डीप मिड विकेट की दिशा पर 6 रन के लिए। 10 छक्का इस वक्त बहुत जरूरी थे टीम के लिए। जरूरी को जानते हुए, जरूरत को जानते हुए गेंद को पुल कर दिया डीप मिड विकेट की दिशा पर, जस्ट आउटसाइड द रोप। 6 रन जुड़ते हुए स्कोरबोर्ड पर। इस वक्त कट किया गेंद को पॉइंट की दिशा पर, फील्डर तैनात नहीं, गेंद सीमा रेखा पार करते हुए 6 रन के लिए। व्हाट अ फिनिश फॉर द इनिंग्स। खूबसूरती के साथ इनिंग्स को खत्म किया श्रेयस। तरस रहे थे मैदान की बाहर अंदर जाने के लिए। जब मौका मिला आखिरी 2 गेंदों पर, आखिरी 3 गेंदों पर 12 रन इंडिविजुअली अपनी खाते पर श्रेयस ने जोड़ा और अपनी टीम की स्कोर को बढ़ाया 33 रन तक का। 31 रन तक का। 32 रन के लक्ष्य को दिए हैं अब ओपोनेंट को जीतने के लिए 24 गेंदों के सामने।
बैटर्स प्लीज इनटू द ग्राउंड। कप्तान जी अपनी बल्लेबाजियों को भेजिए। फील्डर्स आर सेट। 32 is the target. Please send the batters in as soon as possible. जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी अपनी आरंभिक बल्लेबाजियों को मैदान पर भेज दीजिए। This is a request with the captain of Panthers. We need 31 runs to win. 32. 31 is the target. 31 runs to win. 31 runs to win from 24 deliveries. 24 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ 31 ಓಟದ ವಿಜಯದ ಗುರಿ. ಅಂತಿಮ 2 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಯಸ್ ಬಾರಿಸಿದಂತಹ ಸಿಕ್ಸರ್ ಮತ್ತು ಬೌಂಡರಿಯ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಈ ಸ್ಕೋರ್ ಬೋರ್ಡ್ 30ರ ಗಡಿ ದಾಟ್ತಾ ಇದ್ರೆ 31 ಓಟದ ವಿಜಯದ ಗುರಿ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ 24 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ. ನಾನು ಹೆಂಗ ಕೊಡ್ಕೊಂತ ನೀங்க இப்ப ரெஸ்ட் மேட்ச் ಈ ಟೀಮ್ ಬರ್ತೋರ್ ಮುಂದೆ ಆ ಟೀಮ್ बैक टू द सेकेंड इनिंग्स. दूसरी इनिंग्स पर ये पैंथर्स इस वक्त 31 रन के लक्ष्य को चेस करते हुए 24 गेंदों पर दाहिने और दाहिने राइट एंड लेफ्ट कॉम्बिनेशन इस वक्त मैदान पर उतर चुके हैं. आरंभिक बल्लेबाजों के रूप पर दाहिने हाथ की बल्लेबाज स्ट्राइकर दौर पर पहली ओवर की पहली गेंद राइट आर्म राउंड विकेट. इस वक्त उठा दिया गेंद को लॉन्ग ऑन की दिशा पर फील्डर को पार करते हुए बाउंड्री लाइन की अंदर ही अंदर फील्ड किया गेंद को तुरंत वापस करने से पहले बल्लेबाज 2 रन दौड़कर पूरी कर चुके हैं. 2 रन के साथ खाता खोले हैं पैंथर्स ने. 29 रिक्वायर्ड नाउ फ्रॉम 23 डिलीवरीज. 29 रन की जरूरत अब 23 गेंदों पर. 2 रन पहली गेंद पर. दूसरी गेंद इस वक्त पुल किया गेंद को मिड विकेट की दिशा पर फील्डर तैनात. 1 रन का इजाफा. दूसरे रन के लिए दौड़ पड़े हैं. रन आउट की खतरा 9 सेकंड पर. जी हाँ पैस उठा दिया अपनी उंगली और पहले विकेट खो चुके हैं पैंथर्स ने. रन आउट की रूट पर अनगत्य रन को चुराने का कोशिश पर आरंभिक बल्लेबाज बिना कोई गेम खेले पेविलियन पर वापस रन आउट के रूप पर. एक बुल्स के लिए ಒಂದು ಬಾಕ್ಸ್ ಕಮೆಂಟ್ರಿ ಒಂದು ಎದುರುಗುಂಡ बल्लेबाज की आगमन. 9 स्ट्राइक रन पर इस वक्त गेंद को मोड़ दिया फाइन लेग की दिशा पर. शॉर्टिश फाइन लेग पर 30 गज की है गहरे के अंदर फील्ड करते हुए गेंद को रोक नहीं पाया बल्लेबाजी को. 1 रन चुराने पे 1 रन जुड़ते हुए स्कोरबोर्ड पर. स्कोरबोर्ड को मिलाकर 4 रन 1 विकेट के नुकसान पर. ओवर चलते पर चौथी गेंद लेकर तैयार. इस बार ओवर द विकेट गेंद को पुल किया मिड विकेट की दिशा पर. फील्डर तैनात. गेंदबाज दौड़कर गेंद को फील्ड किया. 1 रन फील्डर मिड विकेट के फील्डर गेंद को फील्ड किया. तब तक का बल्लेबाज 1 रन दौड़कर पूरी कर चुके हैं. 1 रन के साथ स्कोर पर बदलाव. 5 रन 1 विकेट के नुकसान पर. 31 रन के लक्ष्य को चेस करते हुए पैंथर्स अब
4 गेंदों पर 5 रन बना चुके। ಬಂದ್ರಾ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅಲಿ ಅಂತ. ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅಲಿ ಎಮ್ ಡಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅಲಿ ಎ ಎಮ್ ಡಿ ಎಮ್ ಡಿಯಾ ಎ ಎಮ್ ಎ ಸಿರಾಮಿಕ್ಸ್ ಸಿರಾಮಿಕ್ಸ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಸಿರಾಮಿಕ್ಸ್ ಆದರೆ ಎಮ್ ಡಿ ಅಲಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅಲಿ ಇನ್ವೈಟ್ ಹಾಕಿಂಗ್ ಐತಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ಅವರು ಇದು ಮುಂದೆ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ವೀಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಎಎಂಇ ಸಿರಾಮಿಕ್ಸ್ ಇದರ ಎಂಡಿ ಆಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅಲಿ ಇವರನ್ನು ನಾವು ಗುರುತಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಹಾರ್ದಿಕವಾಗಿ ಒಂದು ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಕ್ಕೆ ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅಲಿ, MD of AMA Ceramics, has been arrived at this venue to witness this tournament. AMA Ceramics presents Architects and Builders Cricket Tournament. इस वक्त गेंद को ड्राइव किया कवर्स की दिशा पर, फील्डर तैनात को रन का मौका नहीं, बल्लेबाज को रन चुराने का मौका नहीं। 5 गेंद की समाप्त, 6 रन 1 विकेट के नुकसान पर। पहले ओवर की समाप्त 6 रन 1 विकेट के नुकसान पर हुआ। बचे हुए 19 गेंदों पर 25 रन के लक्ष्य जीतने के लिए पैंथर्स इस मैच पर हुआ। गेंदबाजी पर बदलाव, नए गेंदबाज दूसरे ओवर लेकर आए हैं। नए गेंदबाज दाहिने हाथ ओवर द विकेट, इस वक्त दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए अंपायर को पार करते हुए 19 गेंदों पर 25 रन की जरूरत है। इस वक्त शॉर्ट पिच गेंद, ऑफ स्विंग से बाहर पे गेंद को कट करना चाह रहा था बल्लेबाज, संपर्क नहीं हुआ बल्ला और बीच गेंद के बीच, तो डॉटेड डिलीवरी सीधा विकेट कीपर की दास्तानों पर सुरक्षित गेंद। डॉटेड डिलीवरी के साथ अच्छी शुरुआत गेंदबाज के द्वारा। इस वक्त फिर से शॉर्ट पिच डिलीवरी, ऑफ स्विंग से काफी बाहर पे गेंद को कट किया कपर्स की दिशा पर, 1 रन चुराने पर कामयाब। हर एक डॉटेड डिलीवरी इस वक्त बल्लेबाज का ऊपर दबाव लगाने पर सफल हो रहा है। डिलीवरी के साथ दबाव बढ़ा दिया बल्लेबाज के ऊपर, तो बल्लेबाज वो दबाव से ही थैंक यू अगेन डॉटेड डिलीवरी, लगातार 2 चुकी गेंद। इस वक्त उल्टा शॉट खेलने का कोशिश, अपील जरूर पे विकेट कीपर की दरमियान, लेकिन अंपायर ने कहा नॉट आउट जी। इसके बीच और एक डॉटेड डिलीवरी, दबाव अब बढ़ रहा है बल्लेबाज के ऊपर। हर एक गेंद पर दबाव बढ़ते हुए बल्लेबाज अब बड़े शॉट का कोशिश करेगा, लेकिन संपर्क नहीं कर पाए गेंद और बल्ले का बीच, तो और एक डॉटेड डिलीवरी, लगातार डॉटेड डिलीवरीज इस ओवर पर। మచ్చా ఏతోండి ఎందరి తీపిట్టు
Second innings. Okay. ಅದೆಲ್ಲ ಚೆಲ್ದೆ ಬಾವ ಎತ್ತರ ಐತಲ್ಲ ಎತ್ತರ Twelve balls in the tank, 23 to get. I think it's going to be a great, exciting chase. Two good deliveries can really turn things around here. But you never know, anything can happen in this game. It's in the air, it's a skyer. The wicket keeper himself tracks back and takes it comfortably. Good catch. Really good catch that is. Had to keep his eyes on the ball and takes it comfortably in the end. Another wicket going down, trying to clear the leg side boundary, but he was not able to get the timing, the connection right. 11 balls to go, 10 balls to go, 22 to get. And that's the equation. 22 to get from 10 balls. 1-6 will open up the game. Struck it beautifully, but found the fielder at square. Will just be one there. Ones and twos will not hurt them. They need boundaries at this stage to try and bridge that gap between the runs needed and the balls remaining. They gotta find that. They gotta find that one big boundary, one big six here. Will they find it? Time will tell us. Nicely struck, open space. No, there is protection in the deep. Will just be one. They might pinch hard for the second. No, they can't. It's an impossible try for sure. Just be one there. Good delivery, that is good change of pace by the bowler. Excellent change of pace. Is it a no ball? No ball called by the umpire, so an extra run as well as a free kick for the batter here. Free hit in play. Can he make the most of this free hit? He's got to do that. This is the most important moment of the game, I gotta say. He does go big, he does go, backs a punch for a six, and what a strike that is! A big moment in the game. It turned out to be that big moment. He got the free kick, and he blasted it over a square leg. What a timely six that is, much needed in the context of the game. This will now open up the game. 14 to get from eight deliveries. This game is going right down to the wire. Beautiful delivery. That is very sensible bowling. This is really by the bowler. I think that's the end of the over, is it? Yeah, that's it. 6 balls to go. 14 to get. And he's got to bring that best striker back on strike. 17 on the board. 14 to get from 6 balls. Still anybody's game. I'll tell you what, one big six here can change the entire context of the game in favour of the batting side. But this is a high pressure over, I'll tell you what. High pressure over. Who holds the nerve? Time will tell us.
Umpires, please don't give these players extra bit of time. We're already running late. We're about 2 hours late at the start of the tournament. We don't want any more delay. We've got to try and make sure that we can wrap up as soon as we can. It really is getting very tougher for us to try and get the game going. 14 to get, 6 deliveries in the tank. Can he get a big 6? Can he bring that down the leg side? Will be called a wide. Anything down the leg side will be an extra run as well as an extra ball as well. The left-hander on strike. Can he get a big 6? What is he trying to do? Down the leg side once again. Is that a good ball? Okay. Some of the players, please clear the view, please. Please clear the view. Two players over there. And the lights are off. Not sure what might be the case here. Another interruption to the game. Yeah, surely that's the term I'm looking for. Bad light. Bad light will surely stop the game. We don't have the light meter for sure, but it's very obvious that players can't play in darkness. Five balls, 13 to get. Small delay here to come back. Very usual sights nowadays in international cricket as well. Lights going off and then coming back on. And that split second, a split moment can really shift the game, shift the momentum. So the batters, the bowlers, the players all get extra bit of time to rethink, recollect their thoughts. Slowly the lights are getting back. Right, first. Right-hander back on strike. He's the one who hit that massive 6-over square leg. He's got it. This time it's up in the air. It's a miscue. The fielder runs after that one. He takes no. He falls over, but enough time for the batters to cross over for that second run. Not sure whether that second run was needed. I think the batter's trusting him. The right-hander at the non-striker's end is trusting his partner to do the job. Looks like he can play. He can pack punch. No, anybody's game. Oh, that's a good delivery. That is a good delivery in the context of the game. Superb delivery. Change of pace, slow in pace actually. Not giving that pace an offer to try and use the pace. I think it's good intelligent bowling. You've got to give full marks to the bowler, to the way, especially the way he's bowled that delivery now. 3 to play with, 11 to get. 2 sixes will do it. He does go big. The fielder's over there, takes it. I think he takes a magnificent catch. Truly superb catch taken by the fielder at square leg. Had to cover a lot of distance. I'll tell you what, never going to be easy to take catches under the lights. You always have butterflies in your stomach when you get the balls coming your way. But beautiful catch taken, judged it to perfection. Excellent grab in the context of the game. I'll tell you what, now the game's slightly slipping away. 11 to get from two deliveries now, getting a little bit more complex.
Can he get a big six? വേറെ ഓപ്ഷൻ എന്തെങ്കിലും ആക്കേണ്ടി 12 to get, sorry, 11 to get from 2 deliveries, most important delivery of the game. Surely that will be it, I think, that'll be it. One ball to go, one legal delivery will win the game for AMA Panthers. One legal delivery will win the game for them. And they're very sure about, as long as there is no balls and 6. He does go big, he does get a big one. I think that second run taken really cost the game. I think he should have stayed at the non-strikers then and could have tried his best. But he got one delivery, 160. He's gotten that big 6 over mid-wicket. But well played in the end, well played. Good execution of bowling in the last over. AMA Panthers, I think. AMA Bulls have won the match in the end. And they'll be among some points here. Very important win in the context of the game, as in the context of the tournament. Well played, really, in the end. Captains, please assemble in front of the comm box. I request all the captains of all the 10 teams to come and assemble in front of the comm box, because we have an important discussion to be made here. All the captains, all the 10 teams captains, please assemble in front of the comm box. All the 10 teams captains. We have an important discussion here. Yeah. All the captains, all managers of all the 10 teams, please assemble in front of the comm box. We have an important discussion here regarding the tournament, actually, so I request everyone to come down. Please make sure to be ready in front of the comm box. തിങ്കളാഴ്ച നാലാക്ക് പിരാന്ന് മാനിട്ട് ഓടെ കൊണ്ടുണ്ട് ഞാൻ പങ്കൊലിക്കുന്നത് പിരാന്ന് മാനിട്ട് നാളെ ബസ്സിൽ വന്ന് എനിക്ക് ഗാഡിയില്ല അതെടുത്ത് പോണത് എനിക്ക് ചവിട്ടനിക്ക് ഇത് ബാരമേ മാച്ചാ നീ നാളെ എടുത്ത് പോ ഞാൻ RSS എടുത്താ ഇത് ബാരമേ മാച്ചാ ആരല്ല First ball of the match, beautiful delivery right up in the block hole. Nothing much the batter could do about that one. If you get a delivery of that style of fashion, becomes that much more difficult to execute your shots, and that's what happens when you premeditate your shots. Nicely played away, will just be one there, gets off the mark with that single. So the idea is that in the first one over, you still have to play, you got to get your basics right. Yes, you got to play some shots, and you got to do that very selectively. And you don't do that, you can fall yourself
too far behind actually in that first over. I think that's out. Hits the timber and is no. Got to wait for the umpire's decision. No. It's a dot ball there. Nande tanki tintu petrol tintu nande capacity attere Trying to pull that one, pull in front to square, but missed it completely. AMA challenges versus AMA Lions. Lions will need to come back strongly. Important game for both of the teams actually, not just for one team. Sliced away on the offside, will just be one there. There is protection over there. Shot extra will tidy it up. Gladiator, Willy. Ida. Sunshine Gladiator, The next match will be played between AMA Sunshine versus AMA Gladiators. Both the captains are needed here for the toss. Please make sure to come in immediately, no time to waste. Plus the fact that I've given you a call, don't make me call again and again. The captain of Sunshine versus the captain of the Gladiators team. Please make your way immediately to the comm box for the toss. Right into the business part of the tournament. Gladiators. Sunshine's captain. All right, please. Sorry. Yeah, all the team captains and managers, please do come here, commentary section. We do have a minute discussion over here. Thank you. Once again, please do come over here near the commentary section. Captain. Slightly aside, please. Slightly aside. Excuse everybody. Slightly aside. I can't see you very right. Cut away with some power, authority. Will just be one there. I think if you look at the totality of the games that are played, actually, if you look at the total number of games as well as the teams won, actually, they won because of the power of batting. And it's been very obvious that it's turned out to be not just a batting paradise, actually speaking, but I think good batters win you the games. And that's been the obvious scenes that we were able to find out in the total of the games. So you got to have that X factor. Who's that X factor batter? There was a lot of X factor batters, and they won the game actually for their sides. And I think it will be a battle between these X factor batters. But it does go big. Okay, boundary, right, 4. 4 to the total, takes the scoreboard to 11. 11 on the cards in the context of the second over. This time is miscued, that one. Wicketkeeper gets underneath it and he takes it comfortably. Good take, really is.
So going back to my point earlier that you've got to have these X-factor batters. Who are those X-factor batters who've made that difference? And I think this tournament in a nutshell is all about the contest between these X-factor batters. I think it's the end of the over there. I'm not sure about that. Gladiators captain, the Sunshine captain. You're done with the toss, actually, I think. Done with the toss, not done. Okay, someone's got to do that, really. Yeah, someone's got the coin, actually. And I request all the players here to clear the view for me, really. I can't see anything. Players, please clear. Please clear off. Please clear off. I can't see. Fiercely struck, powerfully struck down the ground. Will just be one there. AMA Gladiators. AMA Gladiators have won the toss and they're going to decide about their decision whether or not they're going to bat first. It's up in the air, it's a skyer, the fielder gets underneath it, takes it comfortably. Good catching technique shown by the fielder there, kept his eyes on the ball. And reverse cup. Reverse cup is a type of catching which is most renowned, actually, generally started by the Australian players, reverse cup. Ricky Ponting is one of the players, I think, is very famous for reverse cup, and also then followed British cricketers, and they follow that type of reverse cup, and then you've got the modern attritional way of catching. Could you please come near podium? VP Singh Ji and Rakesh Ji, could you please come near podium? Thank you, Mr. Ali. Thank you. There he goes. Oh, that's a good bit of delivery. That is chance of run. Directed. He must be walking. No, even with a good throw. Good thinking there by the wicket keeper. I think good intelligence shown by the fielder over there, the wicket keeper over there. He could have gone for the shy at the stumps, but he's not done that. A simple run out. Another wicket going down. Wickets are falling like a pack of cards here. Down the leg side. I think it's got some pad on the way through. Advancing down the track, whacked it straight to the fielder at long on. They might push hard for the second. No, they don't. Just be one there. Takes the scoreboard to 13 for the loss of 3 wickets in the progression of the third over. Down the leg side will be called a wide. Fiercely struck, will be straight to the fielder. Just be one there.
So one thing that's sort of missing, actually, if you look at the entirety of the tournament, is the power hitting, and that's what you see in professional cricket. The difference between professional cricket and sort of... Okay. Mr. Ali, who was one of the directors of AMS Ceramics, along with sir. So they are meeting event execution meeting sudden 3 days tough ready plan so Friday Saturday Sunday main Saturday Sunday business day. All right, thanks, buddy. Right, express pace in operation. In the air, I think it's just going to fall safe. No one's out there to pick it up. It's frequent times, I think 9 out of 10 times I've actually seen players trying to play that pull shot, and then you lose that balance and control, and in the process, you know, these kind of things you can see. Nicely played down the leg side. Will just be one there. There is protection out there. We'll just tidy it up. Just be one. One takes the scoreboard to 16 now in the progression of the last over. And this is the over where they got to take that trigger. You got to pull that trigger and potentially get as much as you can. In the air, taken comfortably. Good catch taken by the wicketkeeper. Didn't have to move much, but it was a regulation, straightforward grab. So big start or 9 o'clock 9 p.m. finish Goes big, fielder in action. I don't think he's going to drop it. Great grab, one-handed take. Very much like Dwayne Bravo of the West Indies side. Excellent grab that is. He had to run in a little bit. Lost sight, I think, of the catch. But in the end, great adjustment shown by the fielder. Good fielders generally do that. They lose sight and they quickly bounce back. And that's what skills are all about. End of the innings, I think. AMA Challengers have managed to score 17 for the loss of 5 wickets. I think 18 will be the target for the opposition side to come out and get this job done, I think. And I think it's going to be advantages. Because you know what? You got to score well under 6 runs per over. 18 the target, all right? Correct me if I'm wrong. 18? Yeah, right. 18 the target. Chasing team edula. AMA Lions will need 18 to get from 24 deliveries. Some of these players, please clear my view. I can't see anything, sir. All right. Thank you very much for the... Right, 18. I think when you're trying to defend a total like this, I think
what you got to do is that I suspect that you got to have more fielders trying to save singles, because if you leak away singles, it becomes that much more easy. ಅದೆಲ್ಲ ಚಲೋನು ಉಂಟುಂಡೆ ಎಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲ Vital source of human ಅದೇ ಇಪ್ಪ ಟಾಸ್ ಆಯೆ The Lions actually will need to really come to terms about their chase, how they gotta go from here. No pressure whatsoever, just that they gotta rotate the strike. And that's why I said, you know, as a captain, you gotta think big. You gotta try and bring in more close-in fielders, try and put pressure. There you go, that's miscued. The fielder, I think, puts it down. Can't get a clear clarity about that. But anyways, I think it's been put down. Right. So that's why you got to take these chances. You chase, you're actually trying to defend a total of this nature. You got to try and make sure frequently that you... Very strange type of shot making that is. You know, you're actually almost sort of premeditating a shot ball, and then you can try and whack it, muscle it towards that mid-wicket region. One of the shots which has been very productive for almost all batters who try to play those big shots. None of them played, I think, one of the... There's that shot. There's that top shot I'm talking about. A couple will be on the cards easily. Yeah, this is the difference between professional cricket versus professionals playing cricket, is that you got to have those kind of 360-degree dimensional cricket, which is you bring in all those shots in the book, and then, you know, full range of skills you can showcase. But one of the issues that we find out is that sixes and boundaries being hit only towards that square leg region, also to a degree shows a great lack of skills as well, to a degree. Is that a wide or a good ball? Okay, over, end of over number 1. 6 on the cards. 12 to get from 18 deliveries, that's the equation. So talking a little bit about professional cricketers versus professionals playing cricket. I'm not undermining anybody. I think, you know, there's a massive difference, and I don't think many would disagree here with me, although it's been controversial. But it's been a great tournament. It's turning out to be a fantastic tournament so far. Under the lights, I think we've got some bad light issue once again popping up in this tournament. We've had frequent interruptions. I gotta make mention of these 3 umpires. They've done an amazing job, these 3 umpires. I think their decision makes absolutely precise and accurate. The lights are back on. The play will resume now. These umpires, really, you got to thank them. Done a tremendous job.
tirelessly. Never easy, I tell you what. They've been standing for around about 50 plus overs now, more than 100 overs, I suspect. Left armour in action. That will go all the way. It looks like no. It might be no. Is it taken? Yes, it's been taken inside the ropes. Excellent grab that is. He had to keep his eyes on the ball and completed the catch with utmost ease. ಮೇಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕ್ರೀಡಾ ಪ್ರೇಮಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ತಾ ಇರೋದು ಲೈಮ್ ಜ್ಯೂಸ್ ತಯಾರಾಗಿದೆ. ಡಿಜೆ ಬಾಕ್ಸ್ ಹತ್ರ ಲೈಮ್ ಜ್ಯೂಸ್ ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ. ಫ್ರೆಶ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಬೇಕಾದವರು ಸಂದರ್ಶಿಸಬಹುದು. आठ रन में एक विकेट के नुकसान पर 10 रन की जरूरत जीतने के लिए 15 गेंदों पर गेंदबाज बाएं हाथ राउंड विकेट इस वक्त स्वीप करने का कोशिश किए थे. गति पर परिवर्तन, स्लोवर डिलीवरी, स्लॉट पर जरूर थे लेकिन बल्लेबाज पहले से ही बल्ला घुमा चुका था और गेंद थोड़ी सी देर के बाद रीच हुए तो डॉटेड डिलीवरी कनेक्ट नहीं कर पाए. 14 balls to go, 10 runs to get. क्या ये मैच पर गेंदबाजों ने वापसाती करेंगे, देखना पड़ेगा. मैच हैज बीन गेटिंग इनटू द इंटरेस्टिंग स्टेज. हवापत्ती जरूर लेकिन नो मैंस लैंड. एक रन चुराने पर कामयाब बल्लेबाजों ने. एक रन के साथ स्कोरबोर्ड पर परिवर्तन. 9 रन एक विकेट के नुकसान पर. Required 9 more runs to win from 13 deliveries. slow. अगली 13 गेंदों पर 9 रन की जरूरत था. फाइनल डिलीवरी, आखिरी गेंद. अगर इस मैच पर वापसाती करना है तो लगातार 2-3 चुकी गेंद की जरूरत है और एक विकेट की भी जरूरत है इस वक्त गेंदबाजों के लिए. इस वक्त ड्राइव किया गेंद को, लेफ्ट ड्राइव, कैच आउट की मौका लेकिन थोड़ा सा लेजीनेस लॉन्ग ऑफ के फील्डर के दरमियान 2 रन दौड़कर पूरे कर चुके हैं बल्लेबाजों ने. 2 रन के साथ स्कोर बोर्ड मिलाकर double run, couple of run added to the total moves up to 9 on the board. 7 more runs required from 12 legal deliveries. 12 गेंदों पर 7 रन की जरूरत. 11 on the board. చెరి రన్ ఆయన స్లో ఆడాడు. వెళ్ళి రన్ అంటే బేగ్ అవుట్. 12 to go. 12 to go. Clean him up. Is the comeback from the bowler, from the fielding team. Let us wait and see. 11 to go and 7 to get. This time beautifully bowled. Block hole पर गेंदबाजी किए beautifully bowled. Block hole पर गेंदबाजी किए गेंदबाज ने. डॉटेड डिलीवरी ड्राइव करना चाह रहा था लेकिन
लॉयन पर गेंद सीधा विकेट कीपर के हाथों पर सुरक्षित। 7 गेंद बाकी रह चुके हैं, 4 रन की जरूरत था इस वक्त जीतने के लिए। ये लायंस इस मुकाबले पर फुल लेंथ डिलीवरी इस वक्त, फिर से डॉटेड डिलीवरी। थैंक यू। Free of cost. ಅವರಿಗೂ ಸರಿಲ್ಲ ನಿಂಗೂ ಸರಿಲ್ಲ ರೌಂಡ್ ಬೇಡ ಫ್ರೀ ನೋಡ್ತಾರೆ ಅತ್ತಂತೆ ಎತ್ತವ ಪೂನ್ ಇರುಂಡಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಪ್ಪರ್ ಆಗ್ತದೆ इतर मिलो उनका जाके मिलो परती है देख रहे होगा हम वॉच कर आखिरी ओवर में बचे हैं इस मुकाबले पर। 6 गेंदों पर 4 रन की जरूरत। अगर फाइट बैक करने का हिम्मत दिखाए तो इस मैच पर आप साथी कर सकते हैं। डिफेंसिव स्ट्रोक 1 रन के लिए समय और संदर्भ को है इस मुकाबले पर। 6 गेंदों पर 4 रन की जरूरत। अगर फाइट बैक करने का हिम्मत दिखाए तो इस मैच पर आप साथी कर सकते हैं। डिफेंसिव स्ट्रोक 1 रन के लिए समय और संदर्भ को सोचते हुए दिमाग पर लगाते हुए 1 रन। उन्हें पता है कि अगर 1 या 2 बॉल हम डॉट किए तो प्रेशर बढ़ सकते हैं बल्लेबाज के ऊपर, तो उन्होंने सेफ गेम की तरफ मूव करते हुए पहली गेंद पर 1 रन लेकर नॉन स्ट्राइकर एंड पर अपनी इस वक्त हवा पर गेंद कैच आउट की खतरा जरूर थे, लेकिन फील्डर तैनात नहीं। 1 रन दौड़कर पूरे कर चुके हैं। अब 4 गेंद बाकी, 2 रन की जरूरत जीतने के लिए। एग्रेसिव फील्ड सेट की जरूरत था। सारे फील्डर्स को अंदर बुला चुके हैं कप्तान ने। ये थोड़ा जल्दी करना था, थोड़े से पहले ही करना था ये फील्ड सेट। अगर 10 गेंद पर 7 रन की जरूरत जब थे तब ये फील्ड सेट रखता तो इस वक्त सिनेरियो अलग होता। Right, so now, and this is what I told you already right at the start of the innings. You bring in those closing fielders, try and put pressure, and this is what happened. I mean, it's very logical, and that's what this is what happened. I mean, it's very logical, and that's what we know from cricket, that you've got more closing fielders, try and make it difficult. This is what the results you get. Now they're struggling to score. This is what the results you get. Now they're struggling to score a run, actually. That's been the issue. जी जरूर, अब विकेट पी को बैठे हैं। जी जरूर, अब विकेट पी को बैठे हैं। दबाव लगाने का कोशिश, सफलता मिली है कोशिश पर गेंदबाजियों को, लेकिन थोड़ी सी लेट ट्राई किए हैं उन्होंने। इस फील्ड सेट अगर वह पहले ही करता तो बस सिनेरियो अलग हो सकता था। 3 गेंद बाकी रह चुके हैं। जब फील्डर्स को अंदर लाए, 30 गज की गहरे के अंदर सारे फील्डर को बुलाए, तब बल्लेबाज अपने विकेट भी खोए, तो अब चांसेस है फिर वापसी करने का। इस वक्त हवा पर गेंद, कैच आउट की खतरा। जी हाँ, विकेट नंबर 2 बैक टू बैक। जैसा मैं कहा था, दबाव देना पड़ता है, बल्लेबाज के ऊपर दबाव लगना चाहिए, तब मैच इंटरेस्टिंग स्टेज पर आकर बैठते हैं। क्रिकेट पर पावर हिटिंग से ज्यादा दिमाग चलाना पड़ता है। कप्तान अगर दिमाग चलाए तो मैच कभी भी वापस हमारे हाथ पर ला सकते हैं। 2 गेंद बाकी रह चुके हैं। अगर 1 गेंद डॉट हुआ तो भी मैच रिजल्ट होगा। They let him to go, and they let them to collect a run there. The scores are level now. 1 run required from 1 ball. Final delivery left. Final runs required. What a match! Interesting match. Definitely should be appreciated.
The approach from the fielders, approach from the opponent should be appreciated. This time in the air, up and over the field at the covers region for a single, and that's a victory for AMA Lions. Won the match. Please leave the ground. AMA Lions, please leave the ground immediately. ದಯವಿಟ್ಟು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಪ್ಲೀಸ್ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಮೈದಾನವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಬನ್ನಿ. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕೆ ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡಿ. AMA ಲಯನ್ಸ್ ಅದೇ ರೀತಿ AMA ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಎರಡೂ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಮೈದಾನವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕೆ ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. Toss side alle. Toss side ah. Toss side. Dele. Toss side avade batting nindu tumera. AMA gladiators ah. Toss ah. Avade batting nindu tumera. Edra fielding. Merganda. At this moment, I'd like to thank the Fab Zone officials actually for their spectacular support to this event, and their hard works is really worth noticing to the success of this event. Their officials have been very supportive in terms of providing the technology, in terms of providing the facilitation that we need to conduct this beautiful event. I really gotta thank on behalf of the sponsor, on behalf of the organizers. Thank you very much. Moving on to the next match. AMA Gladiators बनाम Sunshine. सनशाइन इस वक्त टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का निर्णय लिया है. सनशाइन की आमंत्रण स्वीकार करते हुए ग्लैडिएटर्स अब मैदान पर आरंभिक बल्लेबाजों ने उतर चुके हैं. 4 ओवर के मुकाबले पर पहली पावर प्ले की पहली ओवर लेकर तैयार. दाहिने हाथ के गेंदबाज इस वक्त फुल लेन गेंद पे ड्राइव किया, सीधा फील्डर के हाथों पर गेंद डॉटेड डिलीवरी. रन लेने का मौका नहीं बल्लेबाज के पास. अच्छी शुरुआत अनंत. गेंदबाजी दौर पर अनंत पहली गेंद, दूसरी गेंद इस वक्त कट किया गेंद को शॉर्ट पिच गेंद पे ऑफ स्टंप से बाहर पे पॉइंट की दिशा पर गेंद सीधा सीमा रेखा पार करते हुए 6 रनों के लिए द फर्स्ट बाउंड्री फ्रॉम द बैट ऑफ अश्विन. गुड लेंथ गेंद पर पे, गुड लेंथ पर पे गेंद को आखिरी वक्त पर टाइमिंग के साथ कट किया. गली और पॉइंट के बीच से गेंद सीधा निकलते हुए 4 रन के लिए पावर प्ले का फायदा उठाते हुए बल्लेबाज अनंत अश्विन इस वक्त रफ्तार के साथ गेंदबाजी की है. रफ्तार के साथ सेम लेंथ एंड सेम लाइन बट दिस टाइम विद एक्स्ट्रा पेस. गेंद थोड़ा सा उछाल प्राप्त करते हुए सीधा विकेट कीपर के हाथों पर सुरक्षित. डॉटेड डिलीवरी आफ्टर बाउंड्री. बॉलर शोड सम करेज एंड मेड अ गुड कमबैक. Anant, once again this full toss, lofted beautifully into the long off region, covers region, long off fielder runs into it and collects back to the bowler. Between the batsmen was able to collect a couple of runs to the total. 2 team was up to 6 on the board. 6 रन बिना किसी विकेट का नुकसान पर पहली ओवर चलती पर पावर प्ले की फायदा उठाने का कोशिश बल्लेबाजियों ने लगातार करते हुए
6 रन बना चुके हैं पहली 4 गेंदों पर। 2 गेंद बाकी रह चुके हैं इस ओवर पर। In between, I would like to invite the captains of AME Warriors and AME Panthers. Sorry, Warriors and AME Strikers. Both team captains are invited to the mic point, to the commentary box for the tossing ceremony. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟದ ನಾಣ್ಯ ಚಿಮ್ಮಿಕೆಗಾಗಿ ಕರೆಯನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. AMA ವಾರಿಯರ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ AMA ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ಈ ಪಂದ್ಯದ ಕಪ್ತಾನರು ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆಯತ್ತ ಬನ್ನಿ, ನಾಣ್ಯ ಚಿಮ್ಮಿಕೆಯನ್ನ ನೆರವೇರಿಸಿಕೊಡಿ ಅನ್ನತಕ್ಕಂತಹ ವಿನಂತಿಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದೇದು ಗೊತ್ತುಂಟ ನಿಂದೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಇಲ್ಲಿ ಆದ್ರೆ ಹಿಂಗೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ ಎಂದ್ರೆ ವಿಷಯ Umpires, please continue. Please continue. ब्रेक के बाद अनंत गेंदबाजी पर गेंदबाजी को आगे बढ़ाते हुए अनंत अपने अगली गेंद लेकर तैयार अश्विन के लिए। अश्विन स्ट्राइकर दौर पर एक बाउंड्री के साथ ही साथ अपनी इंडिविजुअल स्कोर बोर्ड पर 6 रन अब तक अश्विन ने चुरा चुके हैं। इस वक्त हवा पर गेंद कैच आउट की खतरा, फील्डर कम्स ऑन द वेट। यस, पहली विकेट, अनंत की बारी समाप्त। एक बाउंड्री लगाने के बाद अश्विन की बारी समाप्त। अनंत ने जो वापसाती किए, अश्विन के विकेट हासिल करते हुए अनंत इस वक्त अपने ओवर की आखिरी गेंद पर 5वीं गेंद पर 6 रन 1 विकेट के नुकसान पर। ग्लैडिएटर्स को अच्छी शुरुआत दिलाने के बाद अश्विन तुरंत अपनी विकेट को देते हुए अश्विन वापस पेविलियन पर लौटना पड़ा और ग्लैडिएटर्स स्कोरबोर्ड पर 6 रन 1 विकेट के नुकसान पर। Warriors captain as well as the captain of strikers, please make your way to the comm box for the toss. That's up next. Warriors captain as well as the captain of strikers, please come down immediately for the toss. Warriors ಅದೇ ರೀತಿ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಕಪ್ತಾನರು ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬನ್ನಿ. द कैप्टन्स, दोनों टीम के कप्तान प्लीज माइक पॉइंट पर आ जाइए. वॉरियर्स बनाम स्ट्राइकर्स, आखिरी गेंद सामने करने के लिए नए बल्लेबाज इस वक्त चिपके गेंद को मैदान की दिशा पर सीधा फील्डर के हाथ पर गेंद, रन चुराने का मौका नहीं बल्लेबाज के पास. ओवर की समाप्त, पहली ओवर की पावर प्ले ओवर की समाप्ति के बाद स्कोरबोर्ड खुल मिलाकर 6 रन 1 विकेट के नुकसान पर. बेहतरीन गेंदबाजी का प्रदर्शन अनंत के द्वारा. एक बाउंड्री, दूसरी गेंद पर बाउंड्री लगाए थे अश्विन ने, लेकिन उसके बाद जो वापसाती किए अश्विन को वापस पेविलियन का रास्ता दिखा दिया अनंत ने और अपनी ओवर खत्म किया सिर्फ और सिर्फ 6 रन के साथ 1 विकेट हासिल करते हुए. By the way, it's kind of freezing cold here. Is it the norm here? Is it the norm or the exception? Sorry? It's freezing cold here, the temperature. Is it the norm? ಪ್ರಥಮ ಓವರ್ನ ಮುಕ್ತಾಯದ ಹಂತ ಕಾಣಿಸುತ್ತಾ ಇದೆ. 6-1 ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟದಲ್ಲಿ ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್ನ ಎಸೆಯಲು ಎಸೆಗಾರಿಕಾ ತುದಿಯಲ್ಲಿ
ಹೊಸ ಎಸೆತಗಾರನ ಆಗಮನ ಕಾಣಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹೆಸರಿಗಾಗಿ ಹುಡುಕಾಟ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಉತ್ತಮವಾದ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ, ಶಾರ್ಟ್ ಪಿಚ್ ಎಸೆತ ಕಟ್ ಮಾಡತಕ್ಕಂತ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಚುಕ್ಕಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಚೆಂಡು. ಇನ್ಸೈಡ್ ಎಜ್ ಮೂಲಕ ಚೆಂಡು ನೇರ ಗುಟ್ಟ ರಕ್ಷಕನ ಬುಗಸೆಯಲ್ಲಿ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಡಾಟೆಡ್ ಡೆಲಿವರಿ. ಹೌದು ಸರ್. ಈ ಬಾರಿ ಮತ್ತೆ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ಕಾಣಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಫಾರೂಕ್ ಎಸೆತಗಾರಿಕಾ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು ಎಸೆತಗಾರಿಕಾ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಫಾರೂಕ್ ಕಾಣಸಿಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂಕಿಅಂಶದ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 7-1 ಅನ್ನತಕ್ಕಂತಹ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದೆ AMA ಗ್ಲಾಡಿಯೇಟರ್ಸ್. ಫಾರೂಕ್ ತನ್ನ ಕೂಟದ ತೃತೀಯ ಎಸೆತವನ್ನು ಎಸೆಯಲು ಉತ್ತಮವಾದ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ. ಮತ್ತೆ ಗುಡ್ಲಂತ ಡೆಲಿವರಿ ಆಫ್ ಸಂಪಿನಿಂದ ಹೊರಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ಆ ಚೆಂಡನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ. ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಬೌಲರ್ ಮೂಲಕ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಹೊಡೆತ ಚುಕ್ಕಿಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಚೆಂಡು. ಡಾಟೆಡ್ ಡೆಲಿವರಿ. 3 ಚೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 1 ಓಟವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಫಾರೂಕ್. ಈ ಬಾರಿ ಕಟ್ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ. ಪಾಯಿಂಟ್ ಮತ್ತು ಗೆಲುವು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ಸೀಮಾರೇಖೆಯತ್ತ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 1 ಓಟವನ್ನ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸಿ ದ್ವಿತೀಯ ಓಟವನ್ನು ಕೂಡ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 2 ಅವಳಿ ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ ತಂಡಕ್ಕೆ. ತಂಡದ ಒಟ್ಟುಮೊತ್ತದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. 9-9ಕ್ಕೆ 1 ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ AMA ಗ್ಲಾಡಿಯೇಟರ್ಸ್ ಕಾಣಿಸುತ್ತಾ ಇದೆ. 9 on the board for the loss of 1 wicket. ಫಾರೂಕ್ ತನ್ನ ಕೂಟದ 5ನೇ ಎಸೆತ. ಈ ಬಾರಿ ಉತ್ತಮವಾದ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ, ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ. ನೋ ಬಾಲ್ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥ ತೀರ್ಪು ಕಾಣಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ನೋ ಬಾಲ್ ವಾಸ್ ಕಾಲ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಅಂಪೈರ್. ಫ್ರೀ ಹಿಟ್ ಜಾರಿ. ಶ್ರೀರಾಮ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀರಾಮ್ ಬಾರಿ ಫ್ರೀ ಹಿಟ್. ಚೆಂಡಿನ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆಯತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ. ನೇರವಾಗಿ ಕವರ್ಸ್ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕರ ಬೊಗಸೆಯಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು. 1 ಓಟವನ್ನು ಕಬಲಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. 1 ಓಟದ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅಂಕಿಅಂಶದ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ. 11-11ಕ್ಕೆ 1. ಗ್ಲಾಡಿಯೇಟರ್ಸ್ ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್ನ ಚಾಲ್ತಿ. ಅಂತಿಮ ಎಸೆತವನ್ನು ಎಸೆಯಲು ಫಾರೂಕ್ ಕಾಣಸಿಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಇದೆ. ಮಿಡ್ ವಿಕೆಟ್ ಕಡೆಯಿಂದ ವೈದೇಶ್ ಮಿಡ್ ವಿಕೆಟ್ ಕಡೆಗೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕನನ್ನ ಚೆಂಡು ಈ ಬಾರಿ ಗುಡ್ಲೆಂತಿನಲ್ಲಿ ಎಸೆದಂತಹ ಎಸೆತ 1 ಓಟದಲ್ಲಿ ಸೀಮಿತಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಓವರಿನ ಮುಕ್ತಾಯ, ದ್ವಿತೀಯ ಓವರಿನ ಮುಕ್ತಾಯ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಅಂಕಿಅಂಶದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. 12-12ಕ್ಕೆ 1 AMA ग्लैडिएटर्स 12 on the board for the loss of 1 wicket. 12 रन 1 विकेट के नुकसान पर इस वक्त AMA ग्लैडिएटर्स 2 ओवर के खेल खत्म हो चुके हैं. 2 overs completed, 12 on the board. ತೃತೀಯ ಓವರ್ನ ಎಸೆಯಲು ಚೆಂಡಿನ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದಾಂಡಿಗ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಸರಿಲ್ಲದ ವೀರ. ಹೆಸರಿಗಾಗಿ ಹುಡುಕಾಟವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ರು ಕೂಡ ಇದುವರೆಗೂ ಹೆಸರು ಕಂಡು ಹಿಡಿದಿಲ್ಲ. ಹೆಸರಿಲ್ಲದ ವೀರನಾಗಿ ಶ್ರೀರಾಮ್ ಜೊತೆ ಗೂಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ದಾಂಡಿಗ. ಬಲ್ಲಗೈ ದಾಂಡಿಗ. ಚುಕ್ಕಿಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಚೆಂಡು ಎಸೆಗಾರಿಕಾ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ದ್ವಿತೀಯ ಬಾರಿ ಮುನ್ನುಗ್ಗಿ ಬಾರತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ. ಮುನ್ನುಗ್ಗಿ ಬಂದು ಬಾರಿಸತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ. ಶಾರ್ಟ್ ಪಿಚ್ ಎಸೆತವನ್ನು ಎಸೆದ್ರು ಚೆಂಡು ನೇರವಾಗಿ ರಕ್ಷಕನ ಬೊಗಸೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರ್ತಾ ಇದೆ. ಡಾಟೆಡ್ ಡೆಲಿವರಿ. ಉತ್ತಮವಾದ ಎಸೆಗಾರಿಕೆ ಫ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮಿಡ್ ವಿಕೆಟ್ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕನ ಲಭ್ಯತೆ ಇದೆ. 1 ಓಟಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 1 ಓಟದ ಮುಖೇನ ಅಂಕಿಅಂಶದ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ. 13-13ಕ್ಕೆ 1. 3 ಎಸೆತಗಳ ಮುಕ್ತಾಯ. 3ನೇ ಓವರಿನ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ತನ್ನ ಕೂಟದ 4ನೇ ಎಸೆತವನ್ನು ಎಸೆಯಲು ಉತ್ತಮವಾದ ಎಸೆಗಾರಿಕೆ. ಲೆಗ್ ಸೈಡ್ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಬಾರಿಸತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ. ತೀರ್ಪುಗಾರರಿಂದ ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡು. ಬಾಯ್ಸ್ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥ ತೀರ್ಪು. ಒಂದು ಅತಿರಿಕ್ತ ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. Yes, of course. anything you can say. अगला मैच का टॉस हो गया क्या? बुलाया था, आया नहीं अभी तक.
Warriors or strikers? Indela. ವೈಟ್ ಕಾರ್ಡ್. ಚುಕ್ಕಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಚೆಂಡು. ಒಂದು ಓಟವನ್ನ ಗಳಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಗುಪ್ತರಕ್ಷಕನ ವೈಫಲ್ಯ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳಬಹುದು. ಬೈಸ್ ತೀರ್ಪು ಕಾಣಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಗೂಟರಕ್ಷಕ ಪದೇ ಪದೇ ತಪ್ಪನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅತಿರಿಕ್ತ ಓಟವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಖಂಡಿತ ದ್ವಿತೀಯ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ತಮಗೆ ದುಬಾರಿಯಾಗಲಿಕ್ಕಿದೆ ತಾವು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಿರತಕ್ಕಂಥ ಅತಿರಿಕ್ತ ಓಟಗಳು. 22 ಓವರ್ಗಳ ಮುಕ್ತಾಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಉತ್ತರೀಯ ನಷ್ಟದಲ್ಲಿ 3 ಓವರ್ಗಳ ಮುಕ್ತಾಯದ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಗ್ಲಾಡಿಯೇಟರ್ಸ್ ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ ಅಂಕಿಅಂಶದ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 22 ಒಂದು ಉತ್ತರೀಯ ನಷ್ಟದಲ್ಲಿ. ಸಿಗಾರಿಕೆ ಇಷ್ಟು ಉತ್ತಮವಂತ ಒಂದು ಓಟವನ್ನು ಗಮನಿಸಿಕೊಂಡು ದ್ವಿತೀಯ ಓಟಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ. ರನೌಟಿಗೆ ಅವಕಾಶ. ಅಪಾಯ ನಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ತುದಿಯಲ್ಲೇ ಬಲವಾದ ಮನವಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತಾ ಇದೆ. ಪುರಸ್ಕಾರ Raiders Panthers. Warriors strikers. Toss ಆಯ್ತಾ? ಇಲ್ಲ. ಬರು ಟಾಸ್ ಬರು. ಏದು ನಿಂಗಲ್ದೇ ಇದು. ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ತನ್ನ ಕಪ್ತಾನ್ರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಕರೆಯನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ವಾರಿಯರ್ಸ್ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಗ್ಲಾಡಿಯೇಟರ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್. Warriors, other strikers, Zaitan Kaptan, last call, final call. That's the final call for Warriors and strikers. Captains, please come to the mic point for the tossing ceremony. Warriors and strikers. 27 taps. Definitely.
ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ತೆಗೆಯಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. Please feel free to dance. Just 10 to 15 minutes, please gather. People who are in crowd. ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ ಮೋಳು ಓಲದಿಂದ್ರಿ ಆಯ್ತು ಬೇಗ ತಿರ್ಕೊಂಡು ಹಂಗೆ ನೋಕ್ಯವಲ್ಲ ಹಾಂ ಇಂತಲ್ಲೂಡೆ ಬಂಡಿ ವಿಷಯ ಬಾಬಾ Toss on by Warriors. Building up. Hey, Samir. Hey, Nippal, come on, Ajay. Toss on by Warriors. Warriors won the toss.
Very immediately of a time. It's definitely an instruction, please. Please. I want to see, and even I want to see every EMS staff to be in front of the stage. Mr. Zubair, Mr. Mannathan, could you please come over here, please? Thank you. So I think, looking at their batting, they've struggled actually by and large. By and large, they've struggled to put bat on ball. They've had serious mistimings with their batting. Often is the case actually when you play under the lights. The umpires, please make sure to get the game going immediately. The opening pair, please make your way to the crease. We've got lots and lots of matches to be played in this lone ground. We're already running late. We've got at least around about 10-15 games to be played. So I request all the players to make sure that they support us in terms of running the game fast. So vital for us actually to try and wrap up the game within the timeline. Sohail, Teja, could you please come over your stage? Sohail, Teja, as well as Manat, Khalid, could you please come over here? Mr. Shamsho, Mr. Sinan, Shihab, could you please come near stage? Shamsho, please. Could you please, your presence is very important near stage. Khalid, Shihab, could you please come? Samad Bhai, please do come for stage. And then Khalid, please do come for stage. And our icon team section guys, Satar, and then Nadil, and then Sriraj, could you please come forward near the stage? Thank you. So I think one of the ways how you can try and defend this small total is by having more close-in fielders to try and potentially block that single. And if you give away singles freely, it becomes that much more easy for all of these, I think for these batters actually, to try and chase it down with comfort. AMS staff, dear AMS staff, it's an instruction, it's an order, it's not a request. Could you please come near the stage? Thank you. Try and block those and It's a final call. so when you've got that closing fielders, a shot extra, shot sort of mid-off or whatever, I think you've got men around the bat and then you've got to make the batsman earn for that run rather than giving it freely. Now with this field, I think it's going to be easier for batters to rotate the strike, plus the fact that the bowler needs to be absolutely bang on target and he's got to target that stump and he's got to do that regularly and consistently if he's got to try and pick up a wicket. And you bowl wide outside the off stump, you bowl down the leg side, and that becomes easy for batters to rotate the strike. Good first delivery. And the first wicket going down as well. I just got, I'm not sure about that, what happened there. The fact that I think you've got to bring in more closing fielders will open up the game. And you're sending a very
strong signal to the opposition side that you got to earn for your runs and nothing comes easy. And this is what Australians are very good at. Australians, what they do in cricket is that they've got no closing fielders and then they bowl that sort of short stuff, pepper the batters. And that's one of the reasons why they are so successful, is because they're so good when it comes to applying pressure. Has picked up a wicket here. It's a dream start. Good delivery. This is good bowling, really good mix actually. Not expressing pace, not very much like Dale Steyn type, or not very much like Mark Wood. Mark Wood is one of the most, I think, one of the fastest bowlers the world has produced now. Mark Wood will be, I think I'll be eyeing on him for the next Ashes series. He's one man to watch out for. Beautiful bowling. This is what stump to stump. This is not good work. This is not really good work. You got to have the athleticism of Timber Bavuma. Actually, remember Timber Bavuma ran David Warner out actually in one of the run-outs. You got to bring in that style of fielding. Super quick across the turf. And you got to, when you're trying to defend a total like this, you got to do that on a consistent basis. Keep applying that pressure. And so far, look at the lines the lens actually is operated. It's been absolutely precise. This is good batting up in the air. The fielder's not been able to get to the ball. That will allow 2 runs to be taken comfortably in the end. There was a potential run out there, but I think the bowler was unsighted. I'm not fully sure what happened there. Three on the cards, 4 balls bowled out so far. 1 wicket back in the hut. Outside edge, looks like an outside edge to me actually, but no outside edge. Ambitious drive on the rise. Oh my God. Overdone 4, right? 4 for 1. After the end of that first over, really exciting over was that. And fantastic too in terms of the lines and lengths he bowled. 14 to get from 18. Well under 6 runs per over at this stage, but you never know, games can change immediately in the space of about just few deliveries. Waiver delivery off target. Off target, completely off target. They're definitely a stakeholder. Because of them, we are all here. Because of them, the match is happening successfully. And moreover, you people who are a player, because of you. Overdone, yes. Thank you so much. Everyone, look at the stage. We're a special guest. The kind of a person who is a gentleman, who is in partnership, who is internal business. Definitely you players also, who is outgoing. Kabir ball, first ball. Alright, sorry. Small correction. Beautiful delivery, that is. And that's where you got to be.
As a bowler, you've got to target that line or that length, because you know what, you're not giving anything freebies an offer. In the air, the fielder takes it comfortably. The pressure was telling on him. There was a release shot coming, and it didn't work in his favour. He's got to take a long walk back. Good catch taken by the fielder. He's a gentleman who want to be with their boss even, and then who is definitely supporting like a backbone for AMA Ceramics. Thank you for being here, Mr. Abhishek. So now our backbone, the front wheel of Beautifully carved away, almost like a sort of back foot punch. Beautifully played away this time again. This time the result is a boundary and a no ball called by the umpire as well. Not a boundary, pull back inside the ropes. More in such programs. My compliments and congratulations. Try to get. Stand and deliver. Fielder over there can't get to the ball. Time of score 4 to win. 13 on the board. 15 on the board. The upload ID. Sorry, one moment. A small correction. 3 to win.
The energy at 9:30 now, still it is as if they just woke up in the morning, fresh for runs and other things. So really wonderful. Maximum We all enjoyed this. For me, it is a new experience. Good strike to end the proceedings.
ಅದು ನೇರ ವಿಷಯ ಅದು ಆಯ್ತು ಹಂಗಲ್ಲ ಇವೆಂಟ್ ಇದಾಯ್ತು. We'd like to invite the captains of Tigers and Challengers for the next match toss into the commentary box. Challengers and Tigers, both team captains are invited here for the com box. ಮತ್ತೆ ಏಮಿಯಲ್ಲ
कट्टा मत AMS Sunshine. ಮಹೇಶ್ ಟೈಗರ್ಸ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಕಪ್ತಾನ್ ನಾಣ್ಯ ಚಿಮ್ಮಿಕೆಗಾಗಿ ವೇದಿಕೆ ಬನ್ನಿ ದಯವಿಟ್ಟು ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ಮುಕಾಬಲಾ AMA टाइगर्स बनाम AMA चैलेंजर्स. दोनों टीम की कप्तान को वाइड पॉइंट पर बुलाना चाह रहा हूं टॉस के लिए. AMA Warriors. समय एक कप्तान इधर है समय ಇದು ಟೈಗರ್ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಆಶಿಕ್ ಆಶಿಕ್ ಅವಲ್ಲ ನಗಲ ಆಶಿಕ್ ಅಲ್ಲಲ್ಲ AMA ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಆಶಿಕ್ ಇಲ್ಲ ಮಂಜುನಾಥ್ ಸ್ಕೋರ್ ಸಮೀರ ಕೆರವಿಟಲ್ಲ ಆಶಿಕ್ 19 ಮಂಜುನಾಥ್ 19 on the board for the loss of 3 wickets. ಓವರ್ಸ್ 3 ಏನು ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಇದು ಕೂಟ ಥರ್ಡ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಒಲಿಂಪೋ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಯ್ತಾ ಇದು ಬಂತ ಮ್ಯಾಚ್ ನಾ ಬರ್ತಲ್ಲ ನಿಗಲೆ ಬೋಡೊಂದು ನಾಳೆ ಮ್ಯಾಚ್ ದಸ್ಕಿ ನಿಂದ್ವಾ ನಂದೆಲ್ಲ ಓದೋಂಡಿಲ್ಲ 19 रन 3 विकेट के नुकसान पर तीसरी ओवर की चालती पर इस मुकाबला AMA सजाया हुआ एक शानदार श्रृंखला आर्किटेक्ट्स एंड बिल्डर्स क्रिकेट टूर्नामेंट सुंदर मैदान पर NCG मैदान पर ಚಿನ್ನ ಆವೇಳಿಗೋನ ಎಲ್ಲ AMA ಟೈಗರ್ಸ್ ಬಂದರು AMA ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ The next match between AMA Tigers versus AMA Challengers. I request AMA Challengers captain, please come to the tossing ceremony. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ನಾಣ್ಯ ಚಿಮ್ಮಿಕೆಗಾಗಿ AMA ರೈಡರ್ಸ್ ಹಾಗೂ AMA ಪ್ಯಾಂಥರ್ಸ್ ತಂಡದ ಮಧ್ಯೆ ನಾಣ್ಯ ಚಿಮ್ಮಿಕೆಯಾಗಿ ದಯವಿಟ್ಟು AMA ರೈಡರ್ಸ್ ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನ ನಿಮಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. स्कोरबोर्ड दाखिल मिलाकर 21 रन 3 विकेट के नुकसान पर तीसरी ओवर की समाप्ति के बाद पहली इनिंग्स की 3 ओवर समाप्त हो चुके हैं. आखिरी ओवर पेनाल्टीमेट ओवर बाकी रह चुके हैं. आखिरी ओवर पर कितना रन बन पाएगा ये देखने की बात है, क्योंकि टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज अभी भी मैदान पर खड़े हैं. इस वक्त उठा दिया गेंद को स्क्वायर लेग की दिशा पर 6 रन के लिए शानदार कनेक्शन, लाजवाब कनेक्शन बल्लेबाज की शशांक. इस वक्त स्लॉट पर थे गेंद अक्रॉस द विकेट खेले हैं. गेंद बल्ले से लगते हुए सीधा हवाई यात्रा करते हुए आखिरी ओवर पेनाल्टीमेट ओवर पर गेंदबाज को छक्के के साथ स्वागत किया बल्लेबाज ने. 5 गेंदें बाकी रह चुके हैं. कितना रन बन पाएगा ये देखने की बात है, क्योंकि प्रभाकर इस वक्त हॉट फॉर्म पर नजर आ रहे हैं. वाइड करा दिया अंपायर ने. 29 रन 3 विकेट के नुकसान पर 4 गेंद बाकी रह चुके हैं. प्रभाकर और शशांक की जोड़ी मैदान पर इस वक्त ऑप्शन से बाहर पे गेंद को लेफ्ट इन एंड आउट शॉट खेलना चाह रहा था. गेंद और बल्ले के बीच कोई संपर्क नहीं,
सीधा विकेट कीपर की दास्तानों पर गेंद सुरक्षित डॉटेड डिलीवरी, चूंकि गेंद वैल्यूएबल डॉटेड डिलीवरी कह सकते हैं क्योंकि पेनल्टीमेट ओवर पर पहली गेंद पर छक्का जड़ने के बाद दबाव गेंदबाज के ऊपर थे, लेकिन गेंदबाज अच्छी तरीके से मैनेज कर पाए। ऑप्शन से बाहर फिर से शॉर्ट पिच गेंद। इस वक्त रनआउट के लिए अपील जरूर थे, लेकिन अंपायर ने कहा नॉट आउट। 1 रन दौड़कर पूरे कर चुके हैं, 1 रन दौड़कर पूरे कर चुके हैं। शशांक को वापस स्ट्राइकर पर ला चुके हैं बल्लेबाज। इनफैक्ट प्रभाकर कोई कनेक्शन नहीं किया था, शशांक खुद स्ट्राइकर लेना चाह रहा था और प्रभाकर साथ दिया। जब तक शशांक पहुंचा नहीं तब तक प्रभाकर ने क्रीज छोड़ा नहीं, तो शशांक को आसानी से स्ट्राइक मिला है। आखिरी 2 गेंद बाकी रह चुके हैं, आखिरी 2 गेंदों पर कितना रन बन पाएगा ये शशांक का, क्योंकि पहली गेंद पर छक्का जड़ा था शशांक ने। उनके पास वो काबिलियत है। पांचवी गेंद, सतीश अपनी 5वीं गेंद लेकर तैयार। 30 रन 3 विकेट के नुकसान पर आखिरी 2 गेंद बचे हैं इस इनिंग्स पर। शशांक स्ट्राइकर स्टैंड पर स्विच हिट के लिए पहले अपने स्टैंड खड़े किए थे, लेकिन उसके बाद फ्लाइंग लेग की दिशा पर खेलने का कोशिश की है। आखिरकार डॉटेड डिलीवरी, संपर्क नहीं बन पाया गेंद और बल्ले के बीच, तो डॉटेड डिलीवरी। आखिरी गेंद बची है 30 रन 3 विकेट के नुकसान पर। कम से कम 2 रन बनाना पड़ेगा। एक इस वक्त टॉप एज सीधा फील्डर के हाथ पर, फाइन लेग की फील्डर की, शॉर्टिस्ट फाइन लेग फील्डर के हाथ पर 1 रन दौड़कर पूरे कर चुके हैं। दूसरे रन के लिए मौका नहीं था, मौका बनाने के चक्कर पे रन आउट प्रभाकर। और इसी के साथ इनिंग्स की समाप्त, पहली इनिंग्स की समाप्त के बाद स्कोर बोर्ड कुल मिलाकर 30 रन 3 विकेट के नुकसान पर 31 रन 3 विकेट के नुकसान पर 32 रन के लक्ष्य जीतने के लिए इस मुकाबले पर पैंथर्स के लिए 24 लीगल डिलीवरी के खिलाफ 32 रन के लक्ष्य, 8 रन प्रति ओवर रिक्वायर्ड रन रेट पर। इस बीच न्यूज फ्रॉम द सेंटर, AMA Challengers won the toss and elected to field first. The next match will be between AMA Challengers and the AMA Lions. Sorry, Tigers. Welcome back for the second innings of this prestigious tournament. AMA Ceramics presents Architects and Builders Cricket Tournament. The match between AMA Riders versus AMA Panthers. 31 AMA Panthers required 32 runs to win from 24 legal deliveries. ಲಾಸ್ಟ್ ಬಾಲ್ ಸಿಂಗಲ್ ಔಟಾ 1 ರನ್ ಕೊಡಿಲ್ವಾ 31 ವಿನ್
ಇಲ್ಲ 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 ಖಾಲಿಯಾಗಿದೆ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಖಾಲಿಯಾಗಿದೆ ಎಲ್ಲ ತಗೊಂಡೋಗಿದ್ದಾರೆ. Yes, second innings in progress. 32 is the target. First delivery, full and delivery, driven beautifully into the long run region. Second delivery. First ball has been jotted beautifully from the bowler, and second delivery was driven beautifully from the batter into the long run region for a single. This time, wide called by umpire. Next start with the total. You can't bowl extras in this match because you have 32, just 32 runs to prevent. This time into the final region, single will be taken easily from the batters. एक रन दौड़कर पूरे कर चुके हैं बल्लेबाजियों ने. एक रन के साथ स्कोर को कुल मिलाकर 3 रन. इस वक्त उठा दिया गेंद को विकेट की दिशा पर एक टप्पा लगाने के बाद बाउंड्री लाइन पार करते हुए 6 रनों के लिए. Boundary for the team, boundary into the total. Total moves up to 7 on the board now from that boundary. 4 balls completed. Power play in progress. 2 fielders are outside the 30-yard circle. 1 at continues. Second time, 5th time. This time goes for a big one. Big appeal there. Umpire is not out. And the final delivery has been left in this over. आखिरी गेंद बाकी रह चुके हैं इस ओवर पर. स्कोर बोर्ड कुल मिलाकर 7 रन बिना किसी विकेट का नुकसान पर. रिक्वायर्ड रन रेट इस इनिंग्स की शुरुआत से पहले 8 रन प्रति ओवर थे. अब 7 रन बन चुके हैं 5 गेंदों पर. अगर आखिरी गेंद पर 1 रन न चुराते हुए बल्लेबाज. 8 रन ओवर के समाप्त. पावर प्ले की ओवर के समाप्त के बाद स्कोर बोर्ड कुल मिलाकर 8 रन बिना किसी विकेट का नुकसान पर. यानी बाकी बचे हुए 18 गेंदों पर 24 रन की जरूरत है इस वक्त ये पैंथर्स के लिए. 8 रन की औसत पर प्रति ओवर. इस वक्त बल्लेबाजियों ने बहुत अच्छी शुरुआत दिलाई है अपनी टीम के लिए. जब 32 रन के लक्ष्य को चेस करते हुए आए हैं तो आरंभिक बल्लेबाजियों ने बिना विकेट खोए 8 रन पहले ओवर पर बना चुके हैं. तो एक अच्छी शुरुआत कह सकते हैं, क्योंकि अगर विकेट होते तो दबाव आता था नंबर 3 के बल्लेबाज के ऊपर. लेकिन इस वक्त दोनों आरंभिक बल्लेबाज मैदान पर कर रहे हैं. तो अगले 18 गेंदों पर सिर्फ 24 रन के लक्ष्य जीतने के लिए पड़े हैं. तो दबाव कन्वर्ट हो चुके हैं.
Dot ball. Numerous times batters have tried to play that sort of a stroke over square leg. One of the most favourable strokes and also the most productive strokes for batters. And I think statistically I'd say, 90% of the times batters have been successful. Courtesy of the bowlers who bowl down the leg side actually, it becomes that much more easy to open up the leg side field, to clear the leg side boundary. And that one shot, I think, has been massively productive and has been successful. We don't see a lot of shots being played over extra, over mid-wicket, over long on to the shot, which becomes, I think, slightly difficult. And I think what I would say, and I remember one of the shots that I played just recently, just clip off the pads and then it traveled the distance. And you've got to do that on a regular basis. If you can actually try and practice that hard, I think you've got to practice hard to play shots like that. And I think you also have to clear 65 meters long boundary, never easy. Oh, that is a good delivery. That is a good slow pace delivery. Disguising the lines, actually speaking. So, one thing that's also been very, very effective for the bowlers is slow pace delivery. Because you know what, you're not bowling into the arc of the batters. Fiercely struck straight to the fielder in action over there. Just be one there. I think as a batter, in my view, what you got to do is that open up the offside field and try and play that shot. Maybe you can advance down the track, throw that counter punch back to the bowler. We've got numerous, and that's the way to do it. Thanks for listening to me, the batter. Thank you very much for that shot. But Eddie, that's one way to do it, actually speaking. I mean, you run down the track and upset the rhythm, and that's the end of the over as well. 10 for no loss after the end of the second over. 12 balls to go, 22 to go. That's what the equation is at the moment. Exactly 11 runs per over is what the asking rate is to win an... Alright. जी हशीम बिल्कुल 12 गेंदों पर 22। जब मैं माइक आपके पास दिया तो 18 गेंदों पर 24 की जरूरत है, लेकिन बल्लेबाज के आत्मविश्वास के ऊपर गेंदबाज ने प्रहार किया। अशोक ने 6 गेंदों पर सिर्फ मात्र 2 रन देकर अपना टीम को जो चाहिए था वो दिला दिया उस ओवर पर। अब दबाव बल्लेबाज के ऊपर शिफ्ट हो चुके हैं। गेंदबाज के ऊपर तो गेंदबाज अपने दबाव को अपनी चतुराई की वजह से बल्लेबाज के ऊपर शिफ्ट किए हैं। उनकी अजीब सा एक्शन, उनकी लाइन एंड लेंथ एंड उनकी वो जो वेरिएशन, उसकी वजह से चकमा खाए बल्लेबाज ने। आखिरकार 6 गेंदों पर सिर्फ 2 रन खर्च कर पलट दिए मैच को, एकदम पलट दिए अपनी तरफ। अब 12 गेंदों पर 22 चाहिए, तो दबाव अब पूरी तरफ से बल्लेबाज के ऊपर शिफ्ट हो चुके हैं। अब मैच इंटरेस्टिंग होगा। अगले 12 गेंदों पर चाहिए 22, यानी आरंभिक बल्लेबाजियों ने जो सेफ गेम खेल रहा था अब तक, वो सेफ गेम अब आगे नहीं चलेगा। अब कोई एक बल्लेबाज अपना बल्ला जोर से घुमाना पड़ेगा। एक बड़े शॉट्स की जरूरत अब है उस टीम के लिए। इस वक्त स्लॉट पर प्ले गेंद फ्लिक करना चाह रहा था, कनेक्ट नहीं कर पाए गेंद को, गेंद पैर पर टकराई। डॉटेड डिलीवरी, मोस्ट इंपॉर्टेंटली डॉटेड डिलीवरी को गोल्डन डिलीवरी मानते हैं अब राइडर्स ने, क्योंकि 11 गेंदों पर अब चाहिए 22। दूसरी गेंद फुल टॉस गेंद उठा दिए हवा पर गेंद
लॉन्ग ऑफ की तरफ फील्डर तैनात, जीवदान मिले बल्लेबाज को, जीवदान मिले बल्लेबाज को, नॉट अ गुड साइन फॉर द फील्डर्स। जब आपने बल्लेबाज के ऊपर दबाव बना के रखा था तब बल्लेबाज जो मौका दिया वो मौका खो बैठे हैं। अगर उस वक्त वो कैच लपकते, कैच पकड़ते तो विकेट गिरते तो आगे का रास्ता आसान बन जाता, लेकिन अब तो थोड़ा सा आत्मविश्वास बढ़ा दिया बल्लेबाज के ऊपर। फुल टॉस गेंद को उठा दिया हवा पर, सीधा सीमा रेखा पार करते हुए 6 रन के लिए बाउंड्री, मच रिक्वायर्ड बाउंड्री फॉर पैंथर्स एट दिस मोमेंट, एट दिस स्टेज ऑफ द गेम। पिछली गेंद पर कैच को छोड़कर जीवदान दिया था बल्लेबाज को, अगले गेंद पर चौका मारकर अपने आत्मविश्वास को बढ़ा दिया बल्लेबाज ने। तो अब मैच इंटरेस्टिंग होने लगे हैं। 17 चाहिए 9 गेंदों पर, 9 balls to go and 17 required। बात 17 रन की नहीं, बात यह है कि आरंभिक दोनों बल्लेबाजियां अभी भी मैदान पर मौजूद हैं। फुल टॉस उठा दिया स्क्वायर लेग की दिशा पर, फील्डर तैनात था, गेंद सीमा रेखा पार करते हुए 4 रनों के लिए। फील्डर के मिस्टेक गलती कर बैठे हैं फील्डर, बाउंड्री लगते ही बैंड से सन्स ऑन हो चुके हैं, नाचना शुरू हो चुके हैं। नो बॉल का इशारा, यस नो बॉल करार दिया अंपायर ने। एब्सोल्यूट सिनेमा इनसाइड द ग्राउंड, absolute cinema। They required 24 from 18. At that time, Sharad came in, spent only 2 runs and brought the team back in the game. Then they required 22 from 12 deliveries, and this man have been expensive so far. 9 balls to go, 12 to get. What a match! सब सब्र की बात है, बल्लेबाजियों ने सब्र करके अपना विकेट को बचा के रखा था और इस वक्त प्रहार के एक के बाद एक प्रहार के साथ रन आउट की खतरा, नॉन स्ट्राइकर एंड पर रन आउट की खतरा, नॉट आउट। Tigers, please, move on. No ball. नो बॉल का इशारा अंपायर की तरफ से, नो बॉल का इशारा और एक अतिरिक्त रन घुरते हुए एक्स्ट्रा रन इज एडिंग ऑन। बॉलर इज मेकिंग मिस्टेक्स बैक टू बैक। लेकिन यहां पर बल्लेबाजियों को तारीफ करना ही पड़ेगा। अगर आपके पास 8 रन की औसत पर रिक्वायर्ड रन रेट है इनिंग्स की शुरुआत में, तो अभी तक जो बल्लेबाजी किए हैं उन्होंने सिर्फ बड़े शॉट्स की कोशिश करते हैं, लेकिन यहां पर नो बॉल, फिर से नो बॉल, लगातार तीसरी नो बॉल। 1 plus 2, 3 runs added to the total। 3 रन अब जुड़ चुके हैं स्कोर बोर्ड पर। 8 गेंदों पर चाहिए 8 रन। जैसा मैं कह रहा था कि हर एक मैच में बल्लेबाजियों ने हरी कर रहे थे, जल्दीबाजी कर रहे थे, बड़े शॉट्स के लिए पहली गेंद से देख रहे थे, लेकिन यहां पर बल्लेबाजियों ने सब्र रखा और अपने विकेट बचा के रखा, एकदम तीसरी ओवर पर गेंद को अपनी तरफ पलटाया। कोई कह रहा था कि सब्र ऐसा करो जैसा आप रोजा रखते हो, सब्र ऐसा करो जैसा रोजा रखते हो कि मगरिब की नमाज, मगरिब की आजान जरूर होगा। इस वक्त फ्री हिट की फायदा उठाते हुए गेंद सीधा सीमा रेखा पार करते, सॉरी
Single. इसमें ड्राइव किया गेंद को, हल्का सा पुश कवर्स की दिशा पर, फील्डर तैनात, एक रन दौड़कर पूरे कर चुके हैं, दूसरी रन भी दौड़कर पूरे कर चुके हैं, 2 रन जुड़ते हुए स्कोरबोर्ड पर। नाउ द इक्वेशन इज कंप्लीटली डिफरेंट, 6 गेंद बाकी, 5 रन की जरूरत। दैट्स कॉल्ड क्रिकेट। That's called cricket. Anything can be happen in cricket. Just you have to stay there at the crease till the end. That's what the team required from the batters, from the top order batters. Yeah, I think that was a disastrous over. Absolutely disastrous. The way they went about their bowling, I don't think, it was a turning point, sort of turning point in the entirety of the game. Because you know what, bowled too many extra deliveries and gave that leverage for the batters to deal against. And now the equation is very much in favour of the batting side, given the condition, given the context of the last over. Getting very, very easy. This is very much like a runner ball situation, less than a runner ball needing. It's going to be easy and simplistic for them to chase it down. First ball, nicely guarded away. There is protection in the deep. Will just be one. They might push. No, they don't. I think it's a wide decision not to go for the second. Ones will get the job done. And I think, you know what, the fielding team, it's not over yet, actually speaking. What they got to do is that they got to try and bring in some more closing fielders and try and put pressure. Ask him to drive over the top. Take that challenge, and that's one way to keep the batter quiet and potentially get a wicket in the air, but beautifully timed stroke for 1. Around 3, LA. 3 to get from 4 now. It's getting rather easy for the batters there. Spend a lot of time over there now. They got to finish the job. They got to pull that trigger at some stage, because you know what, a runner ball, every ball, you never know. And that's where I said, you saw that ball went straight into the backward point and easily fielded, but they had enough time to pick up that single. That means they got to come closer and try and make sure that, throw that challenge back to the batter. Try and hit me over the top. And that's the brand of cricket that they got to play now. That's the brand of cricket that they got to play now. Challenge the batter, make him play over the top. I think there is that element of risk involved in playing that shot, and can easily bring your own downfall. I think it's been too easy now for the batters, really. Like just milking it away. Advancing down the track, that's a hit me ball. Has it gone all the way? I think it's been pulled back. 2 more to the total, and that's the end of the game. Very easy in the end. Right, that's the end of the game as well. So AMA Panthers have won it comfortably and convincingly in the end. Not sure about the temperature at the moment, but it's freezing cold here. Very much like Swiss. Yeah. I'm just going to ask you that question. So,
This tournament, AMA tournament, is turning out to be a wonderful success so far under the lights. We're getting into the business end of the tournament now, with as many as few matches left. The key is that, you know what, it will all come down to the points table. I don't know whether you can see the points table online. You can watch the game, I think, just for your reference actually. If you want to watch the game live, you can watch it live on King Sports YouTube. You can just simply type in King Sports Live. You can find out, you know, YouTube. Sinan, Mr. Sinan, one of the organizers, we would like to have you present here. Yeah, you can simply watch it live on YouTube, wherever you are in the world. You can cover the live action of the game, of the tournament. Everyone for making this event a fantastic success so far. Challengers, Warriors. Challengers, Warriors. So really got to admire about the strength, the physical strength and mental strength shown by the players. Already late here, but still the players are look very, very fresh, and they're very hungry to play more matches. I want to make sure that they stay in here and play the full quota of the matches organized. So, talking a little bit about the final four berth. So now, no surprise to me actually speaking, because you know you've got those impact players, high impact batters. They are the ones who are going to be in the top four berth. Without any surprise, you've got those X-Factor batters, and they are the ones who made that difference. Even in the last game, we saw that X-Factor impact. In the air, it will be taken, no. Whacks it out of the park for four, one bounce over the ropes. Super strike, that is. This is what the kind of intent that you got to have. This is what you call X-Factor batting, is that you have that potential to throw the counter punch back early in innings and then put the opposition bowling under a bit of pressure. And that's the team that stand out in the final top four. Reverse it. Switch it, very much like Joe Root style. And that's going to run away for another boundary, I think. Two back-to-back boundaries, and this will give immense amount of confidence, plus the fact that he's growing in confidence and is also accumulating runs. Putting pressure back on the bowler. Goes back this time, he finds the fielder, I suspect, yes. I suppose what they got to do now is that, I think, provided that
42 on the board. 2.5 overs bowled. I think end of the over, I suspect. 42 on the board. AMA Tigers are going from strength to strength, and the batting's been their gun power, and their batting's been absolutely titanic and impactful. Beautifully executed stroke. That might go all the way. Yes, it does go all the way for 4. Super strike, that is. Towards the long off boundary. No one out there protecting the boundary. The runs are coming thick and fast now. Boundaries are just flowing all the way through. AMA Tigers batters have been so brilliant in cashing those opportunities that come their way. And they've been so agile in terms of capitalizing those opportunities that come their way. Takes the scoreboard to 46. 46 on the board in the progression of the 4th over. 1 ball bowled out in the over. 47, sorry, correction. So not a ball bowled in the over, not a ball bowled. I think it was a no ball. Gentle pace delivery. The batsman's trying to manufacture a stroke from nowhere. This is going to be a dot ball. So, like I talked about earlier, that this shot's been very productive and has been so impressive by so many batters, the way they've gone about their business. Inside edge. There'll be 1. They might push hard for the second. Single-handed pickup, but not the best of the throws, not the powerful of returns, actually. So 2 runs taken. Good aggressive running between the wickets. 2 to the total takes the scoreboard now to 49. 1 short of 50. Just piling up runs at the moment, AMA Tigers. They didn't have a good start to the tournament, but they came back magnificently and threw their counter-punch back to the opposition, and they proved that their batting's been their strength and trump card, and they're going from strength to strength, and I believe fundamentally that they could potentially be one of the hot contenders to be in the top 4 and potentially to win this tournament. Advancing down the track, and that might run away to the boundary. Yes, it does go all the way. Super strike, that is. Came from the meat of the blade. Timed it brilliantly to fetch that result. Takes the scoreboard all the way to 53. And Taskin's Spurs individual scores actually reached to 42. 42's got 3 balls. Can he get a 50? Or first 50 of the tournament? Will be very iconic. Can he get 1? Has it gone all the way? Yes! Magnificent ball striking. Truly is impressive batting by Taskin. Not the best of the deliveries. It's sort of a hit-me ball down the leg side. All he had to do was just power it over, and he's done exactly that, and he's taken himself to 48. 2 balls to go. Can he get his first? Certainly. Right at the top. Absolutely right at the top. Might be ruled out here. That's it. That's the end of the innings as well. AMA Tigers in their first innings, batting first, score 60 in the 4 overs. That is just unbelievable batting display so far. Nothing short of brilliance really with the bat, and they've sent a very strong message to the opposition side that they are one of the hot contenders to win
and potentially become the champions of the AMA Trophy 2025. All right, to tell you more about the chase, we've got with us Mr. Sanan. I'm sure that you're gonna, because I'm very exhausted, really. Well, looks like tired. I am indeed. Non-stop. அங்கே ஃபுட் ரெண்டு வச்சாலும் ஒரு சாயாக்கு அங்கே பதிவு இடத்துல கிரேட்ல இன்னொன்று ஜடி எடுத்து धन्यवाद हाशिम जी। दसवें मुकाबले की दूसरी इनिंग्स के लिए आप सबको फिर से स्वागत करना चाह रहा हूं। 61 रन के लक्ष्य, बड़ा लक्ष्य को खड़े कर चुके हैं टाइगर्स। पहली मैच पर हार मानने के बाद वो जो दूसरी और ये वाली मैच पर जो प्रदर्शन बल्लेबाजियों ने दिखाया टाइगर्स की, वो वाकई काबिल तारीफ। नतीजा ये है कि 61 रन के लक्ष्य को खड़ी कर चुके हैं टाइगर्स इस मैच पर, इस मुकाबले पर 24 गेंदों पर। The next matches will be between Ye Bulls versus Ye Gladiators. Both team captains are required here at the mic point for the tossing ceremony. Ye Bulls as well as Gladiators. Both team captains, please report at the mic point for the toss. Ye Bulls ಅದೇ ರೀತಿ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಗ್ಲಾಡಿಯೇಟರ್ಸ್ ತನ್ನ ಕಪ್ತಾನರು ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆಯತ್ತ ಬನ್ನಿ ಸರ್, ನಾಣ್ಯ ಚಿಮ್ಮಿಕೆಯನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿಕೊಡಿ. Yes, let us begin the chase of 10th match of this prestigious tournament. पहली गेंद इस वक्त बढ़िया गेंदबाजी, स्लोवर गेंद into the slot, into the block hole. डॉट डिलीवरी के साथ शुरुआत। टाइगर्स बल्लेबाजी पर चमत्कारी दिखाए थे, लाजवाब बल्लेबाजी का प्रदर्शन किए थे टाइगर्स। इस वक्त गेंदबाजी पर भी पहली गेंद चुकी गेंद से शुरुआत किए हैं इनिंग्स को। फुल टॉस इस वक्त लॉन्च किया गेंद को स्क्वायर लेग की दिशा पर, एक टप्पा आने के बाद बाउंड्री लाइन पार करते हुए 6 रनों के लिए बाउंड्री टू स्टार्ट द इनिंग्स। पहली गेंद जैसा स्लॉट पर ब्लॉक होल पर फेंकने का कोशिश किए थे गेंदबाज, लेकिन इस वक्त थोड़ा सा हाथ से फिसल गया गेंद। लो फुल टॉस पर कन्वर्ट हुए और बल्लेबाज ने अक्रॉस द विकेट गेंद को स्क्वायर लेग की दिशा पर खेल दिया। गेंद हवा में जरूर थे लेकिन फील्डर तैनात नहीं थे। एक टप्पा खाने के बाद गेंद बाउंड्री लाइन पार कर चुके हैं, तो बाउंड्री के साथ खाता खोले हैं चैलेंजेस के लिए। इस वक्त फिर से स्लोवर डिलीवरी, लेग संपर्क पे गेंद को पुल करना चाह रहा था लेकिन कनेक्ट संपर्क नहीं कर पाया गेंद और बल्ले के बीच गेंद विकेट कीपर की दास्तानों पर सुरक्षित। चुकी गेंद फर्स्ट डिलीवरी डॉटेड डिलीवरी, सेकंड डिलीवरी बाउंड्री, थर्ड वन अगेन डॉटेड डिलीवरी। दिस विल नॉट हेल्प देम। 61 रन के लक्ष्य को चेस करते हुए हर एक गेंद पर स्कोर करना
फिर से बेहतरीन गेंदबाजी का प्रदर्शन टाइगर्स के द्वारा। स्लोवर डिलीवरी, बिल्कुल 60 रन 60 किलोमीटर पर हावर की रफ्तार पर गेंदबाजी का प्रदर्शन, वो भी पावर प्ले के अंदर। गुड टेक्निक का कह सकते हैं, अच्छी टेक्निक कह सकते हैं गेंदबाजी की तरह। इस वक्त फिर से गेंद को लेग साइड पर, ऑन साइड पर खेलना चाह रहा था बल्लेबाज, लेकिन संपर्क बिल्कुल नहीं हो पा रहे बल्ला और गेंद के बीच। तो डॉटेड डिलीवरी, आखिरी गेंद बाकी रह चुके हैं इस ओवर पर, पहली ओवर पर। आखिरी गेंद, पावर प्ले की आखिरी गेंद। इस वक्त कनेक्ट जरूर किया है, लेकिन फील्डर तैनात मिड विकेट पर 1 रन दौड़कर पूरी कर चुके हैं। सिर्फ 1 रन पर संतुष्ट बल्लेबाज। इसी के साथ ओवर की समाप्त, पहली ओवर की समाप्त के बाद स्कोर बोर्ड को मिलाकर 5 रन बिना किसी विकेट का नुकसान पर। 18 गेंद बाकी रह चुके हैं, 56 रन की जरूरत। इस वक्त लॉन्च किया गेंद को स्क्वायर लेग की दिशा पर 6 रनों के लिए। लाजवाब कनेक्शन बल्लेबाज के द्वारा डीप स्क्वायर लेग की दिशा पर गेंद को पुल किए थे और गेंद हवाई यात्रा करते हुए सीधा भूमंडल पर 6 रनों के लिए। 6 रन जुड़ते हुए स्कोरबोर्ड पर। स्कोरबोर्ड कुल मिलाकर 11 रन। ऐसी 4-5 शॉट्स की जरूरत है, सिर्फ 4-5 शॉट्स आए तो मैच पलट सकते हैं। गेंदबाजी पर अब्बास मस्तान, इस वक्त बढ़िया गेंदबाजी, फुल लेंथ गेंद थी, इनसाइड एज लगी गेंद, स्पाइन लेग की दिशा पर चल पड़े। 1 रन दौड़ कर पूरे कर चुके हैं, दूसरे रन के लिए दौड़ पड़े हैं और दूसरी रन भी आसानी से, जब तक फील्डर ने गेंद को वापस किया तब तक 2 रन आसानी से दौड़कर पूरे कर चुके हैं बल्लेबाज। 2 रन स्कोरबोर्ड पर जुड़ते हुए स्कोरबोर्ड कुल मिलाकर 13 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। 16 गेंद बाकी रह चुके हैं, 48 रन की जरूरत इस वक्त इस मुकाबले पर जीत हासिल करने के लिए चैलेंजर्स को। अयूब अपनी गेंदबाजी को आगे बढ़ाते हुए, अयूब को स्वागत किया था तैयब की गेंद वाइड करार अंपायर की तरफ से। अतिरिक्त रन जुड़ते हुए स्कोरबोर्ड पर। स्कोरबोर्ड कुल मिलाकर 14 ऑन द बोर्ड। 16 गेंद बाकी रह चुके हैं, 47 मोर रन रिक्वायर्ड। अब एक वेस्ट इंडीज 47 रन इस वक्त पुल करने की कोशिश पर 1 रन दौड़कर पूरे कर चुके हैं डीप मिड विकेट के फील्डर। जब तक फिर गेंद को वापस किए तब तक 2 रन दौड़कर पूरे कर चुके हैं। खतरा जरूर थे रन आउट का, लेकिन वाइड थ्रो की वजह से बल्लेबाज अपने स्थान पर सुरक्षित पहुंच पाए। इस वक्त वाइड करार अंपायर की तरफ से, वाइड करार दिए अंपायर ने। अतिरिक्त रन छुटते हुए स्कोरबोर्ड पर 17 ऑन द बोर्ड फॉर द विदाउट लॉस। 3 गेंद इस ओवर पर बाकी रह चुके हैं। अब तक महंगा साबित हो चुके हैं गेंदबाज। तैयब के अगले गेंद सामना करने के लिए तैयार। हेलो 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 माइक चेक, हेलो माइक चेक, हेलो 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 माइक चेक। इस श्रृंखला को अपने YouTube चैनल पर अपने कैमरा के दरमियान कैप्चर करते हुए YouTube चैनल पर विश्व को दिखाने का वो जो कर्तव्य निभा रहे हैं किंग स्पोर्ट्स की स्टाफ ने, इस मैदान से विश्व के हर एक कोने पर बैठकर देखने का
मौका दिला रहे हैं किंग स्पोर्ट्स के इस लड़कों ने, तो उन लड़कों के लिए एक धन्यवाद कहना चाह रहा हूं इस वक्त। ये एम सिरामिक की तरफ से नो बॉल करार दिया अंपायर ने। 31 रन जुड़ते हुए स्कोरबोर्ड पर, स्कोरबोर्ड कुल मिलाकर 18 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। 2 गेंद अभी भी बाकी रह चुके हैं। 43 रन की जरूरत इस वक्त जीतने के लिए। हेलो 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 14 बॉल टू गो। ಅಲ್ಲಿ 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 ಅಂಜದು ಇಂಜ ಔಟರ್ ಮಿಕ್ಸರ್ ಉಂಡು ಅಂತ ಮಿಕ್ಸರ್ ಅಲ್ಲ क्लीन him up. विकेट खो बैठे हैं इस वक्त चैलेंजर्स। हेलो चैलेंजर्स ने विकेट खो बैठे हैं। क्लीन बाउल्ड। हेलो नए बल्लेबाज के आगमन हो चुके हैं। 10 गेंद बाकी रह चुके हैं। 43 रन की जरूरत इस वक्त जीतने के लिए। रिंकू सिंह वाले इनिंग्स की जरूरत इस वक्त मैदान पर चैलेंजर्स के लिए। क्लीन बोल्ड। ಅಲ್ಲದವನು ಕೊರಡೆಗೆ ವೀರ ಅದರಿಂದ 9 balls to go, 43 runs to get at this moment for challengers to win this match. ಅವನು ಕೆಟ್ಟಿಟ್ಟೆ ನಂಗೆ ಎಲ್ಲೋದ್ರು ಪೋ इस वक्त गेंद को ड्राइव किया लॉन्ग ऑन की दिशा पर। 1 रन के इजाफा, 1 रन के साथ स्कोरबोर्ड पर बदलाव। 18 रन 2 विकेट की 19 रन 2 विकेट के नुकसान पर। 8 गेंदों पर 42, 42 रन की जरूरत इस वक्त जीतने के लिए।
Lost and found announcement. We found a car key here. You know, the owner of the car needs to collect it from the comm box by giving us the make and model details. The director of sunshine ಅಲ್ಲ sunshine ವೈರ್ ನಂಬರ್ ಇಡ್ತೋಳಿ ಮೇಲೆ ಡ್ಯೂಟಿ അവിടെ തന്നില്ലല്ലോ ഓ നിരക്ക നിരക്ക മനസ്സ പോവದ್ರೊಂದು ಅದೇ ಕಂಪನಿ ಅದೆಲ್ಲ ರಾಯ್ತಲ್ಲ ನಮ್ಮ മൂന്നോറാ ചൊന്നാറാ മൂന്നോറ് ചൊന്നത്തില്ല ഏത് ഇപ്പൊ ഏതല്ല ಟೈಗರ್ಸ್ ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಬುಲ್ಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇಪ್ಪ ಸೋತ ಟೀಮ್ ಉಂಟಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪ ಕಲ್ಚಿ ಸೋತುತ್ತಲ್ಲಿ ಆ ಟೀಮ್ ಏನು ಕಲಿಪಾರಂತಿಲ್ಲ ಅದು ಭಾರತ ಬಿಲಿ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಅಲ್ರ ஒரு ಮ್ಯಾಚ್ ಸೇವ್ ಆಗ್ತದೆ ನಾನು ವಾಪಸ್ ಇಂದ್ರ ಅವನು ಉಕ್ಕುಡ್ತ ಟಾಪ್ ಪ್ಲೇಯರ್ ಉಕ್ಕುಡತೆ ಹಾ ನೀವು ಆಡಂಡೆ ಉಕ್ಕುಡ ವಿಟ್ಲ ಉಕ್ಕುಡ ಕಲ್ಲ ಉಡರಾಯಲ್ಲಿ చెత్త కల్ల కల్ల ఇంద్ర కల్ల చెత్త కల్ల ఉడరాయ நீங்க முண்டே பேர் சொல்றனக்கா அய்யூப் அய்யூப் Right. Enemy Gladiators batting first. Excellent first off delivery. Bang on target. It's almost like now we're getting into a point where it's almost like a test of character more than the battle between the bat and ball actually. Fiercely struck straight. Oh, put him down. A catch going down. Should have been taken, really. I think misjudged it completely. Flowing drive off. Flowing off drive. Popped up in the air. Should have been taken, but that will go down as a chance. A full shot. Really full shot in execution. You can never play that sort of a shot off that delivery because that sort of pacey delivery on offer. Almost like a horizontal batted shot. This time much better. Good fielding, great fielding, chance of a run out. Sent back rightly in time just about. Excellent fielding that is really. That kind of fielding will lift the team up, the morale of the team up as well. Great bit of work by the fielder at shot. I think it's almost like a strategic position and that's gone all the way. No, it's been taken just inside the boundary. Just for a moment I thought that he might have gotten in the midst of the blade. No, he didn't. He has to perish. Yeah, that fielding that brought this actually speaking. You know what? That's what, you know, good fielding, good stoppages can really have a negative impact on the batter, detrimental impact on the batters. Score 1 on the card, 1 wicket going down, 5 balls bowled out in the first over, turning out to be a superb over. So you got to have supreme touch as a batter to try and take the opposition
into the cleaners. Second over. Overdone, you mean? Okay, right. Got it. Thank you. 1 over ball now, 1 on the card. 1 wicket going down as well. Venkatesh in strike. Venkatesh is a high impact player, no doubt about that. But again, you know, it doesn't guarantee that just because you're an impact player, you can play every single game to your potential. And if you do come good, that's great. Well and good, actually speaking. Nicely played away down the leg side. Will just be 1, not thinking about the second. Sriram on strike now. These two batters have made tremendous impact with the bat so far, and they're trying to replicate the same here. Beautiful delivery, right call by the umpire. Express pace, round about 120 clicks per hour. I think so, I'm not sure about that, but anyways, looks like 120 clicks per hour. Trying to apply that shot, you know, it's almost been very successful. So many batters have tried that. It's almost like a sort of test and try shot in the tournament. Play over square leg, over mid wicket. Not been successful that time around, so 2-3 on the cards for that single. In the progression of the second over, Venkatesh back on strike. Can he make a big impact? That's a good flowing drive. Timed it beautifully, not par behind that shot. That talks a lot about Venkatesh's quality as a batter. Such a good batter is he actually. He plays through the line. Very rarely do you really find players who can play through the line without much power and impact actually. Excellent batting display there. Advancing down the track, I think. Just for a moment I thought that it might have kissed the outside edge, but not to be the case. Just gets off strike, takes the scoreboard to 5 now with that single in the progression of the second over. I think it's the end of the over as well. Over number 2 completed. 6 on the board for the loss of 1 wicket. The key here in the context of the game, I've got to say that these two batters have got great class and ability, and they can showcase that. They've done that time and time again before, and they got to do that once again. They got to live up to their team's expectations and try and perform to the maximum. So, and that's what Venkatesh's batting idea. So right, back again after the interruption. Beautiful drive that is. Protection. So you've got to back yourself as a batter. And that's exactly what Venkatesh is doing actually. He knows that he can pack a punch. And he can take that attack to the opposition in the space of about 1, 2, 3 deliveries. And that's one of the reasons why he backs him up and stays in over there. The score still stays at 7. I think that's what the scorecard says. I've got to do some sort of checks. 7 on the board, is it? Got to change it. Oh, that is a good delivery. Asking the batter to drive through the line. Dot ball resulted. Venkatesh has got to pull the trigger at some stage. He knows that. He's waiting for that one bad delivery. Flowing dry will just be 1 there. 1s and 2s will not, I think, chance of a run out, and it's been given out. Sriram's got to take a walk back actually. Not been able to do much impact with the bat.
New batter walks out to the centre. ഇനി ഇങ്ങനത്തെ ബസ്സല്ല ബസ് കാലത്തിന് ഇപ്പൊ പോയിത്തല്ലേ അത് ബേജാറ് വേറെന്തില്ല. Got a bit of bat on that, will just be one. So not really understanding the situation here, why AMA Gladiators are on the back foot, why they're not actually trying to play that big shot. The big shot should be coming at some stage. Wangtesh is the guy who can do that, who can really open up his arms. Just got to wait and see will he go, really. He does go big, he manages to find the fielder. Just when I thought that he would pull the trigger, he does pull the trigger, but not the distance. He's been hauled out at the deep wicket. He's got to take a walk back, actually. It's not been his innings, actually. Vangtish has got to take a walk back. Disappointingly. These two batters now got together and they've got very little time left in the innings. And they've just scored 7 on the board. And that will be telling on the back of their mind. Chance of run out with a direct hit. No, has not gone for it. Anyways, resulting in a dot ball. This is turning out to be a very good over. The next match between AMA Lions versus AMA Warriors. I request both captains please come to the tossing ceremony. ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯಕೂಟದ ನಾಣ್ಯ ಚಿಮ್ಮಿಕೆಗಾಗಿ AMA Lions ಅದೇ ರೀತಿ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ AMA Warriors ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನರು ನಾಣ್ಯ ಚಿಮ್ಮಿಕೆಗಾಗಿ ವೇದಿಕೆ ಬಳಿ ಬರಬೇಕು. Nicely struck. AMA Lions ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನ ನಿಮಗಾಗಿ AMA Warriors ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನ Eight and 9 on the board. 4th over, trying to switch it. Missing the line completely. So what just got to say is that at the moment they've scored just 8 on the board. 8. After the end of the third over, they've scored just 8 and they've lost 3 wickets. So as long as if they don't get another 10-15 runs in the last over, I think it's going to be a nothing contest. Because you can't defend something like 8. The toss won by AMA Warriors. The decision will be the field. Okay. ಅದೃಷ್ಟದನಾన్ని ಚಿಮ್ಮಿಕೆಯನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿದ್ದ AMA ವಾರಿಯರ್ಸ್ ತಂಡವು ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಆಯ್ದುಕೊಂಡಿದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ ಮುಗಿದ ಕೂಡಲೇ 2 ತಂಡದ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕರು ಅದೇ ರೀತಿ AMA ಲಯನ್ಸ್ ತಂಡದ trying to play big shot but comprehensively beaten. Just got to concentrate on that line. That's the line that I'm talking about. As a bowler, you got to consistently hit the deck hard with that sort of a line. Becomes that much more difficult. It's in the air. Will it be? No. Just for a moment I thought it might just go into the throat of the fielder. No. Just on the bounce for him. Just the one there. Takes the scoreboard to 9. And they've got to find a way to score runs here. It's not working for them. In the air, over the fine. Oh, what a catch that is! Spectacular grab. One of the best catches taken in the tournament. Where does this one rank? Right at the top. One of the best catches of the tournament, I gotta say. Absolutely outstanding. One-handed grab. It's a ripper of a catch, really. Sublime catching. The match number 12 AMA Lions versus AMA Warriors.
The toss win by AMA Warriors and elected to field first. ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ನಾಣ್ಯ ಮಿತಿಯನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿದ್ದ AMA Warriors ತಂಡವು ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಆಯ್ದುಕೊಂಡಿದೆ. ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ 12ನೇ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ AMA Lions ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದೆ. AMA Warriors called by the umpire. Surely well over the baseline. Anything over the baseline I think will be called a no ball. It's almost like a beamer delivery. So 12 on the ball with that 1+1 to the total. In the air, this might be a skyer. The wicketkeeper gets underneath it and he takes it comfortably. Another wicket going down. The wickets are falling like a pack of cards here. No real momentum to the innings. To tell you a little bit about the way they've gone about their business. In the air. Sorry, that was a catch of a free hit. And this time around will just be one. No, it's been ruled out by the umpire. So right, talking a little bit about their innings. They started off okay, I'd say, but as the innings progressed, they couldn't manage to get that sort of momentum that's absolutely super vital. And that's one of the reasons why they are very much on the back foot in this game. So the body language also is very much visible that they're not in the best of their groove, I'd say. One ball to go in their innings. Can they get a big six here? Time will tell us. Doesn't look like he's going to hit a six. Advancing down the track, he does go big. But he could only manage to find the fielder on the bounce. A couple of runs to the total, I think. If they run hard, they do run hard, but they, looking for the third run. Fumble allowing that second run to be taken, but anyways, that's the end of their innings. 2 runs to the tally now. Takes the scoreboard all the way to 16 or 15 on the ball. 16 will be the target. One shot. 2 runs, right? 2 runs, yes, 2 runs. We've already made notes of it. 3, is it? Is it 3? Right, all right. 16 meaning 17 will be the total for the opposition side to come out and bat. And to tell you more about the second innings, to learn more about the chases, all of that sort of stuff, we've got with us Mr. Sinan, who's going to give you a sort of ball-by-ball analysis of the game. Thank you.
The match number 12. AMA Bulls versus ಓಪನಿಂಗ್ ಯಾರಲ್ಲ ಓಪನಿಂಗ್ ಶ್ರೇಯಸ್ ಅಯ್ಯರು ಜೈಸ್ವಾಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಮಾದಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಬಾಲ್ ಐತ್ಲಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಐತ್ಲಿ ದ್ವಿತೀಯ ಎಸೆತ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಉತ್ತಮ ಶೈಲಿಯ ಎಸೆತ. ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಶೈಲಿಯ ಆಟ 1 ಅಂಕದ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 2 ಎಸೆತದ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ 22 ಎಸೆತದ ಮುಂದೆ 16 ರನ್ನಿನ ಗುರಿ. ಎಎಂಎ ಬುಲ್ಸ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಪ್ರಥಮ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಬುಲ್ಸ್ ತಂಡವು ಸೋಲನ್ನ ಅನುಭವಿಸಿದರೂ ಕೂಡ ದ್ವಿತೀಯ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಗೆಲುವನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಂಡು 3ನೇ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಯಸ್ ಪುತ್ತೂರು ಕಂಡಂತಹ ಒಬ್ಬ ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ಆಟಗಾರ ಶ್ರೇಯಸ್ ಅವರ ದಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಗರ್ಜಿಸ್ತಾ ಇದೆ. 3 ಎಸೆತದ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 2 ಅಂಕ. 4ನೇ ಎಸೆತ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಐದನೇ ಸಾಧ್ಯದಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಶೈಲಿ ಆಟ, ವಿಕೆಟ್ಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಚುರುಕಿನ ಓಡಾಟ, ಆದರೆ 1 ಅಂಕದ ಸೇರ್ಪಡೆಯಂತಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇದ್ರ ಮೂಲಕ ಪ್ರಥಮ ಉದುರಿಯ ಪತನವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಎಎಂಎ ಬುಲ್ಸ್ ಕಡೆಯಿಂದ 4 ಎಸೆತದ ಮುಕ್ತಾಯದ ತಂಡ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 2 ಅಂಕ. ಪ್ರಥಮ 1 ಉದುರಿಯ ನಷ್ಟನಿಗೆ ಇನ್ನುಳಿದ 20 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. 19 ಎಸೆತದ ಮುಂದೆ ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. 14 ಓಟಗಳು. ಲಾಸ್ಟ್ 19 balls required, 14 runs to win this match for AMA Bulls. After completion of 5 balls, score is down into 3 on the board. The final spell. ಕೊನೆಯ ಎಸೆತ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಬೌಂಡರಿ ದಾಟ್ತಾ ಇದೆ. ಶ್ರೇಯಸ್ ಅವರ ಕೊನೆಯ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ 4 ಅಂಕದ ಗುರಿಯೊಂದಿಗೆ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 7. ಪ್ರಥಮ ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 7. ಇನ್ನುಳಿದ 18 ಎಸೆತದ ಮುಂದೆ ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. ಕೇವಲ 10. 18 balls required, only 10 runs. ಇದೀಗ ಒಂದು ದ್ವಿತೀಯ ಗೆಲುವಿನತ್ತ ಎಎಂಎ ಬುಲ್ಸ್ ತಂಡವು ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕೇವಲ 18 ಎಂಬ ಎಸೆತದ ಮುಂದೆ ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. ಕೇವಲ 10. ಲಾಸ್ಟ್ 18 more delivery to get 10 runs to win. 2ನೇ ಎಸೆತ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಪ್ರಥಮ ಎಸೆತ ಈ ಮೂಲಕ ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು, ಈ ಮೂಲಕ ಮತ್ತೆ ಬೌಂಡರಿ ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ. ಈ ಮೂಲಕ 4 ಅಂಕದ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನುಳಿದ 17 ಎಸೆತದ ಮುಂದೆ ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. ಕೇವಲ 6 ಅಂಕ. 17 more to go, 6 run to win for AMA Bulls. ದ್ವಿತೀಯ ಜಿಮ್ಮಿ ಅವರ ಆರ್ಭಟ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಮತ್ತೊಂದು ಅಂಕದ ಸೇರ್ಪಡೆಯೊಂದಿಗೆ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 12. ಕೇವಲ 5 ಅಂಕದ ಗುರಿಯ ಮುಂದೆ ಎಎಂಎ ಬುಲ್ಸ್ ತಂಡ. ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಶ್ರೇಯಸ್, the most valuable all-rounder player from the side of Puturu, taken as 4 runs. ಪಂದ್ಯಾಕೂಟವು last 1 more run required for the victory for AMA Bulls. ಆಡಿದ 3 ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದಲ್ಲಿ 2ನೇ ವಿಜಯದತ್ತ ಎಎಂಎ ಬುಲ್ಸ್ ತಂಡ. ಕೇವಲ 1 ಅಂಕದ ಗುರಿಯ ಮುಂದೆ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟವು ಎಎಂಎ ಬುಲ್ಸ್ ತಂಡ ವಿಜಯಶಾಲಿಯಾಗಿದೆ. ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್ ಫಾರ್ ಎಎಂಎ ಬುಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್
ಇದೀಗ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. AMA Lions versus the next match between AMA Lions versus AMA Warriors. The toss win by AMA Warriors and elected to field first. ದಯವಿಟ್ಟು ಎರಡು ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ದಯವಿಟ್ಟು AMA Warriors ತಂಡದ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕರು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಸಜ್ಜುಗೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ AMA Lions ತಂಡದ ಪ್ರಥಮ ದಾಂಡಿಗರಾಗಿ ಕ್ರೀಸನ್ ಕೂಡ ಆಗಮಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಹಲವಾರು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟಗಳು ಲೀಗ್ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನಡೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಕ್ರೀಡಾ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಸಹಕರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಒಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ, ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಡಿಜೆ, ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್. ಒಂದೇ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ರೀತಿಯ The match number 13 AMA Lions versus AMA Warriors. ದಯವಿಟ್ಟು AMA Lions ತಂಡದ ಪ್ರಥಮ ದಾಂಡಿಗರಾಗಿ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇದು ಪರ್ತುಕೊಂಡು ಗ್ಲಾಡರ್ಸ್ ಪ್ಯಾಂಥರ್ಸ್ ಪರ್ತುಕೊಂಡು ಇಲ್ಲ ನಾನು ಹಾಕಿ ಕಟ್ಟೆ ಚೊಳ್ಳೆ ಕಲಿ ಕಲಿಕೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಟ್ರೋಫಿ ಹೊರತು ಕಟ್ತಾರೆ ತಪ್ಪ ನಾನು ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಟ್ರೋಫಿ ಟಾಸ್ಗೆ AMA ಸನ್ಶೈನ್ ಪಿನ್ AMA ರೈಡರ್ಸ್. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ನಾಣ್ಯ ಚಿಮ್ಮಿಕೆಗಾಗಿ AMA ಸನ್ಶೈನ್, ಅದೇ ರೀತಿ AMA ರೈಡರ್ಸ್ ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನರು ನಾಣ್ಯ ಚಿಮ್ಮಿಕೆಯಾಗಿ ವೇದಿಕೆಯ ಮುಂಭಾಗಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ AMA ರೈಡರ್ಸ್ ವರ್ಸಸ್ AMA ಸನ್ಶೈನ್. I request both captains please come to the tossing ceremony. ഒരു ബാൻഡ് കൊട്ടിട്ടില്ലാരാ ഒരു കളിച്ച വന്നിട്ടോ വീടാക്കി കടുത്ത് പേയ്മെന്റ് കൊടുക്കണ്ടല്ലോ ಅಲ್ಲ ಅವರ കളിയിലല്ലേ ಲೆವೆಲ್ ಹಾಕறாನು ಲೆವೆಲ್ ಹೋಗ. ದಯವಿಟ್ಟು ತೀರ್ಪುಗಾರ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟವನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಕಳೆದ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ಹೀರೋ ಆಶೀಕ್ ಅವರು ಮತ್ತೆ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಆಶೀಕ್ ಅವರು ಕಳೆದ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 4 ಅಂಕವನ್ನ ನೀಡಿ 2 ಪ್ರಮುಖವಾದ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಕಳೆದ ಬಾರಿಯ KPL ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಆಡಿದಂತಹ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ಆಟಗಾರ ಆಶೀಕ್ ಈ ಬಾರಿ AMA ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಪರವಾಗಿ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. Yes, let's start the match. The match number 13, AMA Lions versus AMA Warriors. Yes, umpire started the match. ಇದೀಗ ಪ್ರಥಮ ಎಸೆತ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಆಶೀಕ್ ಟು ಮಿಸ್ಟರ್
ಸಕ್ಲೇನ ಪ್ರಥಮ ಎಸೆತ ಈ ಮೂಲಕ ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಶೈಲಿ ಆಟಕ್ಕೆ ಮರು. ಹಲೋ ಪ್ರಥಮ ಎಸೆತವಂತೂ ಚಿಕ್ಕಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರಥಮ ಎಸೆತದ ಮುಕ್ತಾಯ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಅಂಕದ ಸೇರ್ಪಡೆಯಿಲ್ಲ. ಈ ಮೂಲಕ ದ್ವಿತೀಯ ಎಸೆತ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಆಶೀಕ್ ಮತ್ತೆ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ. ಎರಡು ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮೂರನೇ ಎಸೆತ ಮತ್ತೆ ಆಶೀಕ್ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ. ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಕ್ಲೇನ್, ಆಶೀಕ್ ಸಕ್ಲೇನ್. ನಾಲ್ಕನೇ ಎಸೆತ ಕೂಡ ಮೂರನೇ ಎಸೆತ ಕೂಡ ಚಿಕ್ಕಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬ್ಯಾಕ್ 3 ಡಾಟ್ ಅಂಡ್ ಡೆಲಿವರಿ ಮಿಸ್ಟರ್ ಆಶೀಕ್. ಕಳೆದ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ತನ್ನ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ದಂಡದೀಯಾದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ಎಸೆತಗಾರ ಆಶೀಕ್ ಅವರು ಇಡೀ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದಲ್ಲೂ ಕೂಡ 3 ಎಸೆತ ಮುಕ್ತಾಯ ಕಾಣಬೇಕಾದರೆ ತಂಡದ ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಅಂಕವಿರಲಿಲ್ಲ. 4ನೇ ಎಸೆತಕ್ಕೆ 1 ಅಂಕದ ಸೇರ್ಪಡೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಫಿಫ್ತ್ ಡೆಲಿವರಿ ಬೈ ಮಿಸ್ಟರ್ ಆಶೀಕ್. ಆಶೀಕ್ ಟು ಅಜ್ಮತ್. once again fifth delivery. A chance for the catch. Big appeal for the umpire. ತೀರ್ಪುಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಒದ್ದಿನ ಕಣ್ಣಿನ ಮೂಲಕ ಬುದ್ಧಿನ ತೀರ್ಪುಗಾರರು ಬಲವಾದ ಮನವಿತ್ತು ಅಂಪೈರ್ ಅವರಿಗೆ. ನಯವಾದ ತಿರಸ್ಕಾರ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. 4 ಎಸೆತ ಬಂದು ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದೆ. ತಂಡದ ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 1 ಅಂಕ. 5ನೇ ಎಸೆತ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಆಶೀಕ್ 5 ಎಸೆತದ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ತಂಡದ ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 1. ಕೊನೆಯ ಎಸೆತ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಆಶೀಕ್ ಉತ್ತಮ ಶೈಲಿಯ ಎಡಗೈ ಎಸೆತಗಾರ. ಈ ಮೂಲಕ ಪ್ರಥಮ ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯದೊಂದಿಗೆ ತಂಡದ ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 1. ಅದ್ಭುತ ಎಸೆತಗಾರ ಆಶೀಕ್ ಅವರು ಎಎಂಎಸ್ ಸೆರಾಮಿಕ್ಸ್ ಇದರ ಸದಸ್ಯರು ಆಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಆಶೀಕ್ ಅವರ ಪ್ರಥಮ ಓವರ್ ಅಂತೂ ಮುಕ್ತಾಯ ಕಂಡಿದೆ. ತಂಡದ ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 1 ಅಂಕ. ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಕ್ಲೇನ್, ನಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಜ್ಮತ್. ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್ ನೆಲೆಸಿಯಲು ಮತ್ತೆ ಆಶೀಕ್ ಅವರು ರಾಶ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಸ್ಕೋರ ಕನ್ನಡ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಆಶೀಕ್. ಸಮೀರ್ ಮತ್ತೆ ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್ನ ಎಸೆಯಲು ಪ್ರಥಮ ಎಸೆತ. ಅಂಪೈರ್ ಅವರ ಕೈಯಂತೂ ಅಗಲವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ವ್ಯತಿರಿಕ್ತದ ಮೂಲಕ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಅಂಕದ ಸೇರ್ಪಡೆಯೊಂದಿಗೆ ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ 2 ಎಂಬ ರೀತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ದ್ವಿತೀಯ ಎಸೆತ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್ನ ಪ್ರಥಮ ಎಸೆತ. ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ ಪರಿಸರದ ಒಬ್ಬ ಐಕಾನ್ ಆಟಗಾರ ಶಮೀರ್ ಅವರು ಈ ಬಾರಿಯಂತೂ ಎಎಂಎ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಪರವಾಗಿ ತನ್ನದೇ ಆದ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಎಸೆತವನ್ನು ಎಸೆಯುವಲ್ಲಿ ಇದೀಗ ದ್ವಿತೀಯ ಎಸೆತ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಡಾಟ್ ಅಂಡ್ ಡೆಲಿವರಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ದ್ವಿತೀಯ ಓವರಿನ ಪ್ರಥಮ ಎಸೆತದ ಮುಕ್ತಾಯ. ತಂಡದ ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 2 ಅಂಕ. ದ್ವಿತೀಯ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸಮೀರ್ ಟು ಸಕ್ಲೇನ್. ಮತ್ತೊಂದು ಶೈಲಿಯ ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಶೈಲಿಯ ಆಟ ಇಲ್ಲಿ. ತಂಡದ ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ 1 ಅಂಕವಂತೂ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಒಟ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗ್ತಾ ತಂಡದ ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ 3. ದ್ವಿತೀಯ ಎಸೆತ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಸಮೀರ್ ರೈಟ್ ಅಪ್ ಓವರ್ ವಿಕೆಟ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಮತ್ತೆ ಡಾಟ್. ಅಂಪೈರ್ ಅವರ ಕೈ ಮತ್ತೆ ಕೂಡ ಅಗಲೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ವ್ಯತಿರಿಕ್ತದ ಮೂಲಕ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಅಂಕದ ಸೇರ್ಪಡೆಯೊಂದಿಗೆ ತಂಡದ ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಅಂಕ 4. ದ್ವಿತೀಯ ಎಸೆತವಂತೂ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ. ತೃತೀಯ ಎಸೆತ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಶಮೀರ್ ಮತ್ತೆ ಅಜ್ಮತ್ ನೇರ ಕಡೆಗೆ ನೇರ ಉತ್ತಮ ಶೈಲಿಯ ಡೈ ಮೂಲಕ ಬಲವಾದ ಮನವಿ ಅಂಪೈರ್ ಅವರಿಗೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಎಎಂಎಸ್ ಸೆರಾಮಿಕ್ಸ್ ಇದರ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾದಂತಹ ಸಿನಾನ್ ದಯವಿಟ್ಟು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಮೈಕ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಳಿ ಬರಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ.
AMA ಸೆರಾಮಿಕ್ಸ್ ಇದರ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರಲ್ಲಿ ಓರ್ವರಾದಂತಹ ಸಿನಾನ್. AMA Ceramics Architects and Builders Tournament 2025 ಈ ಒಂದು ಹೊನಲು ಬೆಳಕಿನ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಯಾರಾಗಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಇನ್ನು ಕೆಲವೇ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟಗಳು ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಪ್ರಥಮ ಹೊನಲು ಬೆಳಕಿನ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಯಾರಾಗಬಹುದು ಎಂಬಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಇನ್ನು ಕೆಲವೇ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟಗಳು ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ 8 ಅಂಕ. ದ್ವಿತೀಯ ಓವರಿನ ಕೊನೆಯ ಎಸೆತ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಸಮೀರ್ ಅವರ 5 ಎಸೆತದ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ 7 ಅಂಕವನ್ನ ಬಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ 8. ಪ್ರಥಮ ಓವರಂತೂ ಆಶೀಕ್ ಅವರ ಅದ್ಭುತ ಶೈಲಿಯ ಎಸೆತವಾಗಿತ್ತು. ಕೇವಲ 1 ಅಂಕವನ್ನ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು. ಕಳೆದ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದಲ್ಲೂ ಕೂಡ 4 ಅಂಕವನ್ನ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟ ಆಶೀಕ್ ಈ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಬ್ಬ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ಆಟಗಾರ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಆಶೀಕ್. ಕೊನೆಯ ಎಸೆತ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಮತ್ತೆ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸಮೀರ್, ದಂಡುಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅಜಮತ್. ಅಂಪೈರ್ಗೆ ಬಲವಾದ ಮನವಿ, ಅಂಪೈರ್ ಅವರಿಂದ ನಯವಾದ ತಿರಸ್ಕಾರ. ಇಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟುಗಳಿಕೆ ಮತ್ತೆ Bro, coin. Bro, coin. Wide. Alpina. Indra might score.
18 target. Six run, 1 over.
13. 4 balls. Twelve ball, 5 required. Five runs required. Eleven ball, 3 run required. Wide plus 1. 11 ball, 1 run. 1 plus 1 wide. 3 runs required. 3 runs required. 3 runs required. 2 na. Wide plus 1, 3. Bro, 2 wides, bro. Just, one, first ball wide, second ball also wide plus single. Appa wide idi, ipo wide idi. Idi wide. 12 ball 1. Wide. Score level Score level. తీర్తాలకు వైడ్ టిప్ లాస్ట్ కి ఇది వైడ్ నెక్స్ట్ మ్యాచ్ లేదు Congratulations, Warriors team. Sinan, my others bega mic point iyavanni. Sinan Kuntur, come to mic point. You have to use. New ball only we have to use. Yeah. See how many are there? House are there. This is the last. This is the last box. I don't know, bro. See. There's a box or what? There? No, two boxes there, bro. Another 2 boxes there. Yes. Enough, bro. This is like 2 boxes. Now you can use the new ball. You can use a new ball. This is your old balls. Toss is in it, right? 12 balls. It's enough. Sufficient enough, right? 12 balls. Only 6 matches is there. 6 is not there. 6 matches is there. 6 league. What about knockouts? Or league match unnani. Everything. Ball jand box ulle. Adu kalipata just taka. Till 1 box. Kanda. Sir. Zapto LPG. Kanda. Hall. Partitre nokre. Match edala match. Sinan idippe match edala ra. Overall 6 to 7 matches. That's all. Then everything is skipping.
ఏమే సన్సైన్ ఏమే రైడర్స్ ఏదరా సినాన్ ఇప్ప మ్యాచ్ అదలరా ಮ್ಯಾಚ್ ಅದಲ್ಲ ಇಪ್ಪ ನಿಲ್ ஒரு ಮಿನಿಟ್ ಇಪ್ಪ ರೈಡರ್ಸ್ ಆಂಟುಲ್ಲ ಇದು ಬರ್ತಿದ್ರು ನೋಕೊಂಡು ನಂದ ಜಾಗ ಬಂದ ಒರೇ ಮಿನಿಟ್ ಬಂದ ಜಂಡ್ ಬರ್ತು ಹೋಯ್ತು ಐತಿ ಡೋಂಟ್ ಇಲ್ಲ ಹಂಗ ಟ್ರೋಫಿ ಕೊಡ್ತು ಕರ್ತಿತ್ತು ಆಯ್ತು ರೈಡರ್ಸ್ ಇಪ್ಪ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಯ್ ಚಲ್ ಚಲ್ ಇಪ್ಪ ಇದಲಾರ ವಿನ್ನ ஒரு ಮಿನಿಟ್ ವಿಲ್ಕ ವೆಚ್ ಒರೇ ಮಿನಿಟ್ ಏಮೆ ಬುಲ್ಸ್ ವಿನ್ನ ಅಮ್ಮ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಲಯನ್ಸ್ ವಿನ್ನ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ವಿನ್ನ ಅಮ್ಮ ಅದರ ಒಂದೇ ವಿನ್ನ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಜಂಡ ಏನು ವಿನ್ನ ಆಡೋದು ಅಲ್ಲ ಲಯನ್ಸ್ ವಾರಿಯರ್ಸ್ അപ്പോൾ റെഡി ആക്കാം ഇത് ജനറൽ ഡിസൈഡ് മാച്ച് ഇടുക അവിടെ ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ വിൻ ആവടല്ലേ അപ്പോൾ ಇದರ ಬರ್ತಿಟ್ಟಿട്ട് ಮ್ಯಾಚ್ ಊಡೆ ಕಟ್ ಹಾಕುವ ಈ ಮ್ಯಾಚ್ ತೀರ್ರಪ್ಪ ಅದೇ ಇಪ್ಪ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಇರ್ದಿಂದ್ರೆ ಇದಪ್ಪ ನಂಗೆ ಕೊಡು ಫುಲ್ ಹಾಕಿಲ್ಲ ಅದು ಓಡೋಣ ಚಲೋ ಊಡ ಕೊಡು ಉನಗು ರಿಸಲ್ಟ್ ಕೊಡು ಇಪ್ಪ ಕೊಡ್ತೆ ಒರ್ರೆ ಮಿನಿಟ್ ಪರ್ತು ಪೋಯ್ ಟೀಮ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಕೊಡು ಲಯನ್ ಔಡ ಬೇಂಡ ಊಡ ಉಂಡ್ಲ ಊಡ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟೇಬಲ್ ಬಂದು ನಿಕ್ಕು ಊಡ ಎಂದ್ರ ಗೊಂತಂದ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಇದುಂಡ ನತ್ತಲ್ಲ ಕಷ್ಟ ಬರ ತಂಡದ 12ನೇ ಆಟಗಾರ ಸನ್ಸೈನ್ ಟೀಮ್ ಅವರು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಮೈಕ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹತ್ರ ಬನ್ನಿ. Sunshine versus Riders. Okay. I would like to invite the captains of AMA Lions and AMA Strikers. Both team captains are required here for the toss. AMA Lions ಅದೇ ರೀತಿ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ಎರಡು ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನರು ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆ ಹತ್ತ ಬನ್ನಿ. ಲಯನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನರು ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆ ಹತ್ತ ಬನ್ನಿ ನಾಣ್ಯ ಚಿಹ್ನೆಗಾಗಿ. Lions as well as strikers. Lions ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನ ಅದೇ ರೀತಿ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನ.
शशांक पहली पावर प्ले की ओवर पर पहली सफलता हासिल करते हुए शशांक अपने अगली गेंद लेकर तैयार रहा। लक्ष्मी नई गेंद बल्लेबाज की रूप पर लक्ष्मी इस वक्त बढ़िया गेंदबाजी, बेहतरीन गेंदबाजी, चकमक देते हुए बल्लेबाज को डॉट डिलीवरी। ಜಮಾಲ್ ರವರು ಎಲ್ಲಿದ್ರು ಸ್ಟೇಜ್ ಮೇಲೆ ಬರಬೇಕು. शशांक शशांक अपने अगली गेंद लेकर तैयार इस वक्त। गुड लेंथ डिलीवरी इनटू द बैट्स, पैर पर टकराई गेंद, रफ्तार के साथ गेंदबाजी किए थे शशांक, गेंद को समझ नहीं पाए बल्लेबाज। इस वक्त फ्लिक करने के चक्कर पर गेंद पैर पर लगे। अगर एलबीडब्ल्यू होते तो जरूर गेंदबाज अपील करता। इस वक्त गेंद डॉटेड डिलीवरी स्कोरबोर्ड पर चूंकि लगा चुके हैं स्कोरर ने, तो 3 गेंद की समाप्ति के बाद तीन गेंद की समाप्ति के बाद स्कोरबोर्ड कुल मिलाकर 1 रन 1 विकेट के नुकसान पर अगली गेंद लेकर तैयार शशांक। राइट आर्म ओवर द विकेट। इस वक्त ओवर डिलीवरी, गति पर परिवर्तन, फ्लिक करने का कोशिश, आउटसाइड एज, बल्ले का किनारा लगा। 1 रन दौड़कर पूरी कर चुके हैं बल्लेबाज। जब तक गेंदबाज 30 गज के अंदर गेंद को फील्ड किए तब तक बल्लेबाज ने 1 रन दौड़कर पूरी कर चुके हैं। 1 रन के साथ स्कोरबोर्ड पर छोटी सी परिवर्तन, 2 रन 1 विकेट के नुकसान पर शशांक बेहतरीन गेंदबाजी का प्रदर्शन अब तक। इस वक्त स्लोअर डिलीवरी, गति पर परिवर्तन, छोटी सी वेरिएशन के साथ, लेग कट वेरिएशन के साथ गेंदबाज किए थे। इनटू द राइट, इनटू द गुड लेंथ, हिटेड हार्ड राइट इनटू द गुड लेंथ फ्रॉम शशांक outside the off stump. Batsman was looking for a slog shot. First slower delivery, a slight turn away from the batsman. Dotted delivery, final delivery left in this first over. Great piece of bowling performance from Shashank so far. अब तक 5 गेंदों पर सिर्फ और सिर्फ 2 रन खर्च करते हुए शशांक एक सफलता भी हासिल किए हैं। आखिरी गेंद लेकर तैयार, पावर प्ले की फायदा उठाने पर नाकामयाब बल्लेबाज। इस वक्त बाहरोनी किनारा लगा, 1 रन दौड़कर पूरी कर चुके हैं बल्लेबाज। 1 रन के साथ स्कोरबोर्ड कुल मिलाकर 3 रन 1 विकेट के नुकसान पर। वो कहते हैं कि पावर प्ले बल्लेबाजों के लिए पैराडाइज है, लेकिन इस वक्त शशांक ने पावर प्ले को अपनी पैराडाइज बना दिया। इस वक्त पुल किया गेंद को, मिड ऑन की दिशा पर गेंद चल पड़ी। 1 रन दौड़कर पूरी कर चुके हैं बल्लेबाज। इसी के साथ ओवर के समाप्त, स्कोरबोर्ड कुल मिलाकर 4 रन 1 विकेट के नुकसान पर। ಫಸ್ಟ್ ಬಾಲಿಂಗ್ ಸಿಂಗಲ್ ಎಡ್ತಲ್ಲಿ ಪಿನ್ನ ಔಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಿನ್ನ 6 ಬಾಲ್ ಇತ್ತು ಅಲ್ಲಿ. 4 runs for the loss of 1 wicket after the completion of over number 1. Second over, 2 over completed. Okay. Just a minute. There's some kind of confusion here. No, just a minute. There's a confusion. ಪೋ ನೀ ಫಸ್ಟ್ ಪೋ, ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೂ ಏದಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅಬಂಡೆನ್ಸ್ ಆಗಿ ನಾವು ಏನು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಸೋ ಹಿಂಗಾಗಿ ಏನು ಚಾಲೆಂಜಸ್
AM challengers strikers. ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ವಿನ್ ನಾವು ಗವರ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ಏದು ವಿನ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ಐದಿನ ಪ್ಯಾಂಥರ್ಸ್ ವಿನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ವಿನ್ challenges must win. Strikers and challengers ಅಲ್ಲಿ Strikers and challengers strikers win. ಎದುರೈತಲ್ಲ ಅಪ್ಡೇಟ್ 7 runs for the loss of 1 wicket after the completion of over number 2. 2 ओवर के समाप्ति के बाद स्कोरबोर्ड कुल मिलाकर 7 रन 1 विकेट के नुकसान पर। तीसरी ओवर लेकर आए हैं इब्राहिम। अपनी पहली गेंद और राइट इनटू द ब्लॉक होल। इस वक्त फ्लिक करना चाह रहा था बल्लेबाज, लेकिन रफ्तार के साथ गेंद पैर पर टकराई और बल्लेबाज को कोई रन लेने का मौका नहीं मिला। डॉटेड डिलीवरी इब्राहिम, अच्छी शुरुआत इब्राहिम के द्वारा। अपनी दूसरी गेंद लेकर तैयार, राइट आर्म ओवर द विकेट इस वक्त चंदू के लिए। इस वक्त बल प्रहार के लिए कोशिश जरूर किए थे बल्लेबाज, लेकिन संपर्क नहीं कर पाए। विकेट कीपर ने कॉट बिहाइंड के लिए अपील भी जरूर किए थे, लेकिन अंपायर ने कहा नॉट आउट। तो आखिरकार डॉटेड डिलीवरी अब रजिस्टर हो चुके हैं स्कोरबोर्ड पर। फिर से इस वक्त लेग साइड पर थे गेंद को फ्लिक करने का कोशिश की है, गेंद पैर पर टकराई और लगातार 3 चुकी गेंद के साथ इब्राहिम बेहतरीन गेंदबाजी का प्रदर्शन अपनी रफ्तार के साथ राइट इनटू द ब्लॉक होल, इनटू द पैड्स गेंदबाजी कर रहे हैं। बल्लेबाज का वीकनेस को पकड़ते हुए पैड्स पर गेंदबाजी कर रहे हैं इब्राहिम। इस वक्त गेंद पर परिवर्तन, गति पर परिवर्तन किए थे इब्राहिम। पिछले 3 गेंदों के रफ्तार को अगर कंपेयर किए तो इस वक्त गति पर परिवर्तन किए, स्लोवर डिलीवरी फेंके राइट इनटू द ब्लॉक होल अगेन। डॉटेड डिलीवरी, लगातार 4 डॉटेड डिलीवरी। क्या ये मेडन ओवर कर पाएंगे इब्राहिम? ये अब इंटरेस्टिंग स्टेज पर आकर बैठे हैं। इस वक्त गेंद को ड्राइव किया मिड ऑन की दिशा पर, मिड विकेट से अच्छे फील्डर ने दौड़कर गेंद को फेल किया। तो तब तक बल्लेबाज 1 रन दौड़कर पूरी कर चुके हैं। आखिरी गेंद बाकी रह चुके हैं तीसरी ओवर पर। इब्राहिम टू लक्ष्मी। आखिरी गेंद राइट आर्म ओवर द विकेट। इस वक्त बहुत ही चतुराइयों के साथ गेंद को फ्लिक किया मिड विकेट की दिशा पर। मिड विकेट पर फील्डर गेंद को फील्ड करके तुरंत गेंदबाज तक पहुंचा दिया। तो 1 रन दौड़कर पूरी कर चुके हैं बल्लेबाजियों ने। 3 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोरबोर्ड कुल मिलाकर 8 रन 1 विकेट के नुकसान पर, 9 runs for the loss of 1 wicket. Toss time now. The captain of the captain of the Lions, as well as the captain of the Warriors, as well as the captain of Lions and the captain of Warriors, please come down to the comm box. 4th over in progress. We're going to have a toss here for the next game. Please make sure to come in here, because I'm not going to give you another call, because we're so damn exhausted, and surely don't expect us to call us again and again. Try and make sure to be here. पहली गेंद, दूसरी गेंद विनोद इस वक्त स्लॉट पर थे गेंद, लॉफ्ट करना चाह रहा था बल्लेबाज,
अंदरूनी किनारा लगा गेंद, एक रन दौड़कर पूरे कर चुके हैं बल्लेबाज विनोद। आउट चौथे ओवर लेकर आए हैं, पेनल्टी ओवर। My question to you now. Look at the condition, very foggy. Do you not think the players would have an impact on that? I don't know about the playing conditions much. I've not seen there, but what about the visibility? The light factor might come into play as well. समझ गया आपका क्वेश्चन, समझ गया। उसके आंसर आपकी आंखों के सामने है, उसकी जो आंसर है वो आपके आंखों के सामने है। बल्लेबाज तड़प रहे हर एक गेंद पर, गेंद को कनेक्ट नहीं कर पा रहा है, बड़े शॉट्स के लिए लगातार कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इस वक्त देखिए सीधा फील्डर के हाथों पर गेंद और दूसरी विकेट झटका। रन्स बनाने के लिए तड़प रहे हैं बल्लेबाज हर एक गेंद पर, गेंद को बल्ले से संपर्क करने के लिए तड़प रहे। इट मीन्स दैट impacted the climate, impacted this players at this point of the tournament. Yeah, I feel, my perspective is very straightforward, that I think it's going to be difficult. Provided the fact that, of course, the condition is just sort of foggy out there, it might be better. I think if we go out there to inspect it further, might get a... जी हाँ, रन आउट के लिए अपील जरूर किए थे। अंपायर ने अपनी उंगली उठाते हुए बल्लेबाज को पवेलियन का रास्ता दिला दिया, तो एक और विकेट। भाई एक्सक्यूज मी टाइगर्स, प्लीज, दिस इज नॉट फेयर, दिस इज नॉट फेयर, दिस इज नॉट फेयर। एवरीबडी standing in front of a commentary box, and we are totally confused in the scoreboard. Still, bro. Sunshine as well as riders are fighting each other. This time again wicket number 4 is walking back. That's the end of the innings number 1. Scoreboard says just 11 on the board for the loss of 4 wickets, and 12 will be target for riders to win this match. One more question, that over the last 5 or 6 games that I've seen, actually team batting first consistently scored around about 15 or 20 thereabouts. I don't know what might be the reason, really. Is it batting first difficult? I don't think that's the case. I'm not sure why the team batting first is scoring consistently round about that range. I think that's because of lack of experience. You know, 24 deliveries you have to face, and if you try to think about the condition, if you try to learn about the condition, you know it's not easy to bat, and after you knowing that you are going to a big hit in the first innings, you are aiming to score 40 or 4 overs. Why can't you aim 20 plus from that 4 overs? If you score above 20 from the 4 overs, then it will be also difficult to the team which will chase, because they have to chase 20 odd runs from just 24 deliveries, and also in this condition they will definitely miss some deliveries and they will get pressure. Yeah, you're right about spot on, absolutely spot on. What I'd say is that lack of skills, surely lack of skills, of batting ability. I feel that's very obvious, and I mean you can't take away anything from these players. They've done the hard yards and they're doing a great job. In my view, they've done a spectacular job already. Given the context of the game, these professionals, they don't really have a lot of practice under their belt. But I think the kind of show, the kind of display that they've provided is simply unbelievable, I'd say. Next to something magnificent. And I'm with you on that. Lack of experience, lack of skill sets.
the right mindset. It's right to say lack of experience, I think. Not about, we don't want to talk about the skills, but lack of experience definitely. Why is that you don't want to talk about skills? They have that skill, but they are not presenting here because of lack of experience. They don't know how to face. Is it because of the condition is getting very late actually into the day, into the night, sorry. And Just to keep concentrating on the delivery, keep concentrating on the ball, which bowler bowls, and just leave the bat on that and rotate your strikes. Why can't you do that? Why you need even sixer and boundaries? And that's the natural instinct actually when a batter bats actually, and that's the way that's their style of batting. Why you don't have trust on your bowlers? And I feel that it's the your bowlers only can defend the score above 30 and 40, or they can't defend above 20 or below 25. I feel that it's impossible to defend in this surface. You know, given the context. The surface helps the bowlers. Then you just keep rotating the strike, make some respectful total on the board. You don't need to go for big one. You will get a single delivery which can be hit over fence within that 24 deliveries. But you should wait for that. You can't go for each and every ball. I agree. That's what I mentioned about the application part as well. The application is that you got to measure the track well, and you got to pick up the right balls to get the right shots. I think the shot selection plays the key role as well. I think it's a lot of different factors actually playing to that. It's not just not one-dimensional. And that's where, you know, you talk about professional cricketers, they bring in their best and they, you know, dictate terms, and they bring in their best during the times when they got to really deliver the goods. Mr. Sandesh, AMA Warriors, would like to have your presence immediately at the comm box. Your teammates are waiting. Try and make sure to be available immediately here right at the comm box. Trying to go for the big shot, but missed the line completely, comprehensively beaten. Wonder why the batters are trying to play shots and they're trying to chase down a total which is well under 6 runs per over. What they got to do is just do it smart and just don't really have to play extravagant shots and bring your own downfall. So it's the end of the over number 1, and they have been scored just 3 runs on the board. Yeah, this is just imagine they have they got a target of 12 in this game. They scored just 3 runs in the first over. Just imagine if the target was over 20. I mean 22 on the board. 22 was the target. Just imagine they scored just 3 runs in the first over. What would have been the scenario? Run a ball equation at this condition. Agreed, 100% agreed. I mean, that's what I'd say is that I'm a great supporter of somebody play soft hands and picking up singles and then rotate the strike. I think that I love doing that as well myself as a batter. As playing, you know, rather than playing expensive drives, you just got to back yourself and sometimes just play, you know, I think that's the way to go about your batting. If nothing's working, that's one way to get your confidence back. Wide call by umpire, extra to the total. Good mix of pace and bounce on the surface. Good delivery, really good delivery, good stuff by the bowler. And I think a wicket going down. Just got to wait and see. Yes, the wicket going down as well. So batters have tried and tested everything in the surface. One of the things that I've observed is that it's not a sort of track where you can play through the line, and that's one of the disadvantages that I was able to figure out. But I think you got to play smart. Not every track that you play allows you to play freely through the line.
And that's the end of the over, I think. And one thing, Hashim, you are witnessing the condition, right? You can't see anything, right? But look at your nearest surface. You have that visibility. Right, so now, I mean, what I would say is that now the condition looks pretty bad, actually, the light factor that we talked about. But I don't know when we go out there into the ground. I've not gone there. It might be much better, actually, the way that we see it here. It might be difficult. Different. No, I want to say just a simple thing. Your near surface is visible, and you can't see a longer surface here. That means batter can see the ball clearly. Surely they can. Only fielder has that problems. He will get that visibility when the ball comes near to him. Yeah, I don't dispute you on that. I don't dispute you. But there's something that the batters are unable to pick up, actually. And that's why the scoring rate's been consistently plunging. So you see they're trying to plunge. Look at the stance. Look at the stance and look at the position. He's batting. He has that visibility. Actually, he sees that the ball which comes from the bowler clearly. That's why his head is moving through the ball. But he's trying to go for big, trying to go hard. He's not playing a soft hard, hand. go harder. You go hard, go harder. That's been the problem. Actually, you got to play. You got to bring in that principle of batting. I always say that in my podcast as well. What I did discuss is that you got to bring in that principle of batting. Is to play through the line, is to play drives and then play sort of back foot punch, front foot punch. You know, you got to bring in all that repertoire in your batting. Sort of, you know, have that mindset where you can play 360 degree. You know, that's one thing that very evidently is missing right through the tournament. And could be potentially because they're not full-time cricketers. But I think I don't want to take anything away from this tournament, the players as well. I think they've done a tremendous job. I think the kind of efforts that they've put is simply magnificent. ಅವನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಕಾಂಡು ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಅವಡೆ ಕಾಂಡು ಫೀಲ್ಡರ್ಸ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಬಾಲ್ ಬಂದಲ್ಲಿ ಭಿನ್ನ ಗೊಂತವ್ರಿ. One thing for sure is that I pick up on that point about it could be because of the slowness of the surface as well, because when you as a bowler you're bowling, you're firing and the ball's not going the way that it is expected. Wow, what a turnout to this game actually. 6 balls in the bank, 5 to get. Anybody's game now, I'll tell you what. He's trying to chase down a total which is really ridiculous in terms of the chasing rate. 5 to get from 6. It's getting very, very tight now. And now I see that, you know what, now the battles start to get a little bit more serious. ಒಟ್ಟಾರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲಲ್ಲ, ಈಗ ಒಟ್ಟಾರೆ ಇಡುವಾರು ನಂಗೆ ಪೋಯಿ ಚೆಕ್ ಹಾಕೋ ಎಂದೆಲ್ಲ ಬೆಟ್ಟು ಮೂಲತ್ತು ರಾಯತುಲಿ. 6 balls in the bank, first ball. Gentle pace, struck it beautifully into the vacant space. Might push hard. I think the fielder couldn't track it down in time, so they had enough time to cross over for that second run. So now 3 to get from 5. You need that kind of an intent when you're trying to chase down a total like this. You can't just sit back and just enjoy. You know, the ball is not going to bowl to you. Beautifully timed stroke.
And might push hard for the second. It's just gone all the way for 4. That's the end of the game. Finally, they've done it easily. Excellent batting display in the end. And that's it. Riders won. Amy Riders have won the match, and they are getting stronger and stronger as the tournament progresses. One of the teams to watch out for in this tournament. And that's it for now from here. ಟೈಗರ್ಸ್ ಅಂತ ಬಾಲ್ New balls only, no? Anyway, we have. So you can use the used balls as well. Why not? If you do not have the balls readily available, what would you do then? New balls are there. 2 new balls. I think then we can go. But that wet balls that are not good at. Yeah, right. Keep this. Remove this. Fill. ಬಾಲ್ ಚಂಡಿ ಅವರು ಫೇಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಫೇಸ್ ಬಂದು ಚಂಡಿ ಆಗಿ ಅದೇ ಕಲಿಕೋ ಬಾಲ್ ಅದು ಓಕೆ ಅದು ರಿಸಲ್ಟ್ ಓಯ್ ಏದಲ್ಲ ಮ್ಯಾಚ್ ಏದಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಕೊಂಡ ಉಂಡಿದ್ದು ನೋಕು Another exciting contest coming your way. 2 good teams again battling for the win. Very important game in the context of the tournament as well. So I think, if you're watching the game live on YouTube, you can find out the points table as well, where you can determine about who's standing right at the top, who's at the bottom, who's in the top 4 berth. So all of these dynamics you can find out from the live actions actually. I think I'm going to talk to the media expert here. I'm going to talk to King Sports media partners and also one of the experts. So you're broadcasting the points table? You're publishing the scorecard actually on King Sports now online, YouTube. Are you doing that sort of stuff? Yeah. Yes. All right, buddy. Thank you very much. So I think you can do that now frequently, so the viewers were able to get a very good idea about who's right at the top, who's at the bottom, who's top 1, 2, 3, 4. And that's vital, because you know what? It will all come down to the last top 4 teams, and you've got to have another crack of a battle. Really a test of character, test of your mental skills and mental ability under the lights, plus you're almost in a state of exhaustion. And I think I can do that now. In a state of exhaustion, so which means that they gotta really try and bring in their best on field, which is never gonna be simplistic. That is a half tracker, that is a hit me ball, but just missed out on that occasion, resulting in a white. So white to start off the proceedings. Just gonna say that 24 balls remaining in your innings. Another white, 2 back-to-back whites to start with. You got
24 play 24. You got 20 play 24 now. And in the last game we had 18 play 24, which I think is rather easy. And I think, you know, you've got to give yourself the best chance to try and win the game. And you've got to do that. You've got to score at least around about 6 runs per over, if sixes and boundaries are hard to come by. And one of the issues that we discussed about here in the com box is the ball getting old and wet as well due to the conditions. It's grassy over there, so you can, and also the soft ball in use as well, so it kind of sponges the, you know, external surface, and the ball will turn wet. As a result of that, you can't, as a batter, you might find it slightly difficult try and score runs as well, and also for the bowler to grip the ball as well. You can see there it's difficult for both the batter as well as the bowler, because as a bowler you can't grip the ball. As a batter, you know, sometimes the ball doesn't come easily to the bat, which sort of mistiming will come into play. Nicely played. There is protection in the deep. Beautifully played shot that is. Very much like Andrew Strauss of England. That's and Brian Lara of the West Indies cricket team usually place a sort of Caribbean spice into that stroke. Advancing down the track, trying to tackle him, beautifully done. So that's how you got to go about your business, I think, in my view. I think you gotta know the situations very well. You know that it's hard to chase down a total. That means you got to try and put as many as you can. Then you give your bowlers a very good chance to come back and potentially pick up wickets. So vital that you have a partnership built at this stage. Try and score at a rapid pace. Try and put pressure on the bowler. Run hard. I think run hard between the wickets is one of the ways in which you can score runs as well. Beautiful delivery that is. Exceptional delivery. Right on the money. Nothing much to bat. I think that was a fault shot as well. He should have played much more on the front foot rather than being on the back foot. So oftentimes I think, you know, batters have that sort of dilemma in the back of their mind, whether to go on the front foot, whether to be on the back foot, and they sort of misread the line of length completely, and now they become the victim. And that's where you got to be super accurate, and that's what good batters are all about. Good batters generally pick the line and length very early, and now adjust to the situation beautifully. And I think the secret to play good cricket is to play on the front foot and don't try to do extravagant stuff as a batter. You know what generally you do, you want to score runs at a rapid pace, you want to get some boundaries or quick sixes or whatever. What you got to do is that very simplistic, that you've got to play on the front foot and then try and negotiate it as much as you can, and then you put yourself in a very good position to try and pick up at least ones and twos. I think that's the best way to go about your business as a batter, rather than trying to do too many things simultaneously. It might not work out in your favor. It's not a sort of track, like I mentioned earlier, that you can play through the line. It's not that kind of a surface. Generally you have a surface where you got the clay, a sort of natural clay where the pitch is rolled over and over again. You've got the curator doing the work for about a few days, and the roller coming into play where you got that natural soil. And that's not been the kind of track here. It's been complete. I think, you know, if I look at that track, very much a sort of leather ball type of track that is. Becomes that much more difficult to bat. So talk a little bit about 24 play 18 or 24 play 20, 24 play 30. So these are some of the scorings that we were able to observe. Nicely played, vacant space, and that runs away to the boundary. Pull shot executed. Some power on that one. That will race away to the boundary. No one out there to try and prevent it. Therefore, the score race is now up to
9 on the board in the progression of the second over. I think he's been batting so freely. Largely because of the fact that his technique is much, much better. And he's playing more of the front foot. This time it's up in the air. The fielder comes around it. Oh, he puts it down. That is a sitter. Absolute dolly of a catch. You can expect those catches to be taken at this level. But he's put that down. It was a sitter. An absolute sitter. Right. So just a 1 to the total now. Takes the scoreboard to the double figures. Takes to 10. These two batters really need to... I think they've got a good partnership here. What they got to do now is manipulate the field and potentially try and run hard between the wickets. Good bowling. That's a fault shot. Again, he's oftentimes, numerous times in this innings, I've seen that he's on the back foot frequently. And I don't really understand the logic or rationality why he's on the back foot when he's able to. I think when his partner is able to bat well on the front foot, that's the way to go about it. Off the front foot. You know what happens when the ball gets wetter? It grips off the surface. I mean, you know, you're bowling around about 60, mid-60s, and then it becomes suddenly 65-ish. So it becomes that much more difficult, you know, when you rock back and then you got to try and belt it. It doesn't work that way. You've tried it many times. It doesn't work, actually. Therefore, you got to try and make sure that play safe. Play off the front foot, front part of the body. Beautifully ball delivery. That is. It's called a wide, I think. Is that a wide? Not sure. We're not able to see that. It's very hard. Very, very hard, because it's easy to be said than done. In the air, the fielder just falling short of the fielder. Pushing hard for the second. They'll get it, I think. No. Yes, they'll get it easily. Miscollection. He tried his best, actually, but not the best of the returns. Releases, actually, from the fielder right at the long on boundary. So 2 taken there. So this is good battering, really. This is what I meant exactly. When you don't get a run, so through boundaries or sixes or whatever of that sort of type, actually, what you got to do, one thing is that try and do that sort of stuff consistently. Good bowling, that is. Good bowling, that is. Again, sort of challenging the batter. Try and play that shot again. This time much wider. So resulting in a dot ball. This left-handed batter has got that technique, has got that sort of mindset, brings in that new dimension. Fiercely struck. That might go all the way. No, is it been taken? Yes, on the second attempt. On the second, and not the best of the catching techniques, I gotta say. Either you go a reverse cup or a straightforward, a traditional way of catching. But I think he lost sight of it. I don't know. Might have also misread or misjudged it to an extent. But anyways, 15 on the board after the end of second over. 15 on the board. New batsman walks out to the centre. So talking a little bit about what sort of total do you think is sort of defendable? And I'd say, from my experience, looking at the ball, looking at the conditions under lights, 30-32 would be a very good total to defend. Even 30s would be a very good I think, you know, you can win matches when you can score around about that range. But you got to still do that. Down the leg side, it will be called a wide. Anything down the leg side, 1+1 to the total there. So that's what happens. You know what? You get singles or twos of every single delivery. And then that bowler comes in, he's just got to try and target. He's just going to try put that extra effort. Might not work in his favour. Could go wide. Could go A-born or whatever. So they get 1+1 to the total here. Leg boys. No run taken. So going back to my point about 24 play, 24 play, 18, 24 play, 22. Down the leg side, it's again bonus runs. These are really very, very crucial runs, are they?
It's that struggling to get that sort of line where he can upset the rhythm of the batter. The batter's actually trying to execute that shot over mid-wicket. He's trying to do that, really. This is much, much better. Much better. Shot stuff, surprising the batsman to a degree. Never expected the ball to bounce that much. And you get this sort of variation, this sort of wide variety of variations, a broad range of variations when you've got, you know, the ball's wet, it's doing under lights, it can also misbehave to a degree as well. Directed to be gone, no directed, just about safe. Because you know the fielder is in an awkward position. He's got just one stump to aim at from that angle. You've got to be absolutely spot on to get that directed. Anyways, survive the batter. Good delivery that is. But I think the idea, I think the way they go about their business at the moment is superb. Because what I feel is that, you know, you try to play big shots and bring your own downfall. You've got dot balls as well. I don't think, you know, is the right way to bat. Up next, toss. Bulls Riders. Bulls and Riders, captains, please make your way to the comm box immediately. I'm not going to call you again. Bulls and Tigers, captains, please make your way immediately to the comm box. Not going to do that again, please. Take this very seriously. Nicely struck. That was traveling with some velocity, not had the legs enough to get to the boundary. Pull back well in the end, 2 taken, takes the scoreboard to 21 now in the progression of the third over. Just 1 ball to go in the third over. We can try and get at least 1 here. I'm not actually supporting any team here for that matter. But I would say is that, you know, you've got to have a match, you've got to have a right match, you've got to have at least around about 30, so 31, 32 would be a very good total, and we can have a match out of that. This is poor stuff. This is stupidity, I'd say. Really unbelievable fielding display there by the fielder. Not sure he's got some problems with his arm actually throwing back. Three overs bowled out, 23 for 1. I've got 1 over, and they can go at the space, and they can settle down somewhere around about 30s. And score around about that 31, 32 mark will be a very good total when they come out to bowl. And this is not a sort of surface, this is not a sort of track where you can, you know, just hit the ball anywhere you want. And it's also big dimensions in terms of the distance that you got to cover as well. So, you know, I'd say that you play softball cricket just like this. And this is one of the reasons why the batters are consistently scoring towards that square leg region. Why is that? Because you can manufacture a stroke. You know, you're using the pace rather than forcing the pace. There's that big difference between forcing the pace and using the pace. It becomes so much difficult to force the pace and then get a big 6 and then use the pace because you're assisted by the pace of the delivery and it can carry all the way through. Good delivery, that is. Back of a length. I think a switch-it would not be a bad idea at this stage with 2, 3, 4 balls to go in the over. I think it would be a good idea if you can just manufacture a stroke of that nature. In the air, simplest of catches, never look like dropping at all. Good technique shown by the wicketkeeper there. That's the way to take your catches. New batter walks out. The score still stays at 24 now with as many as 3 balls to go. Riders captain, we're waiting for you. Please make sure to be available here for the toss. Goes in, fires it. Full toss. Takes the full toll on that one. No. The fielder out there. Be a couple of runs. I think if he sprints fast. Touch and go, really is touch and go. The umpires
in a dilemmatic condition. Is puzzled a little bit to a degree, actually. The batter was sprinting hard for the second. Score moves up to 26. With 2 balls to go, potentially, right? Yeah, 2 balls to play with. And they'll go hard for the second. I think they'll do it easily. This is good running. Might think about the third one as well. Because of the pace. Surely they go hard. They might have an opportunity for the fourth one here. This is absolute drama. An absolute drama there. But in the end, 3 runs cost. Takes the scoreboard to 29 now with 1 ball to go. Last but 1 ball to go in their innings. Can they try and make the most of it? Can they get a big 6? And that's the big question here. That should be called a no ball. Surely should be called a no ball because it's well over the waistline. So, free hit. It's going to be free hit. And was there an extra run there as well? Not sure. Okay, no ball plus 1, you mean? Okay, 2 to the total. 31 on the card. Right, last ball. It's got to finish well. Does finish well. No white signal by the umpire. An extra to the total there. Takes the scoreboard to 32. This is turning out to be a drastic last ball, really is. He's not been able to get the line right. Systematically struggled with his over so far. Again, advancing down the track. I think that's the end of the innings as well. A good last ball to finish. 32 for 2 is what they've managed to score. 33 will be the target for the opposition when they go out to bat. And I think it's a very, very good... This is the top total that I'm talking about. You score around about 32 or thereabouts, I think would be a very good total. You know, you get something to bowl at. And I think with the condition that we were able to witness here, I feel that this is a match-winning total. In my view, and I can take back on that. I can't bet on that, but I think, in my experience, I'd say 32 is a very good total to defend. And to tell you more about the chase, to tell you more about how they got to go about their strategy in trying to chase this total down, we've got Mr. Sinan who's going to give you a ball-by-ball analysis of the game. Thank you. Over to you, sir. Welcome back for the second innings. 24 गेंदों पर 35 रन के लक्ष्य को चेस करने के लिए टाइगर्स इस वक्त मैदान पर उतरे हैं। तो अगले पिछले उनकी
पिछले 2 मैचेस की एनालिसिस अगर देखें तो टाइगर्स ने पहली बैटिंग की थी और बड़े स्कोर खड़े किए थे, लेकिन इस वक्त कंप्लीटली डिफरेंट सिनेरियो चेस करना पड़ेगा इन द प्रेशर. 33 to chase from 24 deliveries. आरंभिक बल्लेबाजियों के रूप पर तजकी मैदान पर उतरे हैं. तजकी को जुड़ते हुए राजेश, तजकी के साथ राजेश आरंभिक बल्लेबाज के रूप पर मैदान पर उतर चुके हैं. 35 रन के लक्ष्य को चेस करने के लिए 24 गेंदों पर. पहली गेंद बाएं हाथ की गेंदबाज इस वक्त गुड लेंथ पर गेंद फेंकी थी आउटसाइड ऑफ स्टंप. गेंद को लॉफ्ट करना चाह रहा था, इनसाइड एज लग कर अब दूसरे रन के लिए दौड़ पड़े हैं. खतरा, नॉन स्ट्राइकर एंड पर रन आउट की खतरा और अंपायर ने उठा दिया उंगली. पहले विकेट झड़का, अनवांटेड रन कह सकते हैं. अनवांटेड रन को चुराने के चक्कर पर राजेश अब पवेलियन पर वापस लौटना पड़ा. तजकी अपने आप को 33 is the target. पहली गेंद पर पहले रन भी छुड़ाए, पहले विकेट भी खोए. टाइगर्स अगर इस श्रृंखले पर सेमीफाइनल तक अपने कदम रखना है तो इस मैच को जीतना जरूरी है टाइगर्स के लिए. इस वक्त पुल किया गेंद को, बैकफुट पर पुल किया गेंद को डीप स्क्वायर लेग की दिशा पर. 1 रन दौड़कर पूरे कर चुके हैं. तजकी फिर से स्ट्राइकर पर आना चाह रहे थे, लेकिन फील्डर जब तक गेंद को फील्ड करके वापस गेंदबाजी तक पहुंचा दिया. 1 रन जुड़ते हुए स्कोरबोर्ड पर. स्कोरबोर्ड कुल मिलाकर 2 रन 1 विकेट के नुकसान पर. कुशाल बाएं हाथ की गेंदबाज की अगली गेंद इस वक्त फ्लिक किया मिड विकेट की दिशा पर. 1 रन दौड़कर पूरे कर चुके हैं. दूसरे रन के लिए दौड़ पड़े हैं तजकी और कुशाल. तजकी नॉन स्ट्राइकर एंड पर पहुंच चुके हैं, तो कुशाल के साथ स्ट्राइकर एंड पर पहुंच चुके हैं. 2 रन आसानी से दौड़कर पूरे कर चुके हैं. रनिंग बिटवीन द विकेट वाकई काबिल तारीफ इस कंडीशन पर. इन दोनों ने ब्रिलियंट रनिंग बिटवीन द विकेट के प्रदर्शन कर रहे हैं. इस वक्त पुल करने का कोशिश, लेकिन संपर्क नहीं हुए बल्ला और गेंद के बीच, तो डॉटेड डिलीवरी चकमा दिया गेंदबाज ने बल्लेबाज को. तो 4 रन 1 विकेट के नुकसान पर. 2 गेंदें बाकी रह चुके हैं इस ओवर पर. इस वक्त गेंद को उठा दिया हवा पे, कवर्स की दिशा पर. फील्डर तैनात. 1 रन दौड़कर पूरी कर चुके हैं बल्लेबाजियों ने. 1 रन के साथ स्कोर बोर्ड पर बदलाव. 5 रन 1 विकेट के नुकसान पर. आखिरी गेंद, पावर प्ले की आखिरी गेंद बाकी रह चुके हैं. बाएं हाथ की गेंदबाज, बेहतरीन गेंदबाजी का प्रदर्शन. अब तक 5 गेंदों पर सिर्फ 5 रन खर्च करते हुए 1 विकेट हासिल कर चुके हैं. तजकी अब वन ऑफ द डेंजरस बल्लेबाज इस वक्त मैदान पर. आखिरी गेंद पावर प्ले की. इस वक्त उठा दिया हवा पे, कैचआउट के खतरा. जी हां, तजकी की बारी समाप्त. पिछले 2 मैचों पर धमाकेदार इनिंग्स खेलते हुए नजर आए थे तजकी, लेकिन इस वक्त जब उनकी जरूरत पड़े तब उन्होंने गलती कर बैठे. सीधा मिड विकेट पर फील्डर के हाथ पर गेंद सुरक्षित, और इसी के साथ तजकी को जाना पड़ा वापस पेविलियन पर. 5 रन 2 विकेट के नुकसान पर. पहली ओवर की समाप्ति के बाद बेहतरीन गेंदबाजी का प्रदर्शन बाएं हाथ के उस गेंदबाज के द्वारा. Game is getting interested.
तज़की का ऊपर उम्मीद थे कप्तान को, जैसा उन्होंने पिछले 2 मैच पर परफॉर्मेंस किए थे उनके ऊपर भरोसा था, तज़की का कंधे पर जिम्मेदारी थे, लेकिन तज़की जल्दीबाजी कर अपने विकेट खो बैठे हैं। तो अब इक्वेशन इज गेटिंग लिटिल बिट टाइटर। 28 रिक्वायर्ड ऑफ 18 डिलीवरीज, 18 गेंदों पर चाहिए 28 रन। नए बल्लेबाज मैदान पर उतर चुके हैं, कुशल के साथ जुड़ते हुए नए बल्लेबाज नौ साइकिल पर। दूसरी ओवर की पहली गेंद दाहिने हाथ की गेंदबाज ओवर द विकेट। इस वक्त इनसाइड एज लफ करना चाह रहा था, अंदरूनी किनारा लगा गेंद, 1 रन दौड़कर पूरी कर चुके हैं बल्लेबाज। गेंद गई थी पॉइंट की दिशा पर। कट किया गेंद को स्ट्राइक टू द फील्डर एट not more than a single for that shot. Straight to the fielder at the point region. Great piece of batting from new batter. Full toss this time, pulls it straight into the deep mid wicket region. Fielder found there. 1 रन का इजाफा, 1 रन के साथ स्कोर बोर्ड कुल मिलाकर 8 रन, 2 विकेट के नुकसान। The match number 17, AMA Tigers versus AMA Warriors. ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದ 17ನೇ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದಲ್ಲಿ AM ಟೈಗರ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ AM ವಾರಿಯರ್ಸ್ ತಂಡ ಇನ್ನುಳಿದ 14 ಎಸೆತದ ಮುಂದೆ ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. 25 ಓಟಗಳು, ಲಾಸ್ಟ್ 13 more to go, 23 run required. ಕೊನೆಯ 13 ಎಸೆತದ ಮುಂದೆ ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. 23 ಎಂಬ ಕಠಿಣ ಗುರಿಯ ಮುಂದೆ ತಂಡದ ಅನುಭವಿತ ಆಟಗಾರ, ತಂಡದ ಭರವಸೆಯ ಆಟಗಾರ ತಸ್ಕಿ ಅವರನ್ನ ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಈ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಇನ್ನು 12 ಎಸೆತದ ಮುಂದೆ ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. 23, ಲಾಸ್ಟ್ 12 more to go, 23 runs to get win this match for AMA Tigers. Yeah, one thing I did mention about the way they went about their batting, and I did mention that 31-32 will be a winning total. You can see now the equation. Hmm. 12 balls, 23 to get. And look at the difference it has made now. 2 ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯದ ಕಾಪಿಯಲ್ಲಿ 10 ಓಟಗಳು, ಕೊನೆಯ 12 ಎಸೆತದ ಮುಂದೆ ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. 23 ಬಹಳ ರೋಮಾಂಚನಕಾರಿಯಾದ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ. ಇಲ್ಲಿ AMA ಟೈಗರ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ AMA ವಾರಿಯರ್ಸ್ ತಂಡ ಚಾಕ್ಯ ಎಸೆತ 2 ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ. 3ನೇ ಓವರ್ನ ಪ್ರಥಮ ಎಸೆತ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ, ಈ ಮೂಲಕ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 1 ಅಂಕದ ಸೇರ್ಪಡೆ, 2 ರನ್ನಿಗಾಗಿ ಓಟ. ಮತ್ತೊಂದು ಉದರಿಯ ಪತನವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ 3ನೇ ಆಟಗಾರನ ನಿರ್ಗಮನವಾಗ್ತಾ ಇದೆ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ. ಎಸ್, ಇದೀಗ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಭರವಸೆಯ ಆಟಗಾರ ಜಮಿ ಫ್ರಮ್ AMA ಸಿರಾಮಿಕ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾದು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. 11 ಎಸೆತದ ಮುಂದೆ ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. 22 ಓಟಗಳು, 11 more to go, 22 runs to get win this for AMA Tigers. ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ
ವಿಜಯಶಾಲಿ ಯಾರಾಗಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬಂತಹ ನಿರ್ಣಯ 11 ಎಸೆತದ ಮುಂದೆ ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. 22 ಓಟಗಳು. 4ನೇ ಎಸೆತ ಚಾಟಿಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಶೈಲಿಯ ಎಸೆತ, ಯಾವುದೇ ಅಂಕದ ಸೂಚನೆ ಇಲ್ಲ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 11, 3 ಉದರಿಯ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ. 2ನೇ ಓವರ್ನ 3ನೇ ಎಸೆತ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. 10 more to go, 22 runs. ಕೊನೆಯ 10 ಎಸೆತ 22 ಓಟಗಳು ಇಲ್ಲಿ. ಈ ಮೂಲಕ ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು 4 ಅಂಕ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 9 ಎಸೆತ 18 ಓಟ. ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ ಮತ್ತೊಂದು ರೋಮಾಂಚನಕಾರಿಯಾದ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನುಳಿದ 9 ಎಸೆತದ ಮುಂದೆ ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. 18 ಎಂಬಂತಹ ಗುರಿ. ಲಾಸ್ಟ್ 9 more to go, 18 to get. ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕುಶಾಲ್, ನಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಜಮ್ಮಿ. 9 ಎಸೆತ 18 ಓಟ. ಲಾಸ್ಟ್ 9 to go, 18 to get. ಕೇವಲ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತ ಬಂದಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ತಿರುವನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು. 9ಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. 18 ಈ ಮೂಲಕ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತದ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ಕುಶಾಲ್ ಅವರು ಮತ್ತೊಂದು ಉದರಿಯ ನಷ್ಟವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಜಮ್ಮಿ ಅವರನ್ನ ಲಾಸ್ಟ್ 8 more to go, 18 to get. 8 ಎಸೆತ 18 ಓಟಗಳು. ಕೊನೆಯ 8 ಎಸೆತದ ಮುಂದೆ ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. 18. 5ನೇ ಎಸೆತ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಶೈಲಿ ಎಸೆತ. ಅದೇ ರೀತಿ ಗೂಟ ರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನ ಸಂದೇಶ್ ಅವರು ಕಳೆದ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಪಡೆದಂತಹ ಆಟಗಾರ ಸಂದೇಶ್ ಅವರು ಗೂಟ ರಕ್ಷಣಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸುವುದಾದರೆ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಏಳು ಎಸೆತ 18 ಓಟ. ಲಾಸ್ಟ್ 7 more to go, 18 to get. ವೆಂಕಿ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕುಶಾಲ್. ವೆಂಕಿ ಟು ಕುಶಾಲ್. ಲಾಸ್ಟ್ 1 more ಡೆಲಿವರಿ ಫಾರ್ ದಿ ಥರ್ಡ್ ಓವರ್. ಮತ್ತೊಂದು ಎಸೆತ ಚುಕ್ಕಿಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ 3 ಎಸೆತದ ಮುಕ್ತಾಯ ಕಾಣ ಸಿಗಬೇಕಾದರೆ ತಂಡದ ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ 15. 6 ಎಸೆತದ ಬಂದು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. 18. ಕೇವಲ 3 ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಜಮ್ಮಿ. ಎಸ್, ಈ ಒಂದು ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದ ಮತ್ತೋರ್ವ ಭರವಸೆಯ ಆಟಗಾರ ಜಮ್ಮಿ ಆನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್. Six to go, 18 to get. ಪ್ರಥಮ ಎಸೆತ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಮೂಲಕ ಜಮ್ಮಿಯವರ ಹೊಡೆತ ಕೇವಲ 2ನೇ ರನ್ನಿಗಾಗಿ ಓಟ. ಅವಳಿ ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆಯೊಂದಿಗೆ ತಂಡದ ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ 17. 5 ಎಸೆತದ ಮುಂದೆ ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. 16. 5 more to go, 16 to get. 5 ಎಸೆತ 16 ಓಟದ ಮುಂದೆ ಜಮ್ಮಿ ಸ್ಟ್ರೈಕ್. ದಯವಿಟ್ಟು ಮೈಕ್ ಆಪರೇಟರ್ ಮೈಕ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಳಿ ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮೈಕ್ ಆಪರೇಟರ್ ದಯವಿಟ್ಟು ಮೈಕ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಳಿ ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. ಜಮ್ಮಿಯವರನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ 4ನೇ ವಿಕೆಟ್ ಪತನವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 4 ಎಸೆತದ ಮುಂದೆ ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. 16 ಓಟಗಳು. 4 more to go, 16 to get. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಇದಕ್ಕ
So if you're actually watching the game live using a specific link now, the link will be changed for the coming games. You can follow a different link, or the link will be shared by the web app administrator. The live administrator is going to share the link, and you can follow that link, the brand new link, where you can watch the game live and you can watch the live actions actually. Right. Over to you, sir. ವಿಶಾಲ್ ಮತ್ತೆ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 3 ಎಸೆತದ ಮುಂದೆ 14, ಲಾಸ್ಟ್ 3 more ಡೆಲಿವರಿ 14 runs to get. 10 ಡೆಲಿವರಿ ಮತ್ತೆ ಎಸೆತ ಚಕಿಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. 2 ಎಸೆತ 14 ಒಡ್ಡ 2 ಸಿಕ್ಸ್ ಬಂದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟವನ್ನ ವಿಜಯಿಯಾಗಲು ಕಠಿಣ ಗುರಿ. 2 ಎಸೆತ 14 ಒಡ್ಡ 2 more to go, 14 to get. ಸತತ 2ನೇ ಜಯದೊಂದಿಗೆ ಎಎಂಎ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ತಂಡ ಮುನ್ನುಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದ 99% ಎಎಂಎ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ತಂಡ ವಿಜಯಶಾಲಿಯಾಗಿದೆ. ಕೇವಲ 1 ಎಸೆತ 13 ಒಡ್ಡ, ಲಾಸ್ಟ್ 1 more to go, 13 to get. Congratulations for AMA Warriors and thank you for AMA Tigers. The next match between Hello. Welcome to Kings Sports. Subscribe to the channel and press the bell icon for recent updates. Hello. Welcome to Kings Sports. Subscribe to the channel and press the bell icon for recent updates.